आणि स ओनर्स जे प्रीमियर लिगाक पावन हांगसर वांटेकरी जाल्ले आसात. शेणे बिल्डर्स, एक्शन बॉय, व्हडले माय स्ट्रायकर, साई 11, पेंटॉक स्ट्रायकर आणि लोकमान्य वॉरियर्स हे 6 पंगड भावनो या काकोडा प्रीमियर लिगाक धमाल भावन हांगसर पळोवपाक मेळटलो. साबार गोंयभर भावनो ह्या प्रीमियर लिगाचो भावनो ओपनिंग सेरेमनी पळोवपाक भावनो लोक आतुरलेत आसात. आणि मानेस्त ह्या प्रीमियर लिगाचे किंग कॉंग गोंय राज्याचे भावनो गोवा क्रिकेट संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी रोहन गांवस याच्या सुपीक विचारान भाव टोर्नामेंट हांगसर घडटा. आणि साबार गोंयभर भावनो एक नावाजलेचे रत्न भावनो या कुडचडे मतदारसंघाक आमकां दिसता ते रोहन गांवस. आमचे मानेस्त भावनो पावल्ले आसात. आशिष करमली, ओमकार वस्त, टॉनी काउन्सिलर आणि एडवोकेट हर्षद देसाई आमचे मदीं पावल्यात. काही खिणा भितर आमचे मदीं मानेस्त चीफ गेस्ट निलेश काब्राल पावचे आसात. काही खिणा भितर ही उद्घाटन सोहळा भावन आमी सुरवात करचे वतले. तशेंच यंग डायनेमिक आमचे किशन सावंत आमचे मदीं पावल्यात.
नमस्कार. काकोडा प्रीमियर लिगीचे भावनो हांगसर जे ओनर आसात मानान विनंती आसा. चेन्नई बिल्डर्स नेल्सन आतां आमचे मदीं आसा जाल्यार मानेसान वेदिकेचेर येवचे. एक्शन बॉयज गाडीवाडा संजू प्रभुदेसाय आमचे मदीं आसात. सर तुमी बीन मानान वेदिकेचेर येवचे. व्हडलेमोळ स्ट्रायकर डायगो फर्नांडीस आमचे मदीं येवचे. साई लेवन्साचे ओनर साईश फळारी आमचे मदीं येवचे. पॉइंटॉक स्ट्रायकर सपने सावंत सर तुम्ही आमचे मध्ये येवचे. आणि लोकमान वॉरियर्स विराज देसाई हांव सगळ्या ओनर जे हांगसर आसात. व प्रीमियर लीग ह्या काकोडाच्या नगरीत पयले खेप जाता आनीक इतिहासाक याद उरपा सारको भावनो हो टुर्नामेंट साबार गोंयकार युट्यूबाचेर हो लायव्ह पळयतले. शानाय बिल्डर्स आमचे मध्ये नायसाय आता आमचे मध्ये पावलेले आसा. एक्शन बॉयज संजू प्रभुदेसाय आमचे मध्ये आसात. सर तुम्ही हांगसर वेदिकेचेर येवचे. व्हडलेमोळ स्ट्रायकर डायगो फर्नांडीस, साई इलेवन साईश फळारी, पॉइंटॉक स्ट्रायकर सपनेश सावंत, लोकमान्य वॉरियर्स विराज देसाई या कार्यक्रमाक भावना आमचे मध्ये पावल्यात. या वार्डाचे काउन्सिलर टॉनी अदोगात हर्षद गांवस देसाई आमचे मध्ये असत. आशिष करमली, ओमकार वस्त, किशन सावंत, राजेंद्र सावंत, उमेश सावंत, संजू प्रभुदेसाई, संदीप प्रभुदेसाई, संजू सावंत हे मानेस्त आमचे मध्ये हांगसर आसात. वासुदेव गुरव आमचे मध्ये आसात. व काकोडा प्रीमियर लीग हे कुडचडे मतदारसंघा भितर भावनो पयली खेप हो टुर्नामेंट हांगसर जाता. आनी एक विजन आनी मिशन घेवन यंग टॅलेंट भावनो फुडें सरपा खातीर मानेस्त या काकोडा प्रीमियर लीगाचे किंग कॉंग गोंय राज्याचे क्रिकेटीचे बादशाह रोहन गांवस देसाई भावनो तुम्ही पळयतात. येणाऱ्या काळाक भावनो गोंयाक एक नंदनवन अशें क्रिकेटीचें राज्य तयार जाला. आनीक यंग टॅलेंटेड भावनो संघटना आमी गोंयाक पळयतात.
मानेस्ताक विनंती करता आमच्या मध्ये आता संजू प्रभुदेसाय, संदीप प्रभुदेसाय आणि उमेश सावंत, राजेंद्र सावंत, वासुदेव गुरव तुमका विनंती आसा तुम्ही मानान वेदिकेचेर येवचे. संजू सावंत, काही खिणा भितर गोय राज्याचे PWD मिनिस्टर आणि कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार पावचे आसात.
चेक. हॅलो. 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 हॅलो चेक. हॅलो. सपने सावंत विनंती असा तुम्ही बी ना ओनर तुम्ही बी हांगसर येवचे. काकोडा प्रीमियर लीग भावनो या कुडचडे मतदारसंघा भावनो काकोडच्यान वाटचाल या कुडचड्यार जाता आणि तातूंतल्यानच काकोडा प्रीमियर लीग हांगसर सुरवात जाता. या लिगीक 6 टिमी आसतल्यो आणि 6 ओनर्स या टिमीचे हांगसर वेदिकेचेर आसात. मानेस्त आमचे मदीं पावल्ले आसात आनीक हांव विनंती करता आयच्या या दबाजाच्या कार्यक्रमाक चंदनवाडीचे ग्रेट मनीस हर्षद गांवस देसायाक विनंती करता तुम्ही वेलकम स्पीच करचे. गुड मॉर्निंग. काकोडा प्रीमियर लीग ह्या प्रोग्रामाच्या आज हांगा इनॉग्रेशन जाता क्रिकेट टुर्नामेंटाचे आणि हांगा आमच्या मदीं आमचे माचेर बाब निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर, हांगा गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सेक्रेटरी आमचे रोहन बाब आणि काउन्सिलर टोनी, सुशांत बाब, ओमकार आनीक बाब आशीष करमली, आमचो रवी बाब आणि बाकी सगळे मानेस्त आणि बाकीचे सगळे ओनर्स ऑफ दिस 6 टीम्स फ्रॉम काकोडा. सो सगळ्यांक वेलकम करता हांगा आनीक वी वील हॅव अ ग्रेट टुर्नामेंट. आज फाल्यां 2 दीस सगळ्यांनी आपल्या भशेन मेहनत करपाची आनीक आपले टॅलंट स्कील जे क्रिकेटीच्या बाबतीन आसा ते दाखोवचे लोकांक आनी ह्यो ट्रॉफीज तुमी घेवन वचपाच्यो. आनी बाब रोहन एक बारीकशें सांगपाचें म्हणल्यार आमचो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी जाल्या तेन्ना सावन आमकां कोण तरी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक कोण तरी आसा म्हण कळटा. इतले तेंप आमकां कांय खबर नाशिल्लें कोण थंय प्रेसिडेंट जालो कोण चेअरमॅन जालो कांय समजनाशिल्लें. आज रोहनान जो इनिशिएटीव आख्ख्या गोंयभर पयर तो 2-4 दीस प्रुडंट मिडियाचेर न्यूजांक उलयतना आमकां आयकलें की तो ही इज टॉकिंग अबाउट अ फूल फ्लॅज्ड क्रिकेट टुर्नामेंट फॉर गोवा which is cricket stadium for Goa, which is a very nice thing. आनीक आमी सगळ्यांनी ताका हेल्प करुया आनी तो जे क्रिकेटीच्या बाबतीन जे ताजे मनांतल्यान जे पळय ताका डेडिकेशन आसा तें तो काडपाक सोदता. तुमकां भुरग्यांक सगळ्या तरेचे फॅसिलिटीज आनी ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक सोदता. सो त्या बाबतीन ताका आमी सगळ्या सायडीच्यान सपोर्ट करया आनी आमचो गव्हर्मेंट आमचे लोकल MLA आमचो PWD मिनिस्टरी बी ताका भरपूर हेल्प करतलो. बाकीचे काउन्सिलर हे सगळे हेल्प करतले आनी आमच्या प्रत्येक गांवान शेल्डेच्या जावं उसळडेच्या जावं कोटमीच्या जावं आमचे कुडचरे म्युनिसिपालिटी हांगा क्रिकेटीचो डेव्हलपमेंट जावचो आनी इतले सांगून म्हजे 2 शब्द हांव सोंपयतां. थँक्यू. थँक्यू सर. तुमची उद्घाटन सोहळ्याची उतरां मन काळजाच्यान असोच आमी बरोवन रावतले. हांव संजील प्रभुदेसायाक विनंती आसा आमचे मदीं मुखेल सोयरे या कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार आसात. फुलांनी येवकार आमच्या आमदाराक दियात कारण सदांच ते स्पोर्ट्साक प्रमोट करपी अशे कुडचडेचे आमदार आसात. गोंय राज्याचे पॉवरफुल PW मिनिस्टर म्हणून भावना ताका पळयतात. आमचे मदीं आसात काउन्सिलर टॉनी हाका फुलांनी येवकार दिवपाक. आमचे मदीं आसात रोहन गांवस देसाय जो आयज येदो व्हडलो ओटोप जो आमी पळयतात तेचे कोयनूर हिरो म्हणल्यार जाता जो टुर्नामेंट आयज तेच्या अध्यक्षते खातीर जाता. हांव फुलांनी येवकार दिवपा खातीर आपयतां संदीप कुर्टीकर. तुमी बेगोबेग येवचे आनी आमचे मदीं रोहन गांवस देसाय फुलांनी येवकार दियात कारण येदो व्हडलो जो आफाट भावन आमी हांगसर पळयतल्यात वो यूट्यूबाचेर लायव्ह आसा. AB25 ह्या चॅनलाचेर भावना तुमकां यूट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटा. आमचे मदीं आसात काउन्सिलर टॉनी
सुनील सावंताक विनंती आसा आमचे कावन्सिलर एक्टिव्ह या वार्डाचे सुनील सावंत विनंती आसा तुम्ही बेगोबेग येवचे आनीक आमचे कावन्सिलर टोनी सदांच एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आनीक वेल डेव्हलपमेंटाक पावून ते वावरतात. आमचे मध्ये आसात दुसरे कावन्सिलर सुशांत नाईक जे आदले नगराध्यक्ष आशिल्ले आनीक विद्यमान कावन्सिलर. सागराक विनंती आसा तुम्ही फुलांनी येवकार दिवपाक. एक एक्टिव्ह कावन्सिलर आम्ही पळयतात म्युन्सिपालिटी गरुड बराडी अशी भाशणां तेजी चलतात आणि ह्या पॅनलाक ते सदांच फुडें घेवन वयतात. आमचे मध्ये आसात आशिष करमले सदांच युवाक फुडें सरपाचें कार्य भावना ते करतात. आनीक हांव रजंताक विनंती आसा आमच्या सराक फुलांनी येवकार दिवपाक. आमचे मध्ये आसात आदले कावन्सिलर आनीक जेई पावनो फायर ब्रँड म्हणून पावनो ताका कुडचड्यार आमी वळखतात ओमकार वस्त. संदीप सावंताक विनंती आसा तुम्ही ताका फुलांनी येवकार दियात. सनील सावंत देसाय बेगीन येयात. सुनील आमचे मध्ये आसात किशन हाका फुलांनी येवकार दिवपाक हांव विनंती करता. सागर सावंत बेगीन यो. किशन आमचे एक्टिव्ह या वार्डाक भावना आसात सदांच कार्य भावना हुळाचे ते करता आणि किशन हो नाव घेता आसतना नावाजलेले रत्न म्हणून भावना ते पळयतात. वासू गुरु आमचे मध्ये आसात. आमचे मध्ये आसात संजू प्रभुदेसाय हाका फुलांनी येवकार दिवपाक हांव बेगीन विनंती करता. जे स टिमीचे ओनर आमचे मध्ये आसात. राजेंद्र सावंताक फुलांनी येवकार दियात. बबल बेगीन हरयात. उमेश प्रभुदेसायक फुलांनी येवकार दिवपाक हांव आपयता. राहुल देसाय उमेश सावंत आमचे मध्ये संजू सावंत आसा. विक्रांत सावंताक विनंती आसा तुम्ही बेगोबेग हांगसर येवचे. विक्रांत हरयात. संदीप प्रभुदेसाय आमचे मध्ये आसात. मयूर सावंत आमचे संदीप प्रभुदेसाय आसात. जयवंत काकोडकर जगत काकोडकर आमचे मध्ये नायसा आतां आसा जे शनय बिल्डर्स जे ओनर्स आसा ताकाय फुलांनी येवकार दियात. नेल्सनाची धुवती नेल्सन कांय कारणाक मदीं पावलो ना पूण आपल्या धुवेक ताणें हांगसर धाडलेले आसात. एक्शन बॉयज संजू प्रभुदेसाय आमचे मध्ये आसात. व्हडले मोल स्ट्रायकर डायगो फेर्नांडीस. पॉइंटॉक स्ट्रायकर सपनेश सावंत. लोकमान वॉरियर्स विराज देसाय. साई इलेव्हन्स साईश फलारी. भावना तुम्ही जाणाच असले फुलांनी आम्ही राजेश कोस्मो भावनो मानसताची फुलांनी आम्ही येवकार केल्लो आसात. तुमचे मुखार ज्यो स जर्सी आसात त्याचे एनावलिंग हांगसर जाता. हांव मानसताक मागता ज्यो जर्सी हांगसर आसात
सगळे ओनर्स जे आसात 6 ओनर्स ऑफ प्रीमियर लीग काकोडा प्रीमियर लीग एक इतिहासाक नाव उरपा सारखे भावनो जे ओनर तुमचे मुखार आसात आणि एक मानेस्त तुमचे मुखार आसात. कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार निलेश कामराल, रोहन गांवस देसाई, टॉनी, सुशांत, ओमकार, रोहन आणि आशिष हेर ओनर्स सपोर्टर्स जर्सी भावनो तुमकां हांगसर नॉवलिंग जाता आणि विजन बरें अशें हो टुर्नामेंट भावना हांगसर घडटा. आमचे काउन्सिलर अपर्णा प्रभुदेसाय आमचे मदीं पावला. मॅडम तुम्ही बी न्हू मॅडम आमच्या आसा फुलांनी येवकार दियात. ट्रॉफीच्या सायडीन मॅडम आसा ट्रॉफी आणि मॅडम आमचे मदीं पावल्यात अपर्णा प्रभुदेसाय आणि तुमचे मुखार आयच्या या काकोडा प्रीमियर लीगेचे भावनो जर्सी अनवलिंग जाता. महानेस्ताच्या उपस्थितीक साबार गोंयभर भावनो युट्यूबाचेर AB 25 लायव्ह युट्यूबाचेर भावनो आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. विजनाची भावनो विश्वासान भरिल्लो हो क्रिकेट टुर्नामेंट सेगीत 2 दीस चलतलो आणि साबार गोंयकाराक भावनो एक नवी दिशा दिवपा खातीर भावनो हांगसर आसात. हांव मागता या दबाज्याच्या कार्यक्रमाक भावनो आशिष करमले आमचे मध्ये आसात या दबाज्या कार्यक्रमाक 2 उतरां उलोवपाक. आमचे मदीं आशिल्ले गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर आणि कुडचडेचे आमदार बाब निलेश काबराल, GCAचे सेक्रेटरी आणि आमचे धडाडीचे युवा आमचे सगळ्यांचे बाब रोहन गांवस देसाई, काउन्सिलर टॉनी, सुशांत, ओमकार, बाकीचे सगळे मानेस टिमीचे ओनर्स, हांगा जमिल्ले सगळे खेळगडी. आज मोठे दबाज्यान क्रिकेट काकोडा प्रीमियर लीग हांगा घडोवन हाडल्या बाब रोहनाच्या नेतृत्वा सकल आनीक आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान. चड वेळ घेना सगळे आमी आतुरतेन ह्या टुर्नामेंटाची वाट पळयतात आनीक थोड्याच वेळात हो टुर्नामेंट सुरूय जातलो. हांव मागता सगळे खेळगड्या कडेन की एक नितळ सुंदर पूण तितलेच जोशान भरिल्लो खेळ तुमी सगळ्यांनी हांगा आज आनी फाल्यां ह्या 6 टिमींनी घडोवन हाडचो. त्याच भशेन 4 आनी 6 हाजे मदीं चडांत चड स्पर्धा जावन 4 परस 6री हांगा लोकांक चड पळोवपाक मेळच्यो अशी आशा हांगा व्यक्त करता. आनीक त्याच बरोबर आमचे मदीं हांगा आमदार आसात आनी त्याच GCAचे सेक्रेटरी आसात. हांवें जेन्ना रोहनान म्हाका फोन केलो आपूण GCAचो सेक्रेटरी जालो म्हणून सांगपाक, तेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें की तुजे कडल्यान आमकां अपेक्षा खूब आसात. आनी जसो आमचो वेलकम एड्रेसाक हर्षदान सांगून तो गेला की पयलीं GCA आसा काय ना हें आमकां जाणूं नाशिल्लें. आनीक मास्टर ऑफ सेरेमनी बाब रविनी सांगला की आतां ठळकपणान खंय तरी आमकां GCA कार्यरत आसा, खंय तरी कितें तरी करता हें जाणोवपाक लागलां. आनीक खुबशी लीड तातूंत भितर बाब रोहनान घेतिल्ली आसा. आमचो आमदार जो आसा गेल्ले 10 वर्सां अनेक कार्यक्रम कल्चरल आसूं, स्पोर्ट्स आसूं, मेडिकल आसूं, तो आपल्या जशी कल्पना ताका येतात तश्यो त्यो कार्यावळी तो घडोवन हाडटात स्वता ताणें खूब जोर लायिल्लो आसा कुडचडे मतदारसंघाक भुरग्यांक युवांक वयर काडपाक. पूण आनी एक गूण ताजे भितर आसा तो म्हणल्यार जो कोण मुखार सरता स्वता जावन आनी कितें बरें घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करता ताका ताजो सदांच तेंको आसता. आनी म्हाका दिसता रोहन जितल्योय कार्यावळी ह्या फुडाराक स्पोर्ट्साच्या मळार घडोवन हाडपाक सोदतलो ताजो आमदाराचो तेंको ताका 100% पूर्णपणान लाभतलो हाजो म्हाका विश्वास आसा. हांव इतलेंच मागता ह्या क्षणाक की रोहना कडेन आनी आमदाराच्या उपस्थितीक की कुडचड्यार एक बरो ग्रावंड आसा आनी पीच जी आसा कुडचड्यार क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट पिचीस इन गोवा. थी अंडर 14, अंडर 19, अंडर 25
एक 2 सिजनाक 2 तरी मॅचीस कुडचड्यार जावच्यो अश्यो अपेक्षा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांगा व्यक्त करता, कारण रणजी ट्रॉफी जावपाक कठीण, ताचे हें वेगळें आसा. सो ह्यो तरी मॅची हांगा ताणें जशी सांग्यार जातात तश्यो हांगा 1-2 मॅची हाडच्यो अशी ह्या खिणाक हांव अपेक्षा व्यक्त करता. म्हाका उलोवपाक दिल्ले बद्दल 2 शब्द आयोजकाचे आभार मानता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. खरोखरच क्रिकेटीचो भावनो कुडचडकार म्हळ्यार क्रिकेट आनी क्रिकेट म्हळ्यार कुडचडकार हें नांव साबार गोंयभर जालां. आनीक एसएजीचो जो ग्रावंड आसा तो साबार गोंयभर समज तर जीसीएचे ग्रावंड सोडले जाल्यार कुडचड्यारूच पयले प्रिफरन्स दितात. आमी जाणात फाटले 10 वर्सां ज्या ग्रावंडाची रंगरोटी करपा खातीर आमदार सदांच थंयसर लक्ष दवरत आसता. भावनो केक कटींग सेरेमनी हांव विनंती करता आयोजन समितीक ह्या काकोडा प्रिमियर 2023चे केक कटींग सेरेमनी मानेस्त गोंय राज्याचे आमदार आनीक युवा रोहन गांवस देसाई याच्या नेतृत्वाचेर केक कटींग सेरेमनी भावनो तुमच्या मुखार जाला. एक विजन आनी विश्वास घेवन भावनो हो काकोडेच्या वांगडा भावनो ते सगळ्याक फुडें घेवन वयतात. ह्या जिखप्या टिमीक भावनो 30,000 आणि रनर्स ऑफ 20,000 असो मोठो धमाको ह्या प्रीमियर लीगीक भावनो हांगसर काकोडा मर्यादित हो टुर्नामेंट आसा. साबार गोंयभर AB25 ह्या युट्यूबाचेर भावनो लायव्ह शो हांगसर पळयतात आनी तुमचे मुखार येतात गोंय राज्याचे ऑन ओपोज क्रिकेटीचे बादशाह रोहन गांवस देसाईची उतरां आयकुपाक. देवा महादेवाक नमस्कार, तशेंच देवाक बेताळाकय नमस्कार. आयज काकोड्या हांगा ह्या घडोवन हाडिल्ल्या काकोडा प्रिमियर लीग 2023 हेच्या उक्तावण सुवाळ्याक आयज आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर आमचे लाडके आमदार श्री निलेश काब्राल, तशेंच वॉर्डाचे कावन्सिलर टोनी बाब, कावन्सिलर सुशांत बाब, आशिषबाई, अपर्णाबाई आनी बाकीचे आमचे गांवचे सगळे हेर मानेस्त. तुमकां सांगपाक एक उमेद दिसता की हो टुर्नामेंट आमी खूब तेंप जालो प्लॅन करताले. 6-7 म्हयने जाले आमी प्लॅन करताले की काकोडा प्रिमियर लीग जावचो. सगळे प्रिमियर लीग जाताले, गोंयभर खंयचे प्रिमियर लीग जाताले, पण काकोड्या आमचे इतले भुरगे 2-2, 3-3 टीम आसा काकोड्यान, तरी पूण आमी प्रिमियर लीग करपाक पावना आशिल्ले. संदीप कुड्डीकर ह्याच्या नेतृत्वान हो टुर्नामेंट एक्चुली हांगा आमी घडोवन हाडला. लोकांक चड जाणांक तो दिश्टी पडना, पण हेजे फाटल्यान सगळे काम करपी, सगळे प्लेयरांक एकटेन हाडपी, हे सगळे काम करपी संदीप कुर्डीकर. आनी तेजे नंतर आमचे काकोडा बॉयसाचे सगळे वांगडी म्हाजे सगळे बरोबरचे समर्थ, बबलू, गौरेश, किशन, हे बाकीचे सगळे आमचे जितले भुरगे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो टुर्नामेंट आयज हो काकोडेच्या लोकां खातीर हो हांगा आयज घडोवन हाडपाक मदत केल्या. आमचें काम कांयच नाशिल्लें हेचे भितर, सगळे आमच्याच भुरग्यांनी घडोवन हाडला. आनी सगळे काकोडेच्या लोकांकय विनंती आसा की तांच्यांनी येवन हो काकोडेचे जे भुरगे खेळटात, जे खंय तरी टुर्नामेंटाक खेळपाक शकनाले, थोडेच मोजकेच खेळटाले आनी थोड्याक चान्स पडनाशिल्लो, ते सगळे भुरग्यांक हांगा चान्स दिवपाचो हो एक प्लॅटफॉर्म आमी तयार केला, जंय सगळे काकोडेचे खेळटले. तशेंच आमचे ओनर्स, स्पेशल थँक्स म्हाज्या मना काळजा पासून ह्या लोकांचा ऋणी आसा, कित्याक 6 ओनर्स हांवें स्वताक फोन केल्ले की तुमी ह्या टुर्नामेंटान पार्टिसिपेट जाय. आनी टुर्नामेंट आमी ओनर्सय अशे घेतिल्ले जे काकोडेच्या तळागळात लोकां मदीं रावता आनी लोकां मदीं मिसळून आसा, म्हणजे तांकां खबर आसा. असले ओनर्स आमी स्पेशली चूज केल्ले की ताकी म्हणजे तितून आमकां तोय एक बरो उपदेश वयतलो की भुरग्यां कडेन तांचे सगळ्यांचे कनेक्ट्स आसा, सो तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली ती टीम घेवन आमचे मदीं एक हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक. तेजे बद्दल हांव सगळे 6 ओनर्साचे हांव धन्यवाद म्हणटा की त्यांनी एक उतराक आमच्या मान दिवन तेंच्यांनी हो टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट केले. आनी हे सगळे मुखार व्हरता आसतना आमचे आयज साऊंड सिस्टमवाले आसा, एम्पायर्स आसा, बाकीचे सगळे सपोर्ट सगळ्या हे आसा ऑर्गनायझर्सां मदीं, तांचे हांव सगळ्याचे अभिनंदन करता. आनी हो टुर्नामेंट एक बरो सक्सेसफूल टुर्नामेंट घडोवन हाडटले आनी बरी मॅची आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी काकोडेच्या भुरग्यांचो एक बरो खेळ आमकां पळोवपाक मेळटलो हेजी अपेक्षा करता. आशिश बाबान सांगले तशें GCA सेक्रेटरी जाले नंतर कुडचड्यार SAGचो ग्रावंड आसा, SAGच्या ग्रावंडाचो विशय आमच्या
करमली बाबान तशेंच आमच्या आमदारांनी म्हाका खूब वेळा सांगलेलो. इनफॅक्ट आमी कुडचड्यार सरोद्या ग्रावंडार एक टुर्नामेंटाक तेणी भाशणानय सांगिल्लें की रोहन तुवें तो ग्रावंड कसो तरी करून हाडपाक जाय, कित्याक इतलीं वर्सां जालीं तो तसोच उरला आनी काही कारणां लागून गव्हर्मेंटाच्याच कडेन म्हाका दिसता तो कितें तरी कम्युनिकेशनान पेंडींग उरिल्लो. पूण हांव आमदाराकय आयज सांगपाक सोदतां की हांवें आयज सेक्रेटरी म्हणून SCG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक लेटर केलां की तो ग्रावंड मेंटेन करपाक, नाजाल्यार निदान थंय नेट्स करपाक रेडी करपाक. म्हणल्यार गोवा क्रिकेट असोसिएशन सगळो खर्च करून थंय बरे नेट्स 2 नाल्यार 3 विकेट रेडी करतले आनी बरी एक फॅसिलिटी थंय उपलब्ध करून दिवपाक आमी तयार आसा. त्या खातीर हांवें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक लेटरूय बरयला. हांव आमदारा कडेन मागतां की ताणें मातशें SCG कडेन तुमी स्वता एक फोन मारून डायरेक्टरा कडेन उलोवचें आनी मातसो तो जाता तितले बेगीन परमिशन घेवचें, कित्याक हांवें म्हाज्या मॅनेजींग कमिटीनय ते अप्रूव करून घेतला. ते विकेटीचे जो कॉस्ट आसतलो तो सगळो हांवें अप्रूव करून सगळे रेडी करून दवरला. सो फाल्यां SCGंतल्यान जर एप्रुवल आयलें जाल्यार आमदार बाबाक सांगपाक सोदता की आमी रोखडेंच कामूय सुरू करपाक शकतले आनी आमच्या कुडचड्याच्या भुरग्यां खातीर थंय 3 विकेट्योय रेडी जातल्यो आनी ग्रावंड जरी दिता जाल्यारय आमकां म्हणजे सोने पे सुहागा जातलो, कित्याक ग्रावंडूय आमी त्या पद्दतीन विकेट रेडी करून सगळे लॉन बीन घालून ग्रावंड एक बरो ग्रावंड आमी रेडी करून दिवपाक शकता. पूण ते गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी आमचो मंत्री आसल्या कारणान आमकां खंय तरी मदत जातली अशी म्हाका अपेक्षा आसा. निदान फूल ग्रावंड ना जाल्यार एटलिस्ट ते विकेट्स करपाक आमकां जाता तितले बेगीन अप्रुवल दिवचें, सो दॅट आमी तें काम सुरू करून मे म्हयन्याच्या सुटयान भुरग्यांक थंय प्रॅक्टीस करपाक अंडर 14 अंडर 16 ह्या भुरग्यांक थंय प्रॅक्टीस करपाक मेळटली. आनी तेज्या भायर कामार जंय म्हाजी मदत आसतली थंय हांव सगळे आमच्या काकोड्याच्या भुरग्यां खातीर उबो आसा. आनी हो घडोवन हाडटा आसतना काही मिस्टेक जाली, खंय केन्ना खंय कितें जालें जाल्यार सगळ्यांक आमचेच म्हणून मुखार वयचें. आनी हांव अशें म्हणून 2 शब्द सांगून म्हाजी ही 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्ही उतरां ही मन काळजाक पावन आमी उरतली. तुम्ही सांगले की जो SCGचो ग्रावंड आमदाराच्या नेतृत्वाचेर तुमच्या कडेन मेळ्ळो जाल्यार काम बरें जातलें. पूण जेन्ना ग्रावंड सगळें जातरीत भलायकी जर सांबाळटलो जाल्यार सायडीच्यान एक जीम आसा आमदारान आनी तुमी परत एकदां तेजेर लक्ष घालचें. कारण आमी जाणात ज्या वेळाचेर 6 ट्रेडमील आसा ती मोडलेली आमदाराक सांगता आसतना 60,000 भावना तेणें दिल्यान ती केल्ली. पूण तितून भितर काही मशिनरी गरज आसात त्यो आमदारांनी नदरेन हाडून आमी दितात. सदांच जिमाचेर लक्ष दवरतात आनी तुमचे मुखार येता आतां ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे जेची सगळ्यांनी वाट आमी पळयत आशिल्ले. तुजी मन काळजाची उतरां. जमलेल्या सगळ्यांक चड टायम घेवना आयच्या काकोडा प्रिमियर लीग 2023 ह्या लिगाचे आयज उक्तावण सुवाळ्यार आमचे मदें गांवचे कावन्सिलर आमचो टोनी बाब, तशेंच सुशांत बाब, तशेंच आमचे अपर्णा बाय, तशेंच SCGचो सेक्रेटरी रोहन बाब, तशेंच आशीष बाब, आमचो ओमकार बाब, बाकीचे सगळे आमचे वांगडी ह्या वाठाराचे सगळ्यांची नांव घेना, सगळे टीम ओनर्स आनी हे भुरगे एक बरो टुर्नामेंट तुमी घडोवन हाडचो. आनी टुर्नामेंट घडोवन हाडला पूण हो 2 दिसाचो भागा भितर कांयच किसमीस नासतना एक बरें टुर्नामेंट जावचें अशी अपेक्षा सगळे हांगा हे वाठाराचे लोक दवरता तुमचे कडल्यान आनी तुमी करतले अशें आश्वासन घेता. आज रोहन बाबान खुबश्यो गोश्टी सांगल्या की SCG सेक्रेटरी जातरी खंय तरी स्पोर्ट्स क्रिकेट अपलिफ्ट करपाक ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा. आनी म्हाका लक्षांत आसा जेन्ना CM आमकां सांगतालो की आपण रोहन बाबाक निवडून अनओपोज हाडटा तेन्ना बरें एक गोश्ट आमकांय बरें दिसलें की हे वाठारान आमकां एक बरो सेक्रेटरी मेळून आमकां हे वाठाराचे भुरगे जे तरणे पिढी आसा की तांकां डेव्हलपमेंट बरें जातलें. आनी तेच म्हाका दिसता CMचे दृश्ट आशिल्लें फुडेकार आशिल्लो तितून भितर रोहनान आज प्रूव करून फुडें काम करपाचें बरी संकल्पना दवरल्या. हांव ताका शाबासकी दिता. आज फुडें वयता तेन्ना आमकां खबर आसा की SCG ग्रावंड जो आसा हो आमच्या ग्रावंडाक खूब कमतरता आसा आनी प्रयत्न आसा करपाक. आमी फाटीं एक फाटी टेंडर काडलो, सिम्प्लेक्साक पडलो, तो मागीर कॅन्सल जालो, कोवीड जालो. आज रोहन बाबान पीच घालता म्हणल्यार सो तेजेर हांव लक्ष घालता कशें करूंक मेवता तें. पूण एक लक्षान रोहन बाबाचें हाडूंक सोदता की आमचो एक 50,000 स्क्वेअर मिटर आमोणा आनी शेळ्ळे हांगा खूब वर्सां पयलीं एक्वायर केल्लो आसा. आनी तितून भितर जर हे वाठारान सेंटराक जाता तो सारको कॉलेजीच्या सायडीन आनी थंय जर तुमी जर करूंक सोदता एक बरो क्रिकेट, कित्याक हो SCG ग्रावंड मल्टी ग्रावंड आसा.
आनी ते कितें जाता एकदां ग्रावंड डेवलप केलो जाल्यार ते लोकल भुरग्यांक मागीर खेळपाक मेळचें ना. सो तेजे खातीर तो जर आमी कित्याक क्रिकेट पीच आसा नेट आसा ते आमी लक्ष घालया. पूण ओवरऑल जर ग्रावंड करपाक जाय 48,325 स्क्वेअर मिटर्स आमचे बाउंड्रीचेर म्हणजे कॉलेजीच्या बाउंड्रीच्या सायडीन आसा. तितू जर क्रिकेट स्टेडियम करपाची इच्छा आसा जाल्यार तेजेर आमी लक्ष घालून फुडें व्हरूंक आमी शकता. कित्याक थंय नॉट ओन्ली क्रिकेट स्टेडियम, एलायड एक्टिविटी, एक वंडरफूल एकेडमी टायप भुरग्यांक ते रावपाक, कित्याक 50,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड इज व्हेरी बीग इनफ. आनी तितू भितर एकेडमी आनी रावपाक भुरग्यांक आनी ट्रेनींग दिवन तेजी फुडाकार करपाक क्रिकेटींग हे वाठाराचे न्ही आख्खे वाठाराच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. हांव तुका एक ते आव्हान दिता की तूं फुडें घेता जाल्यार तेजेर आमी हें करूंक शकता. कित्याक तो एक्वायर केल्लो आसा, जागो आसा. सो तितू भितर तुमी लक्ष घालचें. कित्याक आतां हे सगळें करपाक गव्हर्मेंट ट्राय करताच, पूण खंय तरी पयशे मागीर लोकांचेच पयशे लोक म्हणटा. हांगा SAGचे पयशे म्हणल्यार तुमचे पयशे म्हणजे एसोसिएशनाचे पयशे म्हणल्यार ऑल इंडिया लेवलाचेर खुबशे तुमकां मानधन मेवता. सो पेडणे ग्रावंड तुमी करताच. सो हे सायडीनूय एक ग्रावंड करचो अशी विनंती करता. आनी तेजे खातीर तुजो कितें म्हजो हातभार लागपाक जाय तितू भितर सगळो आसतलो हें आश्वासन तुका दिता. आज फुडें वयता तेन्ना आज बरे तुमी सगळे बरे खेळचे आनी खेळता तेन्ना लक्षांत दवरचें की आज हे बरे लोक सगळे तुमकां पळयतले. सो बरे भशेन एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट्सान दवरून हे आज टुर्नामेंट करचे. आज सगळे ओनर 6 जाण आसा ओनर आनी तुमकां घेवन हे टुर्नामेंट करतले. हांव परतून एकदां तुमकां सगळ्या भुरग्यांक शाबासकी दिता. आनी अशेंच तुमी वांगडा रावन फुडाकार क्रिकेटीचो आनी हे वाठाराचो वांगडा रावन फुडें व्हरचो अशी विनंती करता. आनी मे बी थोडे भुरगे आज कितें जाता हांगा खूब भुरगे आसा. आज खुबशे भुरगे दिसता तोंडा वयले सगळे बरे करता क्रिकेट खेळपाक फुडें सरल्या आनी तांकां हांव शाबासकी दिता. आनी असोच हो जो टुर्नामेंट आज हांगा काकोडा प्रिमियर लीग 2023 घडोवन हाडला हो वार्षिक जावचो. वार्षिक जावन असोच फुडें रोहन बाबान व्हरचो म्हूण हांव मागणी करता. आनी तुमकां सगळ्यांक परतून जमलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थँक्यू सर. तुमची उतरां मन काळजाच्यान क्रिकेटीक मुखार सरपा खातीर तुमी जें दिल्लें आव्हान आमी तशेंच फुडें घेवन वतले. आनी मानेस्ताक मागता आमच्या ग्रावंडार वचून क्रिकेटीचे प्रत्यक्ष भावनो आयच्या ह्या दबाजाच्या कार्यक्रमाक ओपनिंग सेरेमनी भावन हांगसर जाता. मानेस्त वेदिकेचेर भावनो ग्रावंडार आगमन जातात. आमचे आयोजन समिती सदांच तुमचे मुखार येतात एक विजन आनी विश्वास घेवन. काकोडा प्रिमियर लीग ह्या वाठाराचो भावन एक नामनेचो असो टुर्नामेंट भावन आमचो पळोवपाक मेळटा. आनी साबार ह्या कुडचडे मतदारसंघाक दोनूय टिमीक लायनअप करपाक विनंती करता. दोनूय टिमीचे कॅप्टनाक पॉयंटॉक लोकमान दोनूय टिमीक विनंती आसा तुमी बेगोबेग ग्रावंडाचेर आगमन करचें. मानेस्त मुखेल सोयरे भावनो आयज ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसात. अत्यंत विश्वास दिसता एक काकोडा प्रिमियर लिगीचो हो आगमन भावनो हांगसर जाल्लो आसा. आनी खास करून दोनूय टिमीक विनंती आसा तुमी लायनअप करून आयचो कार्यक्रम तुमचे मुखार घडटा. युट्यूबाचेर AB25 हेजेर लायव्ह तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. एम्पायर लायनअप ग्रावंडाचेर एम्पायराक सुद्दां विनंती आसा तुमी लायनअप करपा खातीर. आयच्या काकोडा प्रिमियर लिगीचे भावनो मानेस्ताच्या उपस्थितीक ग्रँड ओपनिंग भावनो हियर वी गो. हांव सगळ्या मानेस्ताक लायनीन उबो रावपाक नॅशनल एंथनमाक उबो रावपाक विनंती करता. सगळ्या मानेस्ताक विनंती आसा राष्ट्रगीत सुरू करपा खातीर हांव विनंती करता. मानेस्त या काकोडा प्रिमियर लीग आमचे मदीं आसात. ते मानेस्त गोंय राज्याचे PW मिनिस्टर युवा काकोडा प्रिमियर लीगीचे लेजंड आमचे रोहन गांवस देसाई, काउन्सिलर टॉनी सुशांत. राष्ट्रगीत
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थँक यू. काकोडा प्रीमियर लीग बानो स पंगड या सर्तेक शेकीत फाल्यां आनीक बॉल टॉस हांगसर टॉस उडयला आनीक Lokman win the toss and selected to ball. Here we go. Pantok and Lokman यांच्यामध्ये आज पहिली मॅच जाता आनीक लोकमान win the toss and elected to ball. मानेस्ताच्या हस्तुकेक आमी हांगसर इंट्रोडक्शन भावनो दोन्ही टिमीच्या भितर चलता. आमचे मध्ये आसात गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल, रोहन गांवस देसाई, टॉनी, काउन्सिलर अर्पणा, सुशांत, वासुदेव, ओमकार वस्त, किशन सावंत यांच्या उपस्थितीत भावनो आशिष करमली. इंट्रोडक्शन बोथ द टीम प्लेयर्स गोइंग ऑन and mic hand over to Sagar Gosavi. Thank you, Ravi sir. So very welcome, a very warm welcome in fact for all the teams and all the dignitaries out in the middle, as we have already done the inauguration of this beautiful tournament, that is Kakoda Premier League, where the players from Kakoda area will get a platform. We'll get a platform to showcase the talent. Meanwhile, we welcome Councillor Shri Vishwas Sawant out in the middle. A very warm welcome to you, sir, as well. So here we are here taking a memory of this tournament, of the very first match, as the players pose themselves for a wonderful photograph with the dignitaries and the chief guest for the occasion. So soon we are going to start with the first match of this Kakoda Premier League, with the best wishes from our beloved local MLA Shri Nilesh Kabral, as well as Minister for PWD, with his warm wishes. Here we go with the first match of this tournament, which is going to be played between and Pine Talk Strikers. In this, Lokman has won the toss and they will be bowling first. Requesting both the captains to kindly set your proceedings as soon as possible. So requesting all the dignitaries to kindly occupy your seat at the dais, as we are about to start the first match of the tournament. Captains of both the team. So requesting Shri Vishwasavan Councillor, kindly take your seat at the dais, and we welcome you for this tournament.
Requesting a member of the organizing team to kindly give a token of love to Shri Vishwas Kamath, who has just arrived to grace this occasion. So meanwhile, two captains leading from the front. Lukman Warriors led by Sanil Sawant and Pintak Strikers led by Sanjay Naik. So meanwhile, all the captains, please note, let's go through few rules of this ground. As we can see, mango trees and even a live wire passing through the ground. So थोडे rules आसात ते मातशे सगळे कॅप्टन मातशे नोट करात. ग्राउंडार आमकां ऑफ सायडीन दोन आंब्याची झाडां दिश्टी पडटात. त्या आंब्याच्या झाडार जर डायरेक्ट बॉल पडलो आनी कॅच धरली जाल्यार ती कॅच जातली. थंय डिक्लेअर रन्स आसचे ना. तुम्ही जे रन्स आसा ते धांवून काडचे पडटले. ते मुखाल्ले दोन आंबे आसा तांकां लागल्यार कांयच डिक्लेरेशन ना. फक्त बॉल जर वयर उरलो जाल्यार बॉल आसा तो डेड बॉल डिक्लेअर जातलो. तेच्या भायर फाटल्यान किपराच्या फाटल्यान हांगा एक लायव्ह वायर वता. खांबे आसा मदीं वायर्स आसात. त्या वायरीक सुद्दां लागून कॅच धरल्यार ती कॅच दितले. तो डेड बॉल आसचो ना. वायरीक लागून जर बाउंड्रीच्या भायर डायरेक्ट गेलो जाल्यार सिक्स आसतली. ड्रॉप जावन भायर गेलो जाल्यार बाउंड्री आसतली. वायरीक लागून कॅच धरल्यार ती कॅच आसतली. सो सगळे कॅप्टन मातशे नोट करात. आनी प्रत्येक इनिंग तुमकां कंप्लीट करपाक 20 मिनटाचो टायम मेळटा. सपोज 20 मिनटाच्या मुखार जर तुमी गेले जाल्यार मागीर अंपायर्स आसात ते डिसायड करतले मुखाल्ले प्रोसिडींग्स कशी व्हरपाची. सो अनेक कळोवणे आसा सगळ्या ओनराक. जर तुमचे सपोर्टर हांगा ग्राउंडार येतले, तुमचे प्लेयर्स आसात, मातशे एक रिक्वेस्ट आसा ऑर्गनायझरा तर्फे की जे गाडी घेवन येतात ते मातशे ग्राउंडार हाडचे न्ही. कित्याक हो टुर्नामेंट आसा तो यूट्यूब लायव्ह आसा. सो मातशे टुर्नामेंटाक आमी जाता तशें आमच्यान मदत करया बरे भशेन पार पडपाक. सो हीच काही सूचना आशिल्ल्यो गृहीत धरता सगळ्यांनी लक्षात घेतल्या आसतल्यो आनी असोच आमी आतां ह्या टुर्नामेंटाक सुरवात करतात. So once again, if the ball is hitting those two mango trees towards the offside which are inside the boundary rope, nothing is declared. Catch will be given. If it touches the leaf or the branch and the catch is taken, then the batsman will be declared out. No runs are declared for the trees which are inside the boundary rope. If the ball gets stuck on the branches, then it will be declared as a dead ball. Then there are another two trees on the boundary rope. If the ball touches even the leaf of that those mango trees on the boundary rope, then it will be declared as a sixer. If it is direct a bounce, it will be a boundary. Then there is a pole, electric pole inside the boundary rope. If the ball touches any part of those pole as well as the wire, the catch will be declared as a out. There are no runs declared. All the other things will be considered as per the situation. If the ball travels out of the boundary rope, hitting the wire directly, then it will be a six. If it goes along the ground, then it will be a boundary. So these are certain rules, and every team will get 20 minutes to complete the inning. So all the captains kindly note, and before we could start, requesting the extra player of each team, please accompany our scorer. Requesting the umpires to kindly hold. 12th man दोन्ही टिमीचो कॅप्टन मातसो हांगा धाडचो. प्लेयर्साची नांवां आमकां हांगा बरोवपाक डिफिकल्टी आसा.
जर कितें इंडिविज्युअल प्रायजीस आसात आनी प्लेयर्साचें नांव पावना जाल्यार तुमकां इंडिविज्युअल प्रायजीस आसात ते एखादी चुकपाक शकतात. सो मागता सगळे कॅप्टना लागीं आपलो जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर आसा ताका हांगा माटवान धाडचो जेणे करून आमच्या स्कोरराक हांगा सामकें इजी जातलें तुमच्या प्लेयर्साची नांवां बरोवपाक. So here we go with the first match, requesting both the teams to kindly send your 12th man. अजूनही 12th man हांगा पावना, मातशी मॅच स्टार्ट जावपाक टाइम जाता. दोन्ही टिमीक मागता आपल्या 12th man मातशे बेगीतले बेगीन धाडचे हांगा रोखडीच मॅच सुरू करूया. कॅप्टन प्लीज मातसो एक्स्ट्रा प्लेयर हांगा माटवान धाडचो. लोकमान्याचो पॉइंट ऑफ स्ट्रायकर्साचो हांगा पावला. लोकमान्य प्लीज. So innings will be played for 5 overs each, in which one will be a power play. So here we go, two openers out in the middle. Sanjay Naik at the striker's end, Pradul Sangikar at the non-striker's end. Saish to deliver for Lokmanya, and here we go with the first delivery. Short pitch delivery, equally well played. Guys about one square leg ball is racing away from the fielder, and that is a wonderful boundary to start the proceeding. What a player Sanju, everybody knows, and he is the most valuable player for his side, leading from the front. Guides the ball towards the square leg. That's a welcome boundary from Sanjay. Second delivery of this inning. Another short pitch delivery, could not judge the ball properly. Takes it onto his leg. Maybe have hurt himself, as Saish is also good at delivering at the right pace. No harm done. Second delivery goes as a dot delivery. There is a chance was there for catch, but Bhavnesh tried to stay back and fills the ball safely. So single, total moves to 5, and with that the left-handed sensational Pradul is on striking end. This is going to be a very good contest. Left and right hand combination. Definitely there will be a lot of pressure on fielding team captain as how and where to set the field. Meanwhile, myself, Sagar Gosave, along with the team scorer, Naik. A good strike of one is the immediate call, and definitely they'll complete a single. So meanwhile, a team of officials, Sanjay Naik is a square leg umpire, Sunay Naik and Suraj as well will be doing the job of officials. And meanwhile, just the next full visual. What a wonderful strike! Definitely the ball wins the race as it goes above the boundary rope. Beautiful sixer from the man in form. Sixer to take the score furthermore to 12. First over in progress. All the wickets intact. And a beautiful straight drive, a treat for eyes to watch as a stylish looking drive from Sanjay. What a hit. So here we go with the next delivery. Sanjay looking in a hot sizzling form on the very first match, on the very first day. Another good strike. Fielder is absent because of the power play, and the ball races across the fence and drop to cross it. Boundary taking the total furthermore to 16. Power play hitting in the power play, putting the pressure on the opposition. This is the good
positive approach from Sanjay Naik leading from the front. And let's see what will be the answer from the fielding team. Let's see who is going to bowl the second over. After completion of first, score is 16 without any loss of wicket. And soon in the team of officials, Sanket Gaokar will be joining with his sweet voice and will be giving details in Hindi. So meanwhile, second over, let's see. Requesting the volunteers to kindly take your charge as the ball which are hit out of the boundary rope to be brought as soon as possible. So requesting all the club members and the volunteers to kindly take your position. Second over is handed over to a speedster, young talent. Let's see what he can do for his team. A young Turk has been given the responsibility to bowl the second over as a power play over is completed. Now 5 fielders are placed outside the 30-yard circle. Pradul on the striking end. Swing, there's a chance of catch. Two fielder watching the ball as ball sails away from them. A drop to cross the fence. And this is a welcome start by Pradul as well for his team. First ball goes out of the boundary rope. A boundary takes the total furthermore to 20. Right now the run rate is accelerating as if they are in a race. So let's see whether Bhavnesh can put some brakes on that. High running right, what a delivery. This is the break that has been applied by Bhavnesh, taking the first wicket, taking the opener on himself. Clean bowled back to the pavilion. For the loss of 1 wicket. The fall of a wicket brings another good all-rounder from Pongelwal area, Aditya Naik, who has performed in the previous tournament. He knows in and out of this ground, knows this wicket very closely as what will be the bounce. And here we go as Aditya takes the guard at the striking end. Plays watchfully, one is a goal denied by Sanjay. Definitely there was an element of risk involved as Aslam Sheikh is very quick at the covers, stops the ball very quickly and stops a single for his side. So the battle is going to be continued between Bhavnesh. A young Turk gives the breakthrough that is required. Short pitch, really wanted to pull but no proper connection. Takes the ball straight to the bowler. Good over so far. First ball was dispatched for a boundary. After that, what a comeback. A wicket on the very next delivery and now 2 dot balls. Just 4 runs from this over and a wicket. Another pacey delivery but slightly deviating from line and let as Sanjay Naik stretches his arms, signaling this is a wide delivery. That takes the team total now to 21 after a long break. Good delivery, wonderful strike straight along the carpet towards the long on region. Sachin Desai fields the ball for a single. Beautiful over to be witnessed on this very ground. Power play over was little expensive, but Bhavnesh doing the right thing as the scoring run rate has been halted after a breakthrough. Now Sanjay Naik on to the striking end. This is a bit of challenge for Bhavnesh. Let's see what is going to be his approach. Full pitch delivery, ball takes the leading edge, travel toward this shot, third man region. Strong throw, but could not stop the single. Wonderful strategy, takes a single to retain the strike. That concludes over number 2. After completion of 2, score is 23 for the loss of 1 wicket.
So even a DJ is going to join in a while as we have just started the tournament. The DJ there to add the beauty and make the people groove on some of these beautiful tracks. So soon the DJ is going to arrive. Meanwhile, सो मातसो एक रिक्वेस्ट आसा, जर कोणी बाउंड्रीच्या सामके लागीं जर गाडयो दवरल्यात जाल्यार मातश्यो फाटल्यान घेवच्यो, कित्याक फिल्डर जर धांवत आयले बॉल हाडोवपाक जाल्यार एखादी एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसात, कित्याक हांगा एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम काय आमची ना. So next bowler Siddharaj Bhosle, middle chance of a catch, fielder takes a catch and what a wicket. Look at the celebration of Siddharaj, knows the importance of this wicket. Left arm orthodox bowler delivers full length, a simple push and ball travels towards the cow corner. Second wicket back to the pavilion. Sanjay Naik not happy with himself. If he has to just put little pressure, then ball would have crossed the fence quite comfortably. But nonetheless, confident bowling from Siddharaj takes big wicket of Sanjay Naik. So one danger batsman walks back to the pavilion. Another dangerous all-rounder appears out in the middle at the striker's end. None other than Ganesh Patil. He is also popularly known for big hits. Doesn't take much time before he swing his bat. Let's say every day is a different day. What is going to be his approach? Holding a very beautiful willow in his hand, waiting for strike as Siddharaj Bhosle, very confident bowler, takes a wicket on the very first ball. Here we go with the second. Short pitch delivery, big swing and a miss. A ball hits onto the shoulder of Ganesh Patil. Keeper is very quick behind the stumps, no harm done. 2 dot deliveries so far in this third over. What was looking to be a very high scoring match, now we have put in a doubt. Still, 2 good batsmen are out in the middle. Short pitch delivery, here she goes, a bounce across the fence, and this is the power of Ganesh Patil as well. Boundary taking the total to 27. Third in progress, a word of advice from a wicket keeper Sunil Sawant to his bowler as how to go with the proceedings. Siddharaj onto his run-up mark, thinking what to deliver next. A boundary and a wicket in this over as well. So wonderful job as the match ball has been retained on the ground. But what a beautiful strike from Ganesh. After a couple of deliveries, he hits the ball towards the wide-edge square leg region. Another good chance of a catch. Is it going to be hit? Sachin Desai under the ball. Yes, it's a call, and definitely third wicket back to the pavilion. This is a very beautiful comeback from the fielding team. Although there were 16 runs in the power play over, now they have managed to take 3 wickets in the third over. Do you recall not long ago when you walk on the sidewalk?
Thank you, DJ. So, new man in is Srujan. Sarthak, I beg your pardon. Checking the field set for him. Let's see whether he can get some runs from this over. Switch hit was that, and one is the call. Ball is racing towards the third man. Rujan, good fielding. Good throw from Shantanu. Back to the keeper. Meanwhile, a single to open the account. With that, score moves to 28. Third over in progress. At the moment, the current run rate is of 9 plus 4 runs per over. This is the final delivery of the third over. Aditya on the striking end, checking from where he can get the runs, as there are only few vacant areas outside the 30-yard circle, as the 5 fielders are plotted to patrol the fence. Good strike along the carpet, playing sensible, knows there's a fall of a wicket. He needs to study the shape from here on. Takes a single to retain the strike in the fourth over. So after completion of 3, score is 29 for the loss of 3 wickets. DJ. Thank you, DJ. Shantanu, another good all-rounder, I must say. Popularly known to maintain his line in length. Not giving an inch for the batsman to really go after him. If you want to hit him, then you have to create a beautiful cricketing shot to get that power. Lovely delivery, lightly Yorker, good fielding at the cover. Aslam throws the ball straight to the keeper. Meanwhile, single on the cards. And that single brings Sarthak on the striking end. With the team total moves to 30. So now we can see more 3 digits on the scorecard. 3.1, 30 runs and 3 wickets. Full toss delivery, what a hit. This is the trouble that Shantanu has asked for, and he gets the treatment. Sixer takes the total to 36. You can't give such free buys if you want to bowl a decent line in length and stop the opposition from a high scoring total. Meanwhile, the instinct and the power of the batting team we have just witnessed. Just a fraction here and there and the ball disappears. Another low full toss, what a hit onto the pandal, asking the scorer to mark another 6 runs. Consecutive 6s from Sarthak. 2 6s from 2 deliveries that he has faced. What a player he is proving to be for his team. Now the score is racing again after a halt. That Big 6 takes the total to 42. Third over completed, 4th over in progress, 42 on the board. So the match ball has been retained again, as all the members are working very hard to make this tournament and carry forward this beautiful platform. As we can see, many youngsters in this tournament proving their talent, and they have got an opportunity to showcase their talent, as a keen eye of the Honorable Secretary of Goa Cricket Association is on to the players, watching them performing right in front of his eyes. And what a wonderful, wonderful day to witness this cricketing carnival at the very ground of Foxstone. 20 minutes time for the captain to complete the inning. That is also to be considered. Shantanu on to his run-up mark, waiting for his captain to settle the field for him. Another good delivery, lovely Yorker. This is what Shantanu is known for. Apart from those 2 full tosses, beautiful line maintained by Shantanu. Dot ball is the reply from him. Let's see what is going to be the next incoming delivery. Another good delivery, good well played. Flicks the ball towards the mid-wicket region. Shaish, big guy, collects the ball on a fumble, but what a strong throw straight to the keeper. This is what the bowlers are known for having a strong arm.
Just a single takes it total to 43. Another good Yorker, equally well played by Aditya. In a hunt of a second, but a good throw from Sachin. Restricted again for a single, and that concludes over number 4. So after completion of 4 overs, score is 44 for the loss of 3 wickets. Thank you, DJ. The final over of the inning is going to be bowled by none other than the most experienced bowler from the team. First roll off, a chance of catch. Fielder, big guy, takes the catch, and a 4th wicket taken in the 5th over by the most experienced player of Lokmanya Warriors, none other than Sachin Desai. DJ. So new batsman Swapnesh Sawant, popular known as Soapy, is also the owner of the team, taking the willow in his hand, now taking all the charges on himself. Sachin to Swapnesh, setting field, nose in and out of the players that is playing for his opposite team. Another good delivery, equally well played. Are they going for the second? 2 is the call. Aslam is very quick, so no chance of the second. With a single score, moves to 45. And now Sarthak is on the striking end. 45 is the jersey number of none other than the hitman. Let's see whether Sarthak can take the score furthermore at the score of 45. The time will tell us as he is against Sachin Desai. Sachin is a very shrewd bowler, has an ample of experience under his belt. Oh my dear, lovely take behind the stumps, let me tell you. These are not the easy takes. Bowler just bounces and the comeback. Meanwhile, the final over continues. Sachin gradually onto his run-up mark. A wicket and a dot ball. Change in pace. Oh my dear. Ball slightly going over from the keeper. Slight fumble behind the field as well. Ball races towards the boundary. This is misfortune for Sachin. What could have been a wicket has resulted in a boundary, and with the team total moves to 49, just a single away from half century of the team. Sarthak on the striking end. Let's see what he can do of the remaining deliveries that are about to come from the armory of Sachin Desai. On to his run-up mark, thinking what to deliver. Sarthak with a big willow, big blade in his hand, all set to fire in the final over. Change in pace, which it was the attempt. Good thinking by Sachin Desai. Delivers a change in pace, slightly uppish, right near the legs, making it difficult for the batsman. And in this competition, Sachin wins the race so far. Still, final delivery remaining in this final over of the inning. Is it going to be a 6? Is it going to be a wicket?
Is it going to be runs or a dot ball? The time will tell us. Here we go for the final time. Sachin Desai in this inning to Sarthak. Big swing and a miss. Dot ball is the result. What a comeback from Lokmanya Warriors. Exactly half century required for Lokman Warriors to register the first win in this tournament. So we'll say half the battle carries after a short break as the second inning will continue. Till then, it's time for DJ to groove the spectators onto his music. DJ, just a minute. Requesting captain of Action Boys and captain of Sai 11 to kindly come near the panel for toss as you are going to play the second match. Let's carry on the proceedings as quick as possible. Captain of Sai 11 and captain of Action Boys, kindly come for toss as match official Suraj Naik will be taking the toss. सो एक कळवणी आसा सगळे स्पेक्टेटरांक एक रिक्वेस्ट आसा ऑर्गनायझराचो मातशे गाडी घेवन ग्रावंडाच्या मदीं येवचे न्ही कित्याक ही मॅच आसा ती लायव्ह आसा युट्यूबार आनी ते पळोवपाक बरें दिसना सगळे रुल्स जे क्रिकेटीचे आसा ते आमी फॉलो करया बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट हांगा आमच्या ह्या गांवान ऑर्गनायज जाला सो ताका आमी जाता तशें आमच्यान मदत करया आनी ह्या टुर्नामेंटाक जाता तितली बरी शोभा हाडया सो जर आमी अशेंच जर मदीं मदीं येवपाक लागल्यार तें बरें दिसना आख्ख्या जगातले लोक AB25 ह्याच्या चॅनलाच्या सौजन्यान हो टुर्नामेंट आख्खे जगभर पळयतात सो एक डिसेन्सी दवरया हो एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या ऑर्गनायझराचो आशा बाळगितां सगळेच आपल्याक जाता तशें मदत करतले देव बरें करूं सो meanwhile two captains Rajat Sawant Sunil Sawant out for the toss. So requesting both the captains to kindly come near the commentary box and select the match ball for your team. Sai 11 has won the toss and they have decided to bowl first. So let's see what is going to happen in the second innings. 50 runs required to win this match. As we can see, team in yellow, Pintuck Warriors are already onto the field. Sanjay Naik marking his run-up. And soon the match is about to begin. Two openers out in the middle. So two openers out in the middle, Saish and Pratik.
First ball plays watchfully through the gap. Ball goes away from the fielder. Is it going to be bounded? Three fielders running, but Ganesh Patel is very quick on his feet. Fields the ball couple of inches inside the boundary rope, and a couple of runs to carry on with the proceedings as account is open. From here on, more 48 runs required. 30 balls, 50 was the target. Now 29 and 48. Again, plays watchfully. Ball takes the inside edge. Travels to the keeper. Touch out over and out. Oh my dear! This is the scenario. Light moments as bails are off at the both ends, and it looks to be the striker is out as the ball takes off the bails on the way to the keeper. Good anticipation by Sanjay as well. He was not aware that he has cleaned ball Saish. But good gesture, not taking any chance. Hits the stumps directly at the non-striker's end. Meanwhile, a fall of wicket at the score of 2 runs, and that will bring Sachin Desai inside the field. Will be at the striker's end. 2 for the loss of 1. Power play over is on. Target is of 50 runs. Sanjay Naik, a good all-rounder, taking the proceeding in his hand, leading from the front. Couple of runs on the very first delivery and a wicket on the second delivery. So here we go with the next delivery as only 2 fielders have been kept outside the 30-yard circle. Plenty of gaps can be seen in the outfield. So let's see whether Sachin Desai can take maximum advantage of it. As Sachin was not ready, he requests the bowler to kindly hold on, and it is called as a dead ball. Another good strike. Not a convincing one, but it won't matter as the runs are coming. Ball takes the outer edge, travels safely to the short-term man towards the owner of the team. A single takes the team total to 3, and that brings the left-handed batsman Pratik out in the middle, who has come as opener, will be at the striker's end. Let's see what is going to be his approach. A left-handed batsman always looks elegant. The way he plays looks more stylish than the right-handed batsman. Let's see what he is about to do at the striker's end. Sanjay Naik setting the field as the left-handed have arrived at the striker's end. Definitely shift of positions and the field placement. So after correcting the required thing, here we go. Sanjay Naik with the ball, about to deliver the next delivery. Full measure, even a good swing, miss, as the ball goes as a dot delivery. So beautiful power play over so far for the bowling team. Short pitch delivery, hits the ball, fielder under the ball. Is it going to be caught? Oh my God, I can't believe my eyes. Catch has been missed. What would have been the second wicket is not been taken. Is it going to be the drop of the match? As the saying goes on, catches win matches and drop catches take you back at home. Another good swing away from the fielder. Ball is racing towards the boundary rope. Big guy, Sagar misses, and that is the boundary. Sanjay Naik not happy with the fielding effort. You have to raise your standards, fielding standards, to win the matches. This is what Sanjay is saying to his players. Nonetheless, more 4 overs are remaining. A success in this over, but little costly at the end. 9 from the first over for the loss of 1 wicket. DJ.
Thank you, DJ. Second over is given to Baban. Baban Devidas has played many matches on this very ground. Let's see. This is a test for Baban as he is against Sachin Desai. So let me tell you one thing about Sachin Desai. In the last year, in a challenge match, that is the 2020, that is played in the rainy season, the same batsmen have scored 150 runs in that match. So we can judge the capacity and capability of this player who is at the striker's end at the moment. So definitely there will be some pressure on Baban Devidas, but he has to soak it all because that was a different situation. This is a different situation. First delivery, oh my dear, that form continues. What a hit on towards the cow corner region. Sachin Desai continues the same form. A reminder has enlightened his spirit and his confidence. Sixer takes the team total to 15. Second over in progress into the slot of Sachin. Another good delivery, change in pace, equally well played, again towards the same region along the carpet to take a single. And that will bring Pratik on the striking, and Pratik is also very much clear with his intentions. Let's see whether he can connect in the second over. He had a fortune in the first over, a catch dropped. So lucky day for the batsman. Can he capitalize onto it? Baban right arm over the stumps. It was a slightly short pitch delivery. No chance for batsman as ball travels safely to the keeper. A hint of a cutter that has been bowled by Baban. Another good delivery, ball deviating away from the batsman. A word of advice from senior partner to the youngster who is at the striker's end. Definitely will be some advice. Let's see what is going to happen after that advice. Couple of words exchange between the partners out in the middle. As Sachin walks back to his guard at the non-striker's end. Baban Devidas with the ball. Left-handed batsman on the striking end. Good full pitch delivery. Shuffling outside the off stump. No connection whatsoever. Ball has been pitched right into the wide Yorker region. Consecutive dot balls bowled by Baban Devidas. What a comeback in this over as well. First delivery was hit for a maximum. Then a single and a continuous dot deliveries. Another good show continues from Baban Devidas. Meanwhile, keeper onto the charge and the finger has been raised. Aditya, very quick, shrewd all-rounder behind the stumps, takes the wicket in form of a stump out. 2 wickets back to the pavilion after completion of 2. 16 for the loss of 2 wickets. So Newman walks in. Sunil Sawant, captain of the side. He is also a very strong character when it comes to cricket, especially when he holds the willow in his bat, knows where are the vacant areas, knows how to hit the ball in that vacant area, has a very strong shoulder and very strong arms, can hit the ball with an ease. So let's see who is the bowler to bowl the third over. Looks to be Aditya Naik has taken his hat off. Aditya is also
a very good prospect. And he has been introduced by Sanjay Naik to bowl the third over, although they have more options like Ganesh Patil. But maybe keeping Ganesh Patil in the deciding factor. Aditya is also a very shrewd bowler. Has been able to give big blows to the big teams in the recent past. Taking that confidence and that have made Sanjay Naik to hand over the ball to Aditya. Jersey number 13 onto his back. So in the remaining quota of 3 overs, 34 runs required. 2 wickets back to the pavilion. 8 wickets in hand of Lokman Warriors. First delivery, a big swing and a miss onto his knees. Wanted to hit the ball towards the square leg region. No connection, makes the ball to travel safely to the keeper. Aditya right arm round the stumps, getting the angle to take the ball away from the batsman. First ball goes as a dot delivery. Another good strike, chance of a catch. Who is going to take it? Aditya onto his run-up mark, takes a catch. Third wicket back to the pavilion. So this is a beautiful contest happening out in the middle. The opener played between Lokman Warriors and Pinetock Strikers. And Pinetock Strikers are striking at the moment with the ball. 3 wickets back to the pavilion. तीन गेले विकेट स्कोर So Newman is another young Turk, Bhavnesh, proving to be all-rounder. In this beautiful game of tennis ball cricket, these fancy shots are on numerous occasions that I've witnessed. Switch hit attempted on the very first delivery. If he has to connect, definitely he would have pierced the gap at the point and the cow point fielder. Meanwhile, a single that brings captain on the striking end, and the team total moves to 17. More 33 runs required. Plays watchfully. Straight drive from Sunil to take a single to take the scoreboard furthermore to 18. More 2 overs to be bowled after this over. 3 wickets back to the pavilion. Bhavnesh on the striking end. Full toss delivery. Ball has been placed into the gap, into the vacant areas away from the fielder towards the square leg, and a boundary from Bhavnesh. Another young prospect showcasing his talent, has bowled beautifully now with the willow in his hand, and that boundary takes the team total to 22. More 28 runs required. 2 overs to be bowled after this over. Aditya with the ball in his hand, bowling right arm round the stumps. Bhavnesh on the striking end. Oh my dear, held the edge, even heard in the commentary box. Aditya takes 1 more wicket. What a bowling performance by Aditya. Total 4 wickets back to the pavilion, and that concludes over number 3. So after completion of 3, score is 22 for the loss of 4 wickets. So now another shrewd bowler, Ganesh Patil, has been handed over the delivery. Let's see how he is going to execute in this over. Sujan is a new man in at the non-striker's end.
Ganesh Patil with the ball. Captain on the striking end. Now he has to really sail the ship from here on. Let's see how he is going to do it. As 28 runs required from 12 legal deliveries. 5 sixes away from the victory. Lovely delivery, slightly outside the off stump. A Yorker, we can say. Wide shocker to take the ball as a dot delivery. Ganesh Patil, another shrewd bowler, knows each and every player who are playing in this Kakoda Premier League and knows their strong and the weaknesses. Another good delivery, ball takes the leading edge, travel toward the short terminal region. Owner of the team, Swapne Sawant, gathers the ball quite comfortably. A single to bring Srijan on the striking, and this is going to be a very good contest to watch as both the players plays regularly at Puntable ground. So this is a better contest. Srijan versus Ganesh. Low full toss, and the ball has been hit towards the square leg region. Welcomes with a big six. Knows each other very well. And Srijan just expecting what Ganesh is about to deliver. Ball comes as per his expectation. Flicks the ball towards the square leg for a big six to take the total to 29. 21 more required. Another swing ball has been going towards the square leg along the carpet. Fielder from the tip gathers the ball quite comfortably. A single. With the single, score moves to 30. 20 runs required from here on. So far, captain is very quiet with the willow in his hand. Not yet started with the firework. Short pitch, chance of a catch. Adit is not going to drop as a gloves also for support. And a fifth wicket back to the pavilion. Captain slowly, gradually marching back to his pendle. Team, but 20, it looks to be very easy orally, but physically we know how difficult it can be. Some good bowling required for the fielding team as well. Saltak is the bowler to bowl the final over, who has been the architect to make it to the 50. Now let's see whether he can defend these 20 runs in the final. First delivery, big swing, chance of a catch. Adit under the ball, and the first wicket taken by Sarthak on the very first delivery in the 5th over. DJ.
Thank you, DJ. It's a new man in Jalen. 5 deliveries and 3 sixes. Big swing. Chance of a catch. Is it going to be a second wicket for... yes, it is. What a lovely catch taken by Sanjay Naik, leading from the front. Has to run at least 25 to 30 yards to gather the distance and receive the ball comfortably in his big palms. Wicket number 6 back to the pavilion. Jalen goes into the final over, and the hopes and the confidence of fielding team are much higher, as 3 sixes required from 4 deliveries. Thank you, DJ. So new man is Aslam Sheikh. Let's see who becomes the Jadugar and Bazigar at the moment. Big swing, connects the ball, but a couple of bounces to reach to the fielder. They are running, trying to go for the second. Shantanu is not interested. A single to take the total to 31. 3 sixes will tie the match. Final 3 deliveries in this last over. 3 sixes may bring the super over in the act. First delivery goes on the dot ball, and now just a formality unless a no ball has been delivered by Sarthak. Couple of deliveries remaining. 19 runs required. Another good delivery, lovely over in progress from Sarthak, which makes him a very strong contender. So this is an all-round effort from Sarthak. And let me tell you one thing, most of the owners were reluctant to take this player, and look at the performance that he's giving. Only one flag was raised for him, and he has shown his capacities. Congratulations, Pine Talk Strikers, as you have picked the right player for your team who has performed in this very match. All-round performance from Sarthak Sawant. What a player that have been beaten by Pine Talk Strikers, giving them a victory in the first match. Good all-round performance. कलम में पैशन आउट ऑफ इट कैशन अशोरी है शक्ल से प्रीति पर उसकी बॉडी का डैशन और लड़के सब रहते बस सब मैं 100 बॉल खुलते हैं क्लब में गले को रखते बर्फ में थक मेरे बसता है रग में पूरी लाइफ घुसे हम आए नहीं लब से भातेरा मस्त है सब जबरदस्त है हैप्पी ना मस्त है बहुत किए कष्ट है खुद ढूंढे रास्ते हाथों के मलने से मिलता नहीं रब से कुछ पहली बार घसे थे तब से कुछ पुश टू स्टार्ट में पहले गाड़ी को करते थे पुश ये असल में शुक हम दे देंगे दुख हमें बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर हमें बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में Thank you, DJ. जादूगर आए बाजीगर बाजीगर. Meanwhile, I welcome my fellow commentator, my partner Sanket Gaonkar in the commentary box. Second match is going to be played between Sai 11 and Action Boys. Sai 11 has won the toss and they have decided to bowl first, inviting Action Boys to kindly come up and take the charge out in the middle, requesting the 12th man of both the team to kindly assist our scorer. Meanwhile, would like to invite Rohan Gaus Desai, Honorable
Secretary of Goa Cricket Association, and the person to make this tournament possible, to give away man of the match. There have been plenty of names for the man of the match as we go through the performance. Sanjay Naik, who has scored 16 runs, and in the bowling he has taken a wicket. Then Bhavnesh also, who has bowled really well. Sachin Desai also has bowled, but he is at the losing team. And finally the jury has decided the person who has made the difference, scored 18 runs and have bowled the final over to take the victory away from the opposite team. Sarthak Sawant, kindly come and collect your man of the match from the hands of none other than Rohan Gaus Desai. So meanwhile, in the second match, definitely change of teams and definitely change in the commentary. Sanket Gaonkar sir, kindly come and deliver with your sweet voice. सार्थक सावंत रिक्वेस्ट करता मातशी कॉमेंट्री बॉक्साक येवचो. सार्थक सावंत मॅन ऑफ द मॅच जलते गेलते मजीचो. और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, लेकिन एक रन यहाँ पर लेग बाय के रूप में मिलता हुआ और सॉरी बैट लगी है यहाँ पर और दूसरा रन जुड़ता हुआ टोटल में. टोटल स्कोर 3 रन. I request 12th man जर असं झालं मासे कॉमेंट्री बॉक्स दोन्ही टीमचे. बहुत ही बढ़िया गति के साथ हल्के हाथों से खेला. एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा जब तक फील्ड करता. और सनील यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस मैच की, इस ओवर की, पहले ओवर की. अगली गेंद इस बार रिवर्स हुई बॉल, ये गई गेंद सीमा रेखा के ऊपर से. इंतजार रहेगा एम्पायर के डिसीजन और 6 रन बहुत ही बढ़िया पिकअप किया. स्लोअर छोड़ी थी लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर संपर्क और बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए. और जो बढ़िया अब तक ओवर रही थी सलील की, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन किया था. लेकिन बैट्समैन की पर तारीफ करनी होगी कि बहुत ही बढ़िया इस तरीके से पिक किया और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए. और इसी चक्के की मदद से 10 पर पहुंचा स्कोर. इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद गाइड किया, वहां पर फील्डर मौजूद है सर्कल में, लेकिन एक रन यहाँ पर लेने से नहीं रोक सकेंगे. और इस एक रन को जोड़कर 11 पर पहुंचे है कुल स्कोर. निवेश है बैटिंग मार्ग पर. इस बार बहुत ही बढ़िया गति के साथ लाइन और लन के साथ ओवर की शुरुआत काफी अच्छी की थी, लेकिन एक बॉल जो छक्का लगा उसके बाद बाकी जो डिलीवरी से बहुत ही बढ़िया रही है. और ये गेंद डॉट गेंद दिवेश और रजत है बैटिंग मार्ग पर अपनी बैटिंग की कमान संभाली. इस बार यहाँ पर फील्डर मौजूद, अगर थोड़ी सी इधर उधर होती तो जरूर यहाँ पर चौके के लिए जाती, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 12 लगे बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के.
पहली ओवर अच्छी रही, केवल एक छक्का आया था। दूसरी ओवर यहाँ पर ध्रुव बॉलिंग मार्क पर है तैयार। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 लगे बोर्ड पर और 5 ओवरों का ये मैच देखेंगे कहां तक पहुंच पाती है। इस बार और बाही खुले अंपायर ने और वाइड का इशारा आता हुआ पहली गेंद थोड़ी सी दिशा से बटके ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, इशारा वाइड का और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा रन अतिरिक्त रन यहाँ पर जोता हुआ टोटल में। और इस रन को जोड़कर कुल स्कोर हुआ 13। पहली ओवर रही थी सुनील की और 12 रन हुए थे अपनी पहली ओवर में। इस बार बहुत ही अच्छा संपर्क और ये गेंद आउट। वापस पहला झटका लगता हुआ, हालांकि शॉट अच्छी थी लेकिन बाउंड्री के पार नहीं जा सकी। वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद और सीधी जाती हुई हाथ में। और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ दिवेश कुछ खास नहीं कर सके, केवल 2 ही रन बनाकर वापस। और इसी के साथ 13 रन पर लगा है पहला झटका। अगला बैट्समैन प्रसन्न स्ट्राइक पर उतरे हैं क्योंकि पिछले बॉल पर गई थी विकेट। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अपील जरूर लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। और हालांकि शॉट अच्छी थी लेकिन इतनी यहाँ पर एलिवेशन पावर नहीं थी कि बाउंड्री के पार जाए और उसी के बदौलत दिवेश आउट होकर गए वापस। उसका साथ देने के लिए प्रसन्न। इस बार फिर एक बार हवा में गेंद और दूसरी विकेट का यहाँ पर और बॉलर अपने ही फॉलो थ्रू में दूसरी विकेट का पतन यहाँ पर होते हुए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग ध्रुव को लाया गया था कप्तान ने और अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए 2 झटके यहाँ पर दिए हैं दिवेश ने। प्रसन्न कुछ खास नहीं कर सके, एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश में अपना विकेट खोकर गए हैं वापस। नया बल्लेबाज संजील उतरे हैं मैदान पर। और फिर एक बार दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा आता हुआ दूसरी वाइड इस ओवर के, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर लेने में कामयाबी मिली है ध्रुव को। और तारीफ करनी होगी क्योंकि 5 ओवर का खेल और अगर विकेट्स यहाँ पर नहीं लेते तो एक बड़ी टोटल का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, मिड विकेट का यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद जब तक फील्ड करता है। एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कमजोर और ये ओवर 2 विकेट यहाँ पर जरूर गिरे हैं तो थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। इसके बाद 3 ओवर का खेल रहेगा। उस 3 ओवरों में अंतिम ओवरों में बड़ी शॉट लगा सकते हैं तो इस ओवर में जो 2 विकेट यहाँ पर गिरे हैं तो उसी के बदौलत यहाँ पर थोड़ा संभल कर देख कर खेलना होगा बल्लेबाजों को।
फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन अपील जरूर की है, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। और एक छक्का लगाया था पहले इस रिवर्स शॉट पर, लेकिन इस बार कनेक्शन अच्छा नहीं। मैंने कहा था कि ध्रुव अब जो बॉलिंग इस ओवर में की है बहुत ही बढ़िया रही है, 2 विकेट्स यहाँ पर लेने में कामयाबी है, लेकिन एक खतरनाक शॉट था और इस खतरनाक शॉट को खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। इस बार फुल टॉस गेंद भी, वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है, जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम। वहां पर जो फील्डर था सर्कल में कवर्स का फील्डर, अगर थोड़ी सी इधर उधर होती तो जरूर चौके के लिए जाती, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चुस्त और तंदुरुस्त फील्डिंग। और इसी तरह से यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। तेरे शहर विच खाली करनी कल्पनी, एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं तो लेना नी। मैं डाकू एक नंबर दा जेड़ी चीज ते आखे ओ खोल लेना। मैं डाकू एक नंबर दा जेड़ी चीज ते आखे ओ खोल लेना। यार मेरे निकले ट्रेंचा तो गेम ना तू देखी बैक बेंचा तो दिन सिगरे आ सोल्ड आउट शो। तीसरी ओवर की पहली गेंद और हवा में गेंद, फील्डर नीचे, पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और सीधी जाती हुई गोदी में तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर पहली गेंद थी मंतेश की, और पहली गेंद पर झटका देते हुए तो बैटिंग टीम जो है थोड़ी सी यहाँ पर बैकफुट पर है, क्योंकि तीसरी विकेट यहाँ पर गिरती हुई तीसरी ओवर की पहली गेंद थी और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, उसी कोशिश में गांव बैठ अपना तीसरा विकेट। नया बल्लेबाज दीप उतरे हैं मैदान पर बैटिंग की कमान संभालने के लिए। फिर एक बार हवा में गेंद, बॉलर बॉल के नीचे और आसानी से दूसरा झटका यहां पर देते हुए मंतेश। पहली गेंद पर मिली थी पहली सफलता, दूसरी गेंद और यहां पर इंतजार रहेगा हैट्रिक का, क्या हैट्रिक ले पाएंगे अगली गेंद पर। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी, 2 गेंदों में यहां पर 2 विकेट लेकर बहुत ही बड़ा झटका दिया है बैटिंग टीम को। तीसरी गेंद हैट्रिक, यहां पर क्या लेने में कामयाबी मिलेगी मंतेश को। 2 विकेट ले चुके हैं 2 गेंदों में, तीसरी यहां पर गेंद और नया बैट्समैन चंद्रेश उतरे है मैदान पर। यहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला, खिलाड़ी मौजूद और सिंगल, तो यहां पर हैट्रिक का एक मौका जरूर था, लेकिन ऐसा मौके का फायदा यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2 विकेट और उसके बाद ये गेंद 1 रन आया और 17 पर पहुंचा, इस 1 रन को छोड़कर कुल स्कोर। फिर एक बार हवा में गेंद और बॉलर जो है दौड़ लगाई और आसानी से यहाँ पर तीसरा झटका देते हुए, तो विकेटों की झड़ी यहाँ पर लगी हुई है, बैट्समैन आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
5 विकेट का यहाँ पर हुआ है पतन। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं केवल 17 रन। इस बार कट करने की कोशिश, थोड़ी सी यहाँ पर मिसफील्ड कीपर द्वारा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं, रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मुंतेश ने अब तक 5 गेंदें की है और इस 5 गेंदों में 3 विकेट और केवल 1 ही रन इस ओवर में दिया है और बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए अपने टीम के लिए। फिर एक बार बढ़िया गेंद, अपील जरूर हुई है लेकिन यहाँ पर अंपायर इंटरेस्टेड है और उसी के साथ ये सफल ओवर बहुत ही सफल कही जाएगी क्योंकि 3 विकेट इस ओवर में और केवल 1 ही रन और उसी के साथ 3 ओवरों का यहाँ पर खेल खत्म। 17 लगे हैं बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। और अगला बैट्स बॉलर वैभव, चौथी ओवर लेकर 3 ओवरों का खेल जब समाप्त हुआ था तो आधी टीम वापस जा चुकी थी और बॉलरों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बांध के रोक के रखा है। चंद्रेश स्ट्राइक पर 1 रन लेकर स्ट्राइक दिया अपने पार्टनर को और 1 रन जोड़कर हुए कुल 18 रन। सुनय नायक द मॅच ऑफिशियल्स आसा ताका रिक्वेस्ट आसा की नेक्स्ट मॅचीचो टॉस आसा तेणे हांगा करचो। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कट करना चाहते थे और अपील यहां पर जरूर की है। उसी बीच 1 रन यहां पर दौड़कर किया है कंप्लीट। कीपर ने यहां पर स्टंपिंग की थी लेकिन नॉट आउट का इशारा और उसी की बदौलत जो थोड़ी सी घबराहट में 1 रन यहां पर किया है कंप्लीट और इस 1 रन को जोड़कर 18 लगे हैं बोर्ड पर, सॉरी 19 लगे हैं बोर्ड पर इस 1 रन को जोड़कर। अंपायर सुनयना एक रिक्वेस्ट असा की त्यांनी फुल टॉस असा तो घेऊन दवरचो। अंपायर सुनय नाईक। चंद्रेश स्ट्राइक पर है मौजूद। चौथी ओवर है प्रगति पर। इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क, देखते हैं कहां तक जाती है गेंद और ये गेंद कोई यहां पर रोक नहीं सकेगा क्योंकि सीधी सीमा रेखा के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। और इस चक्के को जोड़कर 25 पर पहुंचा स्कोर 5 विकेटों के नुकसान के बाद। और इसी तरीके के 2-3 शॉट अगर यहां पर लगते हैं चंद्रेश के बल्ले से तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि विकेट्स गिरने की वजह से रोक लगी है स्कोर पर, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ लाइन गेंद थी और उसे पुल कर दिया सीधे सीमा रेखा के ऊपर से। फिर एक बार शॉट ऑफ लाइन गेंद
कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन इस बार चूंकि थोड़ी सी उछली गेंद पड़कर और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हालांकि कट करने की लेंथ थी, लेकिन चूंकि और एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई 25 पर रुका हुआ स्कोर। इस बार बहुत ही बड़ा संपर्क और दूसरा छक्का आता हुआ चंद्रेश के बल्ले से, और यहां पर बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हुए चौथी ओवर की इस आखिरी गेंद पर चंद्रेश ने दूसरा छक्का लगाया अपने इनिंग का, और इसी के साथ 31 पर पहुंचे स्कोर 5 विकेट के नुकसान के बाद और चौथी ओवर की समाप्ति के बाद। सर्वेश 5वीं ओवर यहां पर लेकर फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा यहां पर उठा नहीं सके। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मौजूद, और दूसरा रन यहां पर महंगा पड़ सकता है और मना किया। हालांकि चंद्रेश होंगे स्ट्राइक पर, पिछली ओवर में 2 बढ़िया छक्के लगाए और इस आखिरी ओवर में देखना होगा कि कितने छक्के यहां पर लगा सकते हैं और कितने दूर तक अपनी टीम के स्कोर को ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंद, संपर्क उच्चा नहीं, उतना अच्छा नहीं, और ये कैच ड्रॉप। दूसरी रन की यहां पर कोशिश और दूसरा रन यहां पर मिलेगा। चंद्रेश ने एक शॉट खेली थी, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, हवा में रही काफी देर, फील्डर पहुंच चुके थे, लेकिन इन वक्त पर छिटकी हाथ से, और इसी की बदौलत एक जीवनदान यहां पर मिला है। और देखेंगे कितना फायदा यहां पर उठाते हैं चंद्रेश। चंद्रेश के पास 4 गेंदें अभी भी बाकी इस इनिंग की। बढ़िया गेंद, कोई थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, लेकिन यॉर्कर लाइन गेंद थी, लेकिन दिशा जो है थोड़ी सी भटकी और वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ टोटल में, और इस एक रन को जोड़कर 35 पर पहुंचा स्कोर। फुल टॉस गेंद, लेकिन सर्कल में फील्डर मौजूद और छठा झटका यहां पर लगता हुआ। संपर्क उतना अच्छा नहीं, हालांकि गेंद जो है इस गेंद पर भी एक बड़ा प्रहार कर सकते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, और इसी की बदौलत वापस जाते हुए छठा झटका लगता हुआ चंद्रेश आउट होकर वापस। नया बल्लेबाज नवीन उतरे हैं मैदान पर, और ये आखिरी ओवर की कुछ ही गेंदें बाकी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर, लेकिन डॉट गेंद जो बॉलर आज इस्तेमाल किए हैं सभी बॉलर ने बहुत ही बढ़िया यहां पर प्रदर्शन किया है। 6 विकेट अब तक लेने में कामयाबी मिली है, और इस आखिरी ओवर में देखते हैं कहां तक पहुंचता है टीम का टोटल। इस बार वही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ जी नहीं, ऑप्शन से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ, और एक और अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ। हालांकि इस ओवर में जो गति और जिस तरीके की बॉलिंग यहां पर रही है बहुत ही बढ़िया, लेकिन 2 वाइड इस फुल टॉस गेंद सिर्फ गाइड किया, वहां पर फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग की दिशा में खेली थी गेंद, और एक ही रन से यहां पर होंगे संतुष्ट।
इस एक रन को जोड़कर 37 पर पहुंचा है कुल स्कोर। और ये बहुत ही बढ़िया यॉर्कर गेंद, कोई यहाँ पर मौका नहीं, और इसी के साथ इनिंग यहाँ पर समाप्त होती हुई कुल 37 रन यहाँ पर बनाए 5 ओवरों में, और 38 रन यहाँ पर चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चलो रिक्वेस्ट है बैट्समैन से कि जल्द से जल्द आकर अपना स्ट्राइक ले। समय की यहाँ पर पाबंदी, सभी मैच आज यहाँ पर खेलने, और जितना समय यहाँ पर व्यर्थ जाएगा उतने ही ओवर्स यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। विनती है बैट्समैन से कि जल्द से जल्द यहाँ पर आकर अपना स्ट्राइक ले। मागता बैट्समैन आकडे मॅच जातीतले बेगीन क्रिकेट न्यूचे एक इनिंग एक 20 मिनिट्स तर इनिंग जी आसा ती काबार करपाची आसात, नाल्यार पेनल्टी जी आसा ती लागतली। सो सगळ्यांनी कोऑपरेट करचे। सगळी टिमीक विनंती आसा की टाइम वेस्ट करनासतगीर जाता तितले बेगीन आपलो खेळ जो आसा तो प्रदर्शन करचे। तो आगे का हाल दूसरी इनिंग का सुनाने के लिए आपके सामने अंग्रेजी कमेंटर सागर कुसाई सर आपके सामने होंगे। So two openers out in the middle, Sai Sawant and Sai Shnaik. Sai Sawant at the striker's end. Chandresh Desai to open as far as bowling is concerned. First delivery, quick one, straight to the keeper. Never underestimate Chandresh Desai. He might be injured, but as soon as he reaches on the field, you can see the tiger performance coming out from Chandresh Desai. He has shown it in the batting, now with the ball, bowling the power play over. Meanwhile, flicks the ball. Ball is racing towards the short of fine leg region. Ball goes away from the fielder. Quick recovery from Navin will stop the ball from crossing the fence. Meanwhile, couple of runs on the board. With these couple of runs, score moves to 2. Meanwhile, a good strike away from the middle fielder as ball races away, and that is a boundary. With the boundary score furthermost to 6. Power play over is on, as you can place only 2 fielders outside the 30-yard circle.
Definitely the skill of a captain and the bowler is tested in this power play over. As which are the regions where the ball is to be delivered, where are the traps that have been kept for the batsman. All the things have been witnessed, and definitely we can see a change in the field. Another change in pace. Ball follows the same fielder. And there's a saying in cricket, if it's an odd day of a player, then bowler definitely follows the same player. That is what we can see. One which was looking to be a catch that was hit towards the mid-off region. The similar fielder has been placed at the mid-on region, and the ball follows the fielder. So meanwhile, couple of runs with the team total moves to 7. And that brings the left-handed batsman Saish, popularly known as RJ, on the striking end. On his favorite area, we can see are those two beautiful mango trees. Another strike straight down the ground where the fielder is being patrolling the fence. Fields the ball on a couple of bounces, throws it back to the bowler. Meanwhile, a single that rotates the strike as well as scoreboard moves with a single. Score moves to 8. Another change in pace, chance of a catch. Is it going to be caught? Sanjay gives a call and the big guy takes the catch. Chandresh provides the much needed breakthrough in the power play over. Decent power play over, 8 runs and a wicket. So now Diptesh Kirkar, another good all-rounder, proving to be all-rounder, but bowling is his main weapon. Let me tell you one thing about this player. In the South Goa Premier League last year, Diptesh was picked by Amazing Super Giants, and in the final over, 9 runs were required, and Deep has bowled a beautiful over. He has given only 2 runs, have taken 3 wickets, and that has made him man of the match in the South Goa Premier League last year. And the same bowler now bowling in the Kakoda Premier League. Let's see what is the performance that the team is expecting from Deep and what Deep is about to deliver. Meanwhile, Saish, RJ on the striking end. Four overs, 30 runs required. First delivery, there's a shot on chug. And the ball goes the distance. Sixer from the bat of Saish. RJ, team to leg region. No chance for the fielder rather than watching the ball sailing past. Sixer to welcome Deep Kirkar on Foxstone ground in the Kakoda Premier League. Another lawful toss towards the extra cover. What a strike. Ball goes a drop away from the boundary rope. Boundary taking the total furthermore to 18. So Deep being very expensive. 10 runs from the first 2 deliveries. Maybe the left-handed batsman that is making Deep Kirkar a bit nervous, but he is not among the one who is going to give all of the free buys in these 6 deliveries. So let's see what Deep Kirkar is about to do. Jersey number 13 on his back. So far 10 runs have given in this over. And Deep Kirkar strikes. This is what I was talking about. 2 boundaries and a quick delivery that deceived RJ.
So let's see who is going to be the incoming batsman. Requesting the batters to kindly be prepared and double up. Only 20 minutes. If the batting team delays, then there might be a penalty for the batting team as well. Total 11 matches to be played for today. So new man in is Sunil at the striker's end. Good strike, chance of a catch. Is it going to be held? Fielder running. Oh my dear, just misses the bounce as ball about to travel the distance. Fielder from Kakoda fields the ball. A single. Score moves to 19. So now Aniket on the striking end. Deep Kerkar looking confident after being a dispatch for a 6 and a boundary. Takes a wicket and a single. So total 11 from this over, but a crucial wicket. Another, it looked to be a ball has taken the outer edge of the bat. There was a bit of sound to be heard. Good pace generated by Diptesh Kerkar. This is the final delivery of the second over. More 3 overs to be bowled. Let's see what is going to happen on this final delivery. Good strike. There's a fielder has been plotted. And the catch has been taken. Second wicket for Diptesh Kerkar and a third wicket for the team. So final delivery, Diptesh strikes after completion of 2 overs. Score is 19 for the loss of 3 wickets. (19) on the board. Sunil on the striking end. Prasanna the bowler. First delivery low full toss has been struck towards the mid-off region. Ball travels safely towards the fielder at the long on area and a single. That brings the captain on the striking end. Tall guy. Good all-rounder. Right on the striking end. Meanwhile, Yorker equally well played. Plays the ball towards the cow corner region to take a single. Look at the bat speed and the power that Sunil generates. Within a couple of seconds, the ball reached at the boundary rope. Capable batsman at the moment. Now left-handed batsman on the striker's end. Another good delivery. There's a chance of catch. Is it going to be held? Fielder under the ball. Oh my dear, could not reach till the ball bounces right in front. A boundary takes the team total to 25, I beg your pardon. Strong strike from Sunil. So now Prasanna on to his run-up mark. Low full toss. Ball takes a leading edge travel towards the short-term region. Fielder is quick. Gets the ball quite comfortably. Meanwhile, a single. That single takes the team total to 26.
More 12 runs required. Can Sunil finish off the match in this over itself? A challenge in front of Sunil, although he has lot of time. Let's see whether he can hit. Low full toss, there was a chance. Plays cautiously guides the ball towards the mid-wicket region to take a single to bring his partner on the striking end. Sunil looks to be in a hurry. Sunil taking ample of time as more 2 overs to be bowled after this over. Person with the ball at the run-up mark. Another strong strike towards the longer region. Both the batsmen are running very hard. Sunil wanted a second, denied at the very last moment as an element of risk involved. Meanwhile, a single that concludes over number 3. So after completion of 3 overs, score is 28 for the loss of 3 wickets. Sanjil to deliver. Meanwhile, a big swing and a miss. Spacey delivery straight into the hands of keeper Captain Rajat, doing the job as a wicket keeper. Meanwhile, requesting the captain of Voldemort to kindly be ready, be prepared with your stats and be prepared to come on the ground as you have won the toss and have decided to field first. Even the openers of Shana Builders to be ready. Secondly, President, look at the pace that has been generated by Sanjil, going as an electric bullet train straight into the hands of keeper. No chance for the batsman even to take it even at the outer edge of the bat. Meanwhile, there's a connection, chance of a catch, fielder under the ball, and the catch has been taken. Sanjil strikes in the 4th over. Score is 28. Thank you, DJ. New man is Uddhav Karmali. Score is at 28. 4th over in progress. If Sanjil delivers something out of the box, then definitely the team will be in the hunt. So lot depends on this over. So far, all the deliveries have gone as a dot deliveries. Chandresh Desai helping his captain to set the field. Sanjil looking very confident. Many things depend on this over. Another basic on to the back foot. Guides the ball towards the mid-wicket region. Good fielding, slight fumble. Twists the call. Good throw, but at the non-strikers end. That makes Uddhav to survive. Comfortable couple of runs. Takes the team total to 30, I beg your pardon. 8 runs required from 8 deliveries. Meanwhile, another strike straight down the ground towards the long off region. Sunil, the captain, running very fast, very quick onto his feet in a hunt of a second. Good fielding from the fielder at the long off region. A single that takes team total to 31. Exactly, run a ball is the requirement at the moment. Final delivery of the 4th over. Sanjil to Sunil. On to his legs, running a cheeky run to take the strike in the final over. Single in form of leg bye. That concludes over number 4. Beautiful over to be seen without a boundary.
Lovely over to keep his team into the action. Score moves to 32. Final over, 6 runs required. So now another magical player. Divesh has been given the responsibility to bowl the final over. 6 runs required from 6 deliveries. Let's see what this magical person can do. Sunil playing very cautiously, not giving away his wicket. 6 runs from 6 deliveries. Wanted to cut the ball, there's appeal. Meanwhile, stretch of arms by the umpire saying that this is an extra illegal delivery. A run to be added to the total as a punishment. 6 deliveries, 5 runs required. Again wanted to hit the ball. Meanwhile, a dot delivery ball keeping little low and equally well kept by Rajat Sawant behind the stumps. So now again the equation, run a ball. 5 deliveries, 5 runs to get. And we have witnessed a lot many such matches where every result was possible. Meanwhile, Divesh gaining self-confidence to deliver the next. Meanwhile, there's a chance of catch. Is it going to be a wicket? Is it going to be a wicket? The expression of captain shows, and this is what I was talking about. Magical guy delivers in the final over, showing his magic, taking the wicket off Sunil Sawant, the captain. Now, a bit of drama, and 33 magical figure has taken the wicket on a Foxstone ground. Chandrishkar Desai will have a smile, giving the send-off to the captain with his own celebration. 33 on the card. Sunil Sawant, the tall guy captain, walks back to the pavilion. Wanted to play cautiously in the bargain. Hits the ball up in the air, giving a chance, and the catch has been taken. Divesh strikes. Now let's see who is going to be the incoming batsman to take this pressure on his shoulder. Tejas Sail, another orthodox player. He can be a game changer as well. 5 runs required from 4 deliveries. A twisty situation. Prasanna is the player who has taken that catch. Here we go, Divesh with the next magical delivery. Another chance of catch. Rajat, oh my dear. 2 wickets in 2 deliveries. Tejas Soils comes in, gives the attendance, is present, and walks back out of the class, that is out of the ground. 33 strikes for the second time in this match. A low scoring match. Everybody thought that this match may get over as a quick within a blink of eye, but let me tell you, this is the Premier League and the beauty. Still, Divesh is on his duty, taking 2 wickets for his side and continuing the same tempo that has been set by Sanjil in the 4th over. 5 runs required from 3 legal deliveries to go. Let's see what is going to happen. Meanwhile, incoming batsman Vaibhav. Vaibhav has to be very, very shrewd at the moment at the striking end. A word of advice from his partner. Lot of responsibility and lot of pressure on his shoulder. Divesh looking very, very confident. Hat-trick ball. Is it going to be a hat-trick in this tournament?
whether Divesh can produce a hat-trick. Meanwhile, ball takes the leading edge, hits the batsman. Hope everything is fine. Physio is required in the middle. Hope everything is fine. Chandrishekar Desai definitely knows the pain. He has taken the same blow while playing a practice match. Hope everything is quiet. Everything is quite well for the batsman. Requesting the physio of teams kindly check the situation out in the middle. This is not going to be a good sign for the batting team. The ball takes the leading edge, hits onto the eyebrows. Definitely impact of the ball has generated lot of pain. Hope everything is fit and fine out in the middle. So players, even the officials are having a check. And looks to be the situation is in control. As we can see, the batsman is onto his feet, but he will be leaving the ground as he is not able to be fit. So let's see who is the batsman who is going to replace him. Meanwhile, 2 deliveries and 5 runs required. And this is the batsman retired out. But this wicket won't be for Divesh. It will go as a dot delivery. Meanwhile, still over hat-trick is remaining for Divesh. Still a run to be scored. Can Divesh deliver a maiden hat-trick in the much needed situation? The time will tell us. As Dhruv comes at the striking end, and Dhruv is also capable of hitting the ball right from the middle of the bat. As Divesh and Dhruv has played a number of matches against each other. Let's see whether can Dhruv connect, or is it going to be Divesh, the magical player, magical performer, dominating in the final over. Couple of deliveries remaining to get the result of this match. Divesh with the ball, Dhruv on the striking end. Second last delivery of the final over. Big swing and a miss. Still the over is a maiden final delivery, 5 runs. A boundary to tie the match, sixer to win the match, and a wicket or a dot ball will be a maiden over for Divesh. What a performer. Final delivery, Divesh. Let's see what he is going to deliver. Meanwhile, chance of a catch. Big guy under the ball. Takes the catch onto his palm, drops the dolly. Meanwhile, couple of runs. And going to be a run out. What a magical bowler. What a win for Captain Rajat and his team. Action boys into action, and what a perfect reaction to get the action and win the match. So let's see who is going to be the man of the match in this second match of the league. So requesting Sudesh Sawant kindly do the honors for man of the match. In the South Goa Premier League, it was a D for Diptesh Kerkar. And in this match, the person who has defended 6 runs in the final over, who has taken 2 wickets, Divesh, my friend, please come and receive your man of the match from the hands of the guest at the days. What a player, what a performance, magical player, delivering at the right moment.
has given only 2 runs, in fact 3 runs in that over, and taken 2 wickets. What a player the Kakoda Premier League has witnessed. Veteran player bringing his experience and showing his talent. Divesh, most valuable player of this match. Thank you, DJ. Next match is going to be played between Shanghai Builders versus Wadlamore Strikers, in which Wadlamore Strikers have won the toss and they have decided to field first. So, even 2 openers of Shanghai Strikers, 2 most experienced players from Kakoda area, Viraj and Tanmay. So, both the players are out in the middle with their respective velo. About to start the 3rd match of the inning, and looks to be Gaurish Naik, the bowler. So let's see what is going to happen in this match, as the further updates will be given by Sanket Gaonkar sir in Hindi. शुरुआत यहाँ पर बढ़िया, पहली गेंद हल्के से फ्लिक किया और खाता यहाँ पर खोलती हुई पहली गेंद पर। पिछली मैच बहुत ही बढ़िया रही, लो स्कोरिंग मैच, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन बॉलिंग का किया था बहुत ही बढ़िया, और उसी की बदौलत मैच जीतने में कामयाब हुई थी। एक बढ़िया रोमांचक मैच रही थी पिछली। फुल टॉस गेंद और चौका जाता हुआ एक बढ़िया कदमों का इस्तेमाल करके आगे आई थी और फुल टॉस बॉल यहाँ पर फुटली और एक शॉट लगाई और उसी की बदौलत चौका यहाँ पर मिलता हुआ, और इसे चौके को जोड़कर कुल स्कोर है 5 रन। अच्छी शुरुआत, दूसरी हुई गेंद और एक बाउंड्री यहाँ पर मिलती हुई। फिर एक बार आ गया ये थर्डमैन की छाया में, वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, केवल 1 ही रन इस बार मिलेगा और इस 1 रन को जोड़कर कुल हुआ है 6 रन। बॉलिंग मार्ग पर है गौरीश और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, और इस मुकाबले में पिछली गेंद जरूर फुल टॉस रही थी, लेकिन इस बार बढ़िया यहाँ पर वापसी गौरीश की, और ये यहाँ पर तोहफा, और इस तोहफे को कबूल करते हुए गेंद को पहुंचा दिया सीधी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार अच्छी वापसी, पिछली गेंद पर जरूर छक्का लगाया था तन्मय, गौरीश ने एक तोहफा दिया और उसे दोनों हाथों से तोहफे को कबूल करके गेंद को पहुंचा दिया था सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए, और उसी के बदौलत कुल स्कोर है 12 रन।
बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन, दूसरे रन की कोशिश, अगर दूसरा रन यहाँ पर लेते तो जरूर महंगा पड़ सकता था। स्कोर यहाँ पर आ चुका है और रिस्क लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं। और इसी के साथ पहले ओवर के समाप्ति के बाद 13 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। सुदीन अगली ओवर लेकर दूसरी ओवर की शुरुआत करेंगे। इस बार अच्छी गेंद नीचे रही थी, थोड़ी सी डीप हो रही थी, लेकिन इतना अच्छा संपर्क और एक रन को जोड़कर 14 हुआ स्कोर। दूसरी ओवर प्रगति पर पहली ओवर जो है काफी मिश्रित रही, एक चौका और एक छक्का जरूर आया था, लेकिन बाकी गेंदें बढ़िया रही थी। सफल हुए थोड़े से वहां पर खेलिया शॉट, फील्डर पिच मौजूद। अच्छी सूझबूझ भरी यहाँ पर क्रिकेट चलती हुई, क्योंकि पिछले मैच में देखा था कि हड़बड़ाहट में जल्दी अपनी विकेट खोने की वजह से एक बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाई थी टीम। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन एक रन यहाँ पर मिलेगा। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि फील्ड करता एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट। और सुदीन को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर, और अब तक बढ़िया बॉलिंग हुई है। अब तक बाउंड्री यहाँ पर नहीं मिली है, रोक लगा कर रखी है। और ये सफल होकर शॉट उतनी हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन गैप में और प्रयास बढ़िया किया था। ये रोकनी चाहिए थी, पहुंच चुके थे लगभग, लेकिन बॉल डीप होकर सिर के ऊपर से गई और इसी की बदौलत एक और चौका यहां पर जुड़ता हुआ टीम के टोटल में। और सुदीन बॉलर जो बॉलिंग में है, आज जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आज के दिन फुलटॉस गेंद, लेकिन वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, और इसी हड़बड़ाहट पे 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे। नो बॉल का इशारा आता हुआ, तो ये तोहफा यहाँ पर आज हालांकि बर्थडे है, लेकिन बैट्समैन को ये तोहफा दिया था, तो इस तोहफे का कितना यहाँ पर मौका जो है मौके का फायदा उठाते हुए देखेंगे बल्लेबाज। और यहाँ पर तोहफा कबूल करते हुए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। और एक नो बॉल यहाँ पर आज जन्मदिन, लेकिन तोहफे आज कबूल करने की बदौलत दे रहे हैं दो बॉल यहाँ पर। और पिछली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शॉट, संपर्क 6 रनों के लिए गई। और इस बार देखेंगे अभी भी फ्री हिट मौजूद जारी, देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का अप्रोच, किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर रहती है। और फिर एक बार अच्छा संपर्क, ये ओवर काफी लंबी जा रही है। और एक छक्का यहां पर लगता हुआ 36 पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर हालांकि अच्छी रही थी, लेकिन दूसरी ओवर की शुरुआत काफी बढ़िया, लेकिन जो नो बॉल और उन 9 बॉलों के बहुत ही यहां पर फायदे मिले और 2 छक्के लग चुके हैं इन 2 नो बॉल में। 36 पर पहुंचा स्कोर, दूसरी ओवर है प्रगति पर।
और फिर एक बार फुल टॉस गेंद और इस बार फील्डर पीछे मौजूद, केवल एक ही रन से यहाँ पर होगा संतुष्ट। और इसी के साथ ये महंगी ओवर समाप्त होती हुई 37 लगी है बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। सूरज है तीसरा बॉलर और ये यहाँ पर क्लीन बोल्ड, जो बहुत ही बढ़िया पारी, अच्छी पारी हुई थी, उस पारी को अंत लगाया इस बार सूरज ने। बबलू अगला बल्लेबाज उतरा है मैदान पर और 2 ओवर में काफी धुआंधार बल्लेबाजी रही थी, लेकिन तीसरी ओवर की पहली बॉल पर कोई है पहली विकेट। इस बार यहाँ पर लगता है कि दिशा से भटके जरूर, एम्पायर का इशारा आता हुआ बाई और वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन और गेंद भी गई है पीछे। तो पहली गेंद बहुत ही बढ़िया रही थी, लेकिन दिशा से भटकती हुई पिछली गेंद पर वाइड चौका मिला था। इस बार फिर एक बार वाइड जाती हुई और पहली गेंद जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर की थी, उस शुरुआत के बाद ये 2 खराब गेंदें। इस बार फिर एक बार बढ़िया यहाँ पर वापसी, थोड़ी सी दिशा से भटकी थी, लेकिन इस बार यहाँ पर अच्छी वापसी और 43 तीसरी ओवर में प्रगति पर एक बढ़िया लक्ष्य, बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम। हालांकि एक विकेट जरूर गिरी है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत यहां पर मिली बहुत ही बढ़िया। इस बार फ्लिक किया गेंद को, फाइनल की दिशा में जाती हुई 1 रन यहां पर कंप्लीट किया, दूसरे रन की यहां पर कोशिश और दूसरा रन भी आसानी से यहां पर किया है कंप्लीट। स्विच बड़ी क्रिकेट, तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बन चुका है, 45 पर पहुंचे। देखेंगे कि उसके बाद इस बार यहां पर डिफेंस खेलने की चेक कर रहे थे अपने शॉट को और उसी की बदौलत दूसरा झटका लगता हुआ वापस भेजा बबलू को। अनाउन्समेंट आसा त्या सगळ्या कॅप्टनान नोंद घेवची। लंच ब्रेक आसतना मॅचीस जे आसा त्यो कंटिन्यू आसतल्यो, सगळे प्लेयरांनी आनी कॅप्टनान नोंद घेवची। सो कॅप्टनान आपली टीम जी आसा ती रेडी दवरची, जशी जशी तुमची मॅच आसतली मॅची खेळत वतल्यो। इस बार नो बैट्समैन आए हैं संकेत और पहली गेंद पर स्ट्राइक करके एक रन यहाँ पर किया है कंप्लीट और स्ट्राइक भी अपने पार्टनर को।
तो ये ओवर काफी बढ़िया रही, सूरज की 2 विकेट अब तक लेने में कामयाबी मिली है सूरज को। तो स्कोर जिस तरह का प्रदर्शन है, जिस तरह की बल्लेबाजी 2 ओवर में हुई थी, इसके बाद ये तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। इस बार फिलिपा एक बार यॉर्कर लेन गेंद, कोई मौका नहीं बड़ा हिट खेलने का, लेकिन हल्के हाथों से खेला, पुश किया था गेंद को और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन किए हैं अर्जित। ऐसा 2 रन को जोड़कर कुल स्कोर हुआ है 48 और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल नंबर समाप्त, 48 लगी है बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। चौथी ओवर लेकर वेदांत, सूरज की पिछली ओवर बढ़िया रही थी, जो एक बड़ा टोटल, बढ़िया गेंद, पैरों पड़ती गेंद, इसका लेग दिशा में गई गेंद और 1 रन यहाँ पर मिला है। ये फुटस गेंद, हवा में गेंद, फील्डर से काफी दूर गैप में गई और देखते हैं कि जी हाँ, जो गैप वहां पर था उसी गैप में गेंद को भेजती और चौका अर्जित किया। इस चौके को छोड़कर 52 हुआ है कुल स्कोर, सॉरी 53। ओपनर बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया अब तक बल्लेबाजी रही है, एक छोर यहां पर संभाल के रखा है और इस बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी नीचे रही गेंद, आई नहीं बल्ले पर जिस तरीके से चाहते थे और यहाँ पर वापसी पिछली गेंद फुल टॉस रही थी, उस गेंद को गैप में डालकर एक चौका यहाँ पर अर्जित किया था, लेकिन ये गेंद बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ थोड़ी सी नीचे रही गेंद। इस बार कट करना चाहते हैं, अपील जरूरी और लगता है एज लगी और वापस जाना होगा। तन्मय एक बढ़िया पारी, एक बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेल रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी उछली गेंद और उसी की बदौलत तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर और स्कोर हुआ है 53 के स्कोर पर लगा है तीसरा झटका। नेक्स्ट मैच जाती थी पैंटॉक स्ट्राइकर्स वर्सेस साई 11, दोन्ही टीमीने रेडी राहायचे। नेक्स्ट मॅच जी आसा ती पैंटॉक स्ट्रायकर्स आणि साई 11 दोन्ही टीमीचे कॅप्टन आणि प्लेयर्सांनी रेडी राहायचे। नेक्स्ट मॅच जी आसा त्यांची जातली आणि दोन्ही कॅप्टनांना मागता की कॉमेंट्री बॉक्स कडे दोन्ही टॉसा खातीर येवचे। तो नेक्स्ट मॅच जी आसा I request both the captain kindly come to the toss near commentary box. नया बैट्समैन उतरा है मैदान पर मूर और पहली ही गेंद पर यहाँ पर ली है एक रन और स्ट्राइक भी अपने पार्टनर को। इस बार सफल हुए थे फाइल लेग दिशा में वहां पर गई गेंद, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद था, एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और हेलो और इसी के साथ 4 ओवर का यहां पर खेल समाप्त। 3 विकेट यहां पर गिरे और 55 लगा है बोर्ड पर आखिरी ओवर। और देखेंगे इस आखिरी ओवर में कहां तक पहुंचता है टीम का टोटल। हालांकि एक बहुत ही बढ़िया टीम की ओर यहां पर स्कोर की ओर बढ़ती हुई टीम
शिवम पर जिम्मेदार है इस आखिरी ओवर की 55। ठीक है। और यहाँ पर पहली गेंद पर स्ट्राइक करते हुए शिवम को मिली है पहली सफलता। संकेत आउट कर वापस कुछ खास नहीं कर सके। एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश आखिरी ओवर, और इस आखिरी ओवर में दरकार थी एक बड़ी हिट की, और उसी कोशिश में अपना विकेट यहाँ पर खो दी, और चौथा झटका लगा 55 के स्कोर पर। गंधार नया बल्लेबाज उतरा है मैदान पर, और ये बहुत ही बढ़िया संपर्क गैप में गई है फील्डर बॉल के नीचे। प्रयास हालांकि बढ़िया किए थे, वन बाउंस एंड बाउंड्री के बाहर, और 4 रनों के लिए तो एक बड़ा यहाँ पर शॉट, और गंधार अभी उतरे हैं मैदान पर। ठीक, हेलो गंदर गंदर GANDHAR इस बार दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा आता हुआ बाहर ही खुले अंपायर ने, और एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल में, और इसी के साथ इस रन को जोड़कर कुल स्कोर वह 64 विकेटों के नुकसान के बाद एक बड़ा स्कोर, एक बढ़िया टोटल के और अग्रसर होती हुई टीम। इस बार एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश थोड़ी सी उछली, और यहाँ पर मिस हो गई, तो शॉर्ट बॉल थी, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर शॉट खेलना चाहते थे, अगर लगती तो जरूर चौका या छक्का मिलता, लेकिन संपर्क यहाँ पर हुआ नहीं, तो जितना यहाँ पर अपेक्षा थी उससे काफी ज्यादा उछली गेंद पड़कर। इस बार रिवर्स के लिए है, वहां पर फील्डर मौजूद, और आसान सा कैच यहाँ पर गंधार वापस जाते हुए। तो आखिरी कुछ गेंदें बाकी थी, और एक बड़ा हिट चौका अर्जित करना चाहते थे, लेकिन उसी कोशिश में यहाँ पर खवा बेटे अपना विकेट, और 60 के स्कोर पर लगा है 5वां झटका। तुषार नया बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। तुषार घटवर लंबे कद के खिलाड़ी, और ये शॉट अच्छा, फील्डर हालांकि मौजूद, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन से यहाँ पर होना पड़ेगा संतुष्ट। 61 पर पहुंचा, इसे एक रन का जोड़कर कुल स्कोर। ये शॉट अच्छा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग रन की दिशा में दूसरा रन यहाँ पर महंगा पड़ सकता है, और आसान सा यहाँ पर रन आउट, और एक रन इस आखिरी गेंद पर। उसी के साथ यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई 60 कुल स्कोर हुआ है 63 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और दूसरी इनिंग का यहाँ पर हाल सुनाने के लिए आपके सामने आ रहे अंग्रेजी कमेंटेटर सागर गोसावी सर। Thank you, Sanket. This is the 4th match of the day. 63 is the target that has been set in front of Wadlamar Strikers by Shania Builders. That was a beautiful start provided by 2.
with the help of two veteran players, rather than saying them veteran, I would say most experienced players, Viraj and Tanmay, has provided a very, very good start. Requesting all the captains, please decide your things and come for the toss. So captain of Pintock Strikers have won the toss and he has decided to bowl first. So now we are going to witness the run chase. Target is of 63 runs. So let's see how the team that has been led by Suraj Parab is going to answer to this target that have been sent in front of him. About to start the second innings. Till then, it's time for DJ to play some wonderful tracks. Thank you, DJ. Requesting the batting team kindly double up as the time is only of 20 minutes. Even if the batting team delays, then the penalty will be put on the team that is delaying the start of the match. 63 runs, sir, is the target. Total 30 legal deliveries to be bowled by the bowling team. And if you look at the tennis ball cricket language, then just 10 sixes away. 30 deliveries and 10 sixes is the requirement. But there should be one of the batsmen, courageous batsman, to hit those 10 sixes. Let's see whether it is going to be Suraj Parab or Kalpesh Naik. Both the players have played many matches on this very ground. And the little pocket dynamite. Kalpesh was out of the station for a couple of months, has come back all the way, traveling 600 kilometers back to play in the Goa in this Kakoda Premier League. Have seen his magic on this ground in the recent past tournament. So let's see what he can do, whether he can showcase his talent here. Kalpesh, alias Nicholas Puran, that is the nickname for him, as he plays with the similar type of strategy, similar type of batting action, similar type of attack. And now against him is Viraj Kakoda, another talented bowler. During his time, he used to identify the weaknesses of a batsman and deliver in those spots. Let's see whether he can continue with the similar type of bowling. Here we go with the umpire signal. As the left-handed batsman is on the strike, Viraj decides to come right arm round the stumps. Full toss delivery, lovely strike, over the cover. Sandeep Kuldikar, tallest guy, could not stop the ball. And that's a wonderful strike. Meanwhile, stretch of right arm by the square leg umpire signaling that this is a no ball. So total 5 runs on the card and still a legal delivery is yet to be bowled. Switch hit is the attempt on the free hit delivery. That was the free hit, as the first delivery was called as a no ball. So Kalpesh could not take the optimum advantage of this free hit delivery. A switch hit was the attempt, no connection, makes the ball to travel safely to the keeper. So first illegal delivery and 5 runs on the board. Again a switch hit is the attempt, resulting, oh my dear, that's a dismissal. Viraj strikes on the second illegal delivery. Timber has been shaken.
Bails out of their position. Clean ball. Kalpesh marching back to the pavilion. DJ. पहली नजर में लगती परी वो अन्नत में सुनामी और सामने जो खड़ी वो दिल में वो दौड़ती दिमाग में वो कार्डियो चुपचाप मैं सुनता जब भी समझा रही वो और सपने के पीछे शिरों फाड़ी ब्रो इसरो की तरह चाहे ड्रेस हो या साड़ी हो ट्रिप करने लगा मशरूम दिखते Thank you, DJ. New man is Gaurish at the striker's end. Viraj with the ball, thinking what to deliver as a right-handed batsman is on the striking end. Viraj immediately decides to come right arm over the stumps. Gaurish slightly shuffling outside the off stump, strikes the ball towards the cover point region, takes a quick single and brings the captain on the striking end. With the single score, moves to 6 for the loss of 1 wicket. Target is of 63 runs. Almost 12.5 runs is the runs that are required per over. That's the run rate, asking run rate. And so far in the power play over, is the just half of the asking run rate. Arrival of Suraj Parab and a ball departed out of the boundary line. Couple of bounces to cross. Suraj Parab opens his account with a confident looking cut shot over the cover point region. Boundary takes the team total to 10. So Viraj, a courageous guy to bowl the power play over where only 2 fielders have been put outside the 30-yard circle. Experience is counting on. Meanwhile, a strong strike. Even the second tallest guy won't be able to stop as the ball lands on the board between the 2 pendles. Such is the power of Suraj Parab, and now they are on to the track after the required run rate. Lovely strike. On to the back foot, cuts the ball. Ball is towards the third man region. Meanwhile, Gaurish says, yes, let's run. Take a run. And let the captain keep the strike in the second over. So after completion of first over, score is 17. What a decent over for the batting team for the loss of 1 wicket. TJ. दोस्त बोले विव भाई संभालियो मुझे तू जाना था एक नंबर काम का अच्छे से मैं रन करता अब भी नहीं हाफता हाँ तेरा झापना और टीम में मेरे सपना तू बाहर बैठ के झांकता मैं गेम लेके लापता अब मेरी खास मेरे पास मेरी छाती वो सात समंदर करे पार अगर साथ दी वो सब कुछ है असली और जानती वो बाकी सब है शोर बस एक वो है शांति ब्रो Thank you, DJ. Now, the second over to be bowled by Gandhar. He is also a very promising upcoming talent from Kulcharam Municipality area. He is one of the finest bowler playing for Kulcharam Municipality team. Now, Suraj is on the striking end. First delivery, Yorker delivery, well played. Guides the ball towards the wide edge. Long on region to take a single, and that brings Gaurish on the striking end. So far, the batting team is much ahead of the required run rate. 18 on the board. Second over in progress. Gandhar to Gaurish. With a moderate run up. Gandhar right arm over the stumps to Gaurish. Both the players are of similar stature. The build up is same. Of a similar height. Let's see who hides the performance wise in this contest.
Plays watchfully, hits the ball towards the cover, slight fumble, and they are running for the second. Mayur could not stop the ball and has given one more run in form of extra. That is a misfielding chance. Gaurish takes couple of runs, team total moves to 20. More 43 runs required and 3 overs to be bowled after this over. Switch hit, what a connection! Oh my dear, can't believe my eyes. I've never seen Gaurish doing that. But this is a big platform and want to perform. A couple of bounce. That a second ball out of the boundary rope, but unexpected strike. That too on the bowling of Gandhar. Can't believe my eyes. This shows the confidence of the batsman. Boundary takes the total to 24. Everyone is surprised as Gaurish timed the switch hit to the perfection. Such is the confidence. As you play the big stage, automatic, the confidence boosts and a lovely strike from the bat of Gaurish. So Gandhar now thinking what to place the field setup for Gaurish as a surprising switch hit that was kept away from the spectators has been hit. Meanwhile, what a strike! Oh my dear! Ball has been landed out of the boundary line, straight on the top of the pendle. What a strike, what a player. Both the bowlers are being very, very expensive. Second over in progress and look at the run chase. 30 on the board. Going at the strong run rate of 15 runs per over. 13 on the board. DJ, a quite work for you. बुबले गेला अडपा रा तोडे नका होतो बॉल उडे नका इला होतो बॉल के What a wonderful strike from the destroyer at the moment. Gaurish leading this race with a 6 and a boundary in this contest. Gaurish very, very strong, high on confidence. Let's see what he does in the incoming delivery. Again shuffling outside the off stump, strikes the ball, chance of catch. Fielder running, ball drops in front of him and travels the distance, a bounce. Meanwhile, no ball is the signal and now we can know what Gandhar is going through. Taking lot of pressure on his head. Trying to generate pace, delivers a full toss, which is an illegal delivery. Free hit for Gaurish and a team total moves to 35. Another full toss. Oh my dear, what a hit! Maximum of firework to be seen in the second over. A youngster, upcoming talent has been taken for a troll as if Gaurish was on the pitch for quite a long time, striking the ball right from the middle of the bat. A sixer takes the team total to 41. Another hit, cut shot, ball travelling towards the third man fielder, fielded this time, just a single. With that single score moves to 42. Everybody was keen to watch Suraj Parab doing the firework, but this is a surprise package as Gaurish has taken all the responsibility, sent the missiles from on and off the field, out of the park, and what hitting that we have seen from the bat of Gaurish. Team total moves to 42. 42 for the loss of 1 wicket. So now new bowler Mayur Sawant, nicknamed Malinga, and he is having a confident batsman at the striker's head. Tall guy versus a short pocket dynamite. Oh my dear, can't describe this particular strike as waiting, watching the ball till the very last moment. Ball was pitched up the
pitch. Wanted to hit the ball towards the square leg. Finally ended up landing on the surface. But eyes on the ball. No connection. Leaves the ball to travel safely to the keeper. Dot ball to start with. Third over in progress. More 2 overs to be bowled after this over. Vodlamol strikers striking at a lovely striking rate. Every batsman 400 plus is the strike rate. Big swing and a miss. So finally some decent deliveries to be seen courtesy Mul Savant alias Malinga. 2 deliveries that have been bowled are dot deliveries. Another switch hit, no connection. Consecutive 3 dot balls, hat-trick of dot deliveries in this inning. Still 21 runs more required. Another 2 overs to be bowled, and Malinga now taking all the job in his hand. Has delivered 3 dot deliveries. Gaurish on the striking end. Low full toss. There's a lot of power behind that strike. Ball goes over the cow corner region as the 2 fielders watching the ball sailing past. That's a big 6. Score moves to 48. More 15 runs required. Gaurish doing the collateral damage. Leaves the ball to travel safely to the keeper as he has sensed it will be called as a wide delivery, and he has guessed it right. Wide takes the team total to 49. .49 on the board. Third over in progress. Gaurish playing at the individual score of 30 runs. Another hit, what a hit! Onto the pendle, no doubt about it. Only we can see the ball on the pendle. And a little work for the organizers to get that ball from the pendle roof. Meanwhile, that sixer takes the team total to 55. And with that, Gaurish moves to 36. बॉल मारा नोडे तो अरे अंजान मारे तो बॉल कुठे रे बिते बॉल आजे Another full toss. Result is going to be the same. What a player we are going to witness. Gaurish was hiding somewhere out from the Foxstone ground and maybe have practiced for very long time. Consecutive 6s from the bat of Gaurish. Team total moves to 61. And Gaurish has moved to 42. What a player. What a new form of Gaurish Naik we have witnessed. Thank you, DJ. So next over will be bowled by long guy Tushar Gatwar and Suraj Parab on the striking end. Again, slow shuffling slightly outside the off stump. Meanwhile, the ball has been delivered towards the leg side. Wide is the immediate signal. Just a run required. Meanwhile, a big strong swing, ball kept little lower onto the thigh muscles of Suraj Parab. Consecutive dot balls that have been witnessed here.
Meanwhile, a proud parent going by his two-wheeler. Nice to see such cricket lovers coming in numbers to watch this Kakoda Premier League. Another swing and a miss. Wide is the signal, and that concludes match in the favor of batting team. It's all over. Congratulations. Congratulations, Wadlamall strikers. You have chased a big total. Courtesy wonderful batting from Gaurish Naik along with his captain. Thank you, DJ. Requesting team coordinator and the tournament coordinator Shamesh alias Bablu Sawant to kindly report at the committee box as we have to give away man of the match trophy. And please help us with the name of the guest who is going to honor the most valuable player of this match. Shamesh alias Bablu Sawant, kindly invite the guest. So next match is going to be played between Pinetock Strikers and Sai 11. Pinetock Strikers have won the toss and they will be bowling first. For the further updates, over to Sanket Sargaonkar. अगली मैच साई 11 वर्सेस पैंटॉक स्ट्राइकर के बीच और पैंटॉक स्ट्राइकर ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय और साई 11 यहाँ पर बैटिंग मार्ग पर तो बल्लेबाज तैयार। पहली गेंद पर यहाँ पर लगता हुआ झटका और संजय यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए पहली गेंद थी और से पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर मिलती है और काफी बढ़िया शुरुआत इस मैच की। पहली गेंद पर जब विकेट मिलती है तो बैटिंग टीम का मनोबल जो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो बढ़िया शुरुआत इस इनिंग की। सो मीनवाइल लेट्स do the honors, requesting Shri Ramesh Sawant to kindly do the honors. Man of the match without any doubt. 13 balls, 42 runs. What an inning. A small cameo played by Gaurish Naik. Gaurish Naik of Wadlamall Strikers. 5 sixes and 2 fours.
Man of the match, kindly come and collect your man of the match trophy from the hands of Sri Ramesh Sawant. Gaurish, please come and accept your man of the match. Even requesting the incoming batsman to kindly double up as only 20 minutes per inning. Otherwise, the team officials will have to impose the penalties for those who are delaying the progress of the match. Over to Sanket Gaonkar. दूसरी गेंद इस बार यहाँ पर अपने खाता खोला थ्रो यहाँ पर अतिरिक्त रन मिल सकता है, लेकिन संजय की यहाँ पर तारीफ करनी होगी पहली गेंद पर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। तो साई शायद थे उतरे थे मैदान पर एक बड़ा टोटल बड़े लक्ष्य की और चलने के, लेकिन संजय की पहली गेंद पर आउट होकर गए वापस और नया बैट्समैन आया है उद्धव, जो अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हो गया क्योंकि पहली गेंद पर सिंगल यहाँ पर लेकर शायद अपने पार्टनर साइश को। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस बार बढ़िया यहाँ पर लाइन ऑन लाइन के साथ लगभग यॉर्कर गेंद थी और कोई मौका नहीं। पहली गेंद यहाँ पर फेस करे साहिल और साइश और पहली गेंद संजय की सटीक लाइन ऑन लाइन के साथ यॉर्कर लेंथ गेंद। इस बार गति में मिश्रण पढ़ नहीं पाए और एक डॉट गेंद। तो बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग का मुजाहरा संजय का होनहार टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया नाम कमाया है इस क्रिकेट जगत में और अपना काम बखूबी निभाते हुए इस मैच में। इस बार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट और ये शॉट जो है जाएगी पूरी देकर अच्छे रन। ऐसा ओवर में अब तक बढ़िया रही थी, लेकिन इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद और ऐसे का फायदा उठाकर साइश ने जड़ दिया है पहला छक्का और इस छक्के की बदौलत 7 पर पहुंचे स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार शॉट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन इस बार दिशा से बढ़ के ऑफ टाइम से दूर हो जाती है गेंद। बाही खुले अंपायर और वाइड का इशारा तो पहला अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और इस 1 रन को जोड़कर कुल स्कोर हुआ है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार यहां पर सीधी जाती हुई फील्डर की गोदी में और दूसरा झटका लगता हुआ इस बार और साइश आउट होकर वापस दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को यहां पर वापस भेजा है संजय ने। नए बल्लेबाज उतरे हैं सुनील, कप्तान खुद उतरे हैं मैदान पर और पिछली मैच जो रही थी हालांकि लो स्कोरिंग मैच थी, लेकिन उस मैच को जीत नहीं पाए थे। इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद अपील जरूर की है, लेकिन नकारा यहाँ पर लेग बाय का इशारा आता हुआ। तो पिछली मैच 14 गेंद थी और 12 रन चाहिए थे, लेकिन वहां से मैच जिस तरीके से बॉलिंग ने बॉलर ने अपनी ओर खींची तो उस मैच की जो बल्लेबाज सॉरी गेंदबाज थे उनकी तारीफ यहाँ पर जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि आसान सा स्कोर था लेकिन रोका। यहाँ पर फील्डर बॉल के पीछे प्रयास हालांकि बहुत ही बढ़िया किया था, लंबी दौड़ लगाई थी, हाथ में लगभग आ चुकी थी गेंद लेकिन आइन वक्त पर छिटकी और यहाँ पर तीसरा झटका लग सकता था। तो पहला ओवर जो रहा था संजय का काफी बढ़िया, 2 विकेट यहाँ पर लेने में कामयाबी मिली थी। शॉट ऑफ लाइन गेंद लेकिन
गति में यहाँ पर मिश्रण, इसी की बदौलत शॉट खेलने में नाकामयाबी, बाई का इशारा था हुआ, तो एक मौका यहाँ पर था। बबन दूसरी ओवर यहाँ पर बढ़िया अब तक प्रदर्शन रहा, बहुत ही बढ़िया गेंदें अब तक की है। इस बार हालांकि शॉट खेलते खेलते गिरे, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और दूसरा रन यहाँ पर महंगा पड़ सकता है, लेकिन आसानी से बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। कप्तान यहाँ पर सुनील अपने टीम को आगे यहाँ पर ले जा रहे हैं और 13 पर पहुंचा है दूसरी ओवर प्रगति पर। फिर एक बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद वहां पर फील्डर बॉल के नीचे, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही लंबी दौड़ लगाई थी फील्डर ने, लेकिन आइन वक्त पर लपकी और उसी के बदौलत यहाँ पर कप्तान आउट होकर वापस जाते हुए 13 रन के स्कोर पर लगा है तीसरा झटका। बढ़िया जड़नी हुई डाली हुई गेंद, लेकिन उतना अच्छा शॉट खाता खोला अनिकेत ने। पहली गेंद यहाँ पर खेली हुई थी और बबन की ये सफल हुआ और 14 लगी है बोर्ड पर 2 ओवर के नुकसान के बाद, 3 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरी ओवर की यहाँ पर जिम्मेदारी दी है आदित्य को, और थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया। वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अब तक बढ़िया यहाँ पर काम किया है, 3 बल्लेबाजों को वापस यहाँ पर भेजने में कामयाबी मिली है और उसी की बदौलत स्कोर बोर्ड जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बार हवा में काफी देर रही गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर प्रयास हालांकि यहाँ पर चल रहा है, बड़े शॉट लगाए जाए, चौके छक्के अर्जित की जाए, लेकिन सटीक लाइन और लेन के साथ जो गेंदबाज अब तक इस्तेमाल किए हैं बहुत बढ़िया लाइन और लेन के साथ किए रहे बॉलिंग। इस बार बहुत ही बढ़िया गति के साथ सीधे जाती हुई कीपर के दस्तानों में जो बॉलर यहाँ पर संजय, उसके बाद बबन और तीसरा ओवर लेकर आदित्य बहुत ही बखूबी काम करते हुए निभाते हुए अपने टीम पेंटॉक स्ट्राइकर्स के लिए। इस बार हालांकि हवा में गेंद और चौथा विकेट का यहाँ पर पतन होते हुए, यहाँ पर आसान सा कैचिंग प्रैक्टिस जैसे यहाँ पर मानो कि हाथ में सीधी गेंद और लगता हुआ चौथा झटका।
मुन्ना अगला बैट्समैन और पहली ही गेंद पर हवा में और एक विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ लगता है। यहाँ पर बल्लेबाज आ रहे हैं जा रहे हैं बिना स्कोरर को यहाँ पर डिस्टर्ब किए। 5वां झटका लगता हुआ 16 के स्कोर पर। आदित्य 2 गेंद में लिए है 2 विकेट। क्या तीसरा विकेट लेकर यहां पर हैट्रिक अर्जित कर सकते हैं? इंतजार रहेगा। अगला बैट्समैन तेजस हैट्रिक की यहां पर चांस था, लेकिन ये डॉट गेंद आखिरी गेंद और सफल ओवर यहां पर समाप्त होते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त। 16 लगे हैं बोर्ड पर 5 विकेटों के नुकसान के बाद। अगले मैच लोकमान वॉरियर्स वर्सेस वॉल्डमोर स्ट्राइकर्स के बीच टॉस हो रही है। गणेश की यहां पर पहली गेंद और एक बैट्समैन को यहां पर भेजते हुए वापस 6ठा झटका लगता हुआ। केवल 16 रन लगे हैं बोर्ड पर और आधे से ज्यादा यहां पर टीम वापस भेजने में कामयाब मिली है टेम्पक स्ट्राइकर्स को। लोकमान जिंकलाय आणि बॉलिंग वर आहे हे जे काली मारे ऍक्शन बॉयज आणि शनाई बिल्डर्स थैंक यू डीजी। अगला मैच वॉल्डमोर वॉरियर्स वर्सेस लोकमान्य के बीच और लोकमान्य टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का यहाँ पर निर्णय लिया है अगले मैच, लेकिन इस मैच में बॉलर का यहाँ पर दबदबा रहा है। 6 बैट्समैन अब तक भेजे हैं वापस। फिर एक बार हवा में गेंद और 7वां झटका यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कि सभी बैट्समैन आकर यहाँ पर कैच प्रैक्टिस जो है फील्डर को दे रहे हैं और 7वां झटका लगता हुआ गणेश की यहाँ पर दूसरी गेंद पर मिलती हुई दूसरी विकेट। यहाँ पर फिर एक बार मौका बना है गणेश के लिए। हैट्रिक क्या ले पाएंगे मनतेश नए बल्लेबाज और 2 विकेट 2 गेंदों में तीसरी यहाँ पर गेंद इस बार, लेकिन कई गेंद स्पेल की दिशा में 1 रन। हैट्रिक का मौका जरूर बना था लेकिन इस मौके को यहाँ पर नहीं बुन पाए और तीसरी गेंद पर मिला है 1 रन। इस 1 रन को जोड़कर 17 हुए हैं कुल स्कोर 7 विकेटों के नुकसान के बाद। शॉट ऑफ लेंथ गेंद फायदा नहीं उठा पाए। अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद खेली 2 फील्डर के बीच। लंगन और विकेट का खिलाड़ी जब तक ये फील्ड करता 1 रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट।
और इस एक रन को जोड़कर 18 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद यहाँ पर साई 11 का स्कोर। बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, डाल कोई मौका नहीं यहाँ पर। तो इस पूरे मैच में इन 5 ओवरों में सभी बॉलरों का दबदबा रहा है। एक भी मौका ऐसा नहीं मिला बैट्समैनों को कि बड़े शॉट लगाए जाए। और 5वां ओवर है प्रगति पर और कुछ ही गेंदें बाकी, केवल 18 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। इस बार संपर्क बढ़िया, देखते हैं कहां तक जाती है गेंद, फील्डर बॉल के नीचे और ये आसान कैच। 8वां झटका यहां पर लगता हुआ, कुछ भी साई 11 के हित में जाता नहीं हुआ। 8वां झटका यहां पर लगता हुआ 18 रनों के स्कोर पर। सार्थक यहाँ पर सार्थक के मिली है विकेट, सॉरी 5वां ओवर यहाँ पर लेकर सार्थक और नया बल्लेबाज ध्रुव। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। चार ओवर का खेल यहाँ पर समाप्ति के बाद 18 लगी है बोर्ड पर 5 ओवर प्रगति पर। इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की यहाँ पर कोशिश। पूरा मैच इस इनिंग को डोमिनेट किया है बॉलर ने, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने सभी गेंदें सटीक लाइन और लेन के साथ और 8 विकेट का पतन, केवल 18 रन लगे हैं बोर्ड पर 5 ओवर है प्रगति पर। इस बार फिर एक बार घुमाने की कोशिश, जहां पर सिर्फ कोशिश हो रही है और इस कोशिश को कामयाबी अब तक नहीं मिली है। फिर एक बार डॉट गेंद जाती हुई सीधे कीपर के दस्ताने में। संजय ने शुरुआत की थी आज बॉलिंग की, पहला ओवर और पहली गेंद से अब तक जिन जिन बॉलरों को का इस्तेमाल कप्तान ने किया है सभी जो है बढ़िया लाइन, बढ़िया गति के साथ बॉलिंग की है और 8 विकेट अब तक इस 5 ओवर में लेने में कामयाबी मिली है पेंटॉक स्ट्राइकर्स को। इस बार संपर्क अच्छा, लेकिन देखते हैं कहां तक जाती है गेंद और ये गेंद यहां पर जाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार फिर एक बार वार्निंग और 9वां विकेट का यहाँ पर पतन, 9 विकेट जैसा 5 ओवर के मैच में और इसी के साथ ये यहाँ पर इनिंग समाप्त होती हुई 24 लगे हैं बोर्ड पर और 25 रन यहाँ पर बना रहे होंगे। पेंटॉक स्ट्राइकर्स को एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन और 25 रन यहाँ पर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं सागर गोसावी सर, अगले कमेंट होंगे अंग्रेजी में।
Thank you, DJ. So requesting the batting team to kindly send your openers as quick as possible. Just 25 runs is the target from 30 deliveries. As you have got more spare deliveries compared to the runs that you have chased. So let's double up. It's already 2 o'clock on the watch. This is the 5th match is in progress. More 6 matches to be played in a day. I beg your pardon. If you look at the draw, this is the 4th match that is going on. So requesting the players kindly double up. As more matches to be played, more 6 matches, more 7 matches remaining in the later half of the day. So 2 openers in a flash out in the middle, Sanjay Naik and his partner Pradul Sangekar. Recently he has been on the page, on the FB page with his art. He is the same guy who has made beautiful designs and beautiful portraits. And in that one of the portrait which is world famous now is of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi. So same artist now showing his talent in the field of cricket will be at the non-striker's end. At the striker's end, talented all-rounder playing in the professional cricket for Goa Police. Presently leading the front, captain of Pinetock Strikers, Sanjay Naik on the striking end. Maybe he has brought the wrong willow, that's why he is running to get the perfect blade to chase down this target of 25 runs. So Pinetock in the first encounter, they have come successfully out of it as a winners. Now playing the second stage of the league. 25 runs required. Sunil Sawant, the bowler, to Sanjay Naik. First delivery, what a hit! Right from the middle of the bat, ball it disappears miles up in the sky, and that is a big 6 over the cow corner region. Starts with a bang, boosting his confidence. What a wonderful strike! Sixer to begin with in the second innings. Sunil Sawant, the captain, feeling the heat, feeling the pressure as a first ball disappears out of the ground. Another swing and a miss. Pradul wanted a single, denied by Sanjay Naik. Captain to captain, contest is on. First ball goes out of the ground, second ball back to the bowler. 6 runs on the board. Power play over is on. That is the reason we can see many vacant areas outside the 30-yard circle. These are the modern rules of the modern game to make it more exciting, and the excitement is on out in the middle. Another strike. No need to look at the ball as the ball goes out of the ground for the second time in the power play, taking the scoreboard furthermore to 12 runs. So 13 runs more required. Sanjay Naik is capable of finishing the match in the power play over itself. Can he finish it off in a style with a bang in the power play over that will boost the morals of his team? Sunil Sawant to Sanjay Naik. Another strike. Ball goes away from the fielder. Races towards the wide-ish longer fielder. Just a single that brings Pradul on the striking end. Pradul is also known for big hits. He has played a wonderful cameo in the league which was organized by Lucky Boys at Figurative Ground. He was a surprise package who has hit the most furious bowler, that is Sandesh Thakur, for big sixes. Let's see whether he can continue.
Another strike. Another ball is racing away from the fielder. Drop it to cross the fence. Comfortably 4 runs to be written on the board. Team total moves to 17. 8 runs away from the sweet victory. Power play over is on. More 4 overs to be bowled after this over. Pradul on the striking end. The artist doing the art. Another strike. Good strike. Fielder under the ball. And he takes a beautiful catch to take the first wicket at the mid-wicket region. DJ. So ball has been handed over to Dhruv to bowl the second over. Sanjay Naik on the striking end. Low full toss strikes the ball into the vacant area. Ball racing towards the covers. Fielder from the deep made an attempt but could not stop the incoming boundary. With that boundary, 4 runs. Team total moves to 21. Just 4 runs away from the victory. Sanjay Naik on the striking end. Can it finish off in a style? The time will tell us. Dhruv right arm over the stumps. Towards the covers, meanwhile the chance of a catch, and Sanjay Naik gives away his wicket, trying to play an extraordinary cricketing shot, not getting the timing, not getting the placement, only to give the ball to the point fielder. Second wicket back to the pavilion, and little work for the DJ. So new man in is Ganesh Patil has come to finish off the things in a style. Can he do it? Swings the bat very hard onto his legs. No chance of a run as Dhruv quick onto his follow through. Gathers the ball in his hand. Ganesh not taking much time. Maybe have hurt himself as the ball has landed right on the softest part of the body, that is thighs. Meanwhile, a shuffle down the track, strikes the ball very hard, straight down the ground, straight to the fielder. A single now. Aditya has got the chance to elevate his confidence and finish the thing. Let's see whether he can take this case in his hand. Advocate by profession. Not in a hurry. Waiting for the right proof to win this case. Taking his time at the striking end. With the villainy in his hand. Has judged the delivery perfectly. Now waiting for a weak document, weak spot. And plays the ball with soft hand to take a single. Are they going to run for the second? Challenge for Sunil Sawant. They are running. What a strong throw. Straight to the keeper. Missed by the keeper. Aditya survives. Couple of runs takes the team total furthermore to 24. 3 runs away from the victory. I beg your pardon. Just a run. Sometimes we commentator check the alertness of the fielders as well as the batting team. So immediately Advocate has turned his face towards the commentary box in an anger to check. Just a single required. Let's see who is going to bowl the next over. The successful bowler in the previous match, Mantesh, will be bowling the 3rd over. Just a run away. Ganesh Patil on the striking end has the chance to finish it off in his own style. Is it going to be a single or a 6? The confidence of Ganesh is going to be showcased as Mantesh gradually onto his run-up mark. Swings the bat very hard. Beautiful connection. Fielder under the ball.
Oh my dear, catch has been dropped and the match goes away in the favor of Pine Dog Strikers. Pine Dog Strikers, congratulations. Requesting patch coordinator to kindly introduce the guest at the days for the man of the match. Thank you, DJ. So with the power pack performance, there were a couple of names that were actually putting a lot of pressure on the jury for the man of the match. And with a very, very tough call, as there was a very good bowling performance. Bhavan, who has taken a wicket, has given 4 runs. Aditya has bowled over, have taken 2 wickets, have given 2 runs. Ganesh has taken 3 wickets, have given 2 runs. Sarthak has given 6 runs and a wicket. Sanjay Naik has taken 2 wickets and have given 7 runs, that too in the power play. And his very good batting performance of 17 runs from 6 deliveries makes Sanjay Naik the man of the match. So requesting Shri Nelson Anthav, please come at the presentation area to honor the most valuable player of the match. And the man of the match goes to Sanjay Naik. So requesting Shri Nelson Anthav to kindly do the honors. Man of the match to be given to Sanjay Naik at the presentation area from the hands of Shri Nelson Naik. Nelson Anthav. Over to Sanket Gaonkar with the further updates, as the next match is going to be played between Wadlamall Strikers and Lokmanya Warriors. Lokman Warriors have won the toss and they have decided to bowl first. Even 2 openers are out in the middle, Kalpesh Naik and Suraj Parab. For the further updates with a very sweet voice in the mother tongue, that is the national language, over to Sanket Gaonkar. पहली गेंद पर यहाँ पर कल्पेश को वापस भेजा है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत साइश की। पहली गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी सी नीची रही गेंद और उसी की बदौलत पहला झटका लगता हुआ पहली गेंद पर। कल्पेश और सूरज की जोड़ी होती थी मैदान पर। वॉरियर्स की तरफ से पहली गेंद यहां पर साइश की, वापस भेजा कल्पेश को। लोकमान ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया था वॉर्लिमा को बैटिंग के लिए और झटका पहली गेंद पर। नए बल्लेबाज उतरे हैं सुदीन मैदान पर। इस बार बढ़िया गेंद, झड़ी में डाली हुई गेंद, रन यहाँ पर लेना चाहते थे लेकिन
वापस भेजा सूरज ने, अगर लेते तो जरूर मुश्किल में पड़ सकते थे। पहली गेंद पर लगा झटका और अगर ये रन आउट होता तो जरूर ये टीम जो है बैक पर आ जाती, लेकिन अच्छा कॉल वापस सूरज का। फिर एक बार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गति के साथ गेंद थोड़ी सी चिटकी कीपर द्वारा, लेकिन फाइनल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्ड की वाइड का इशारा हुआ। लेग स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ। पहली और दूसरी गेंद हालांकि बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इस बार थोड़े से दिशा से भटके, उसी की बदौलत यहाँ पर एक रन जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में और कुल स्कोर हुआ 2। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सर्कल में मौजूद फाइनल का खिलाड़ी, सॉरी स्क्वायर का खिलाड़ी, और जब तक फील्ड करता एक रन यहाँ पर किया है कंप्लीट, और इस रन को छोड़कर कुल स्कोर हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। फिर एक बार बढ़िया यहाँ पर गति लाइन वाले के साथ सीधी जाती हुई कीपर के दस्ताने में, और कोई मौका नहीं यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का। कल्पेश ओपनर बैट्समैन, पहली गेंद पर वापस भेजा साइश ने, उसके बाद सूरज का साथ देने उतरे सुदीन। यहाँ पर हवा में गेंद, देखते हैं कौन यहाँ पर पहुंचता है, और अपने ही फॉलो थ्रू में दूसरा झटका देते हुए साइश को मिलती हुई दूसरी सफलता, और यहाँ पर वापस जाना होगा। सुदीन को कुछ खास नहीं कर सके, केवल 3 ही रन अपने इनिंग में बनाए, और सॉरी अब तो कोई खाता नहीं आंख खोला, 0 के स्कोर पर यहाँ पर आउट होकर वापस सुदीन, और 30 के रनों पर झटकता हुआ दूसरा झटका वर्ल्ड लेवल स्ट्राइकर्स को। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे गौरीश। पहली गेंद रिवर्स स्वीप, और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, और पहली गेंद देके जो कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का पिछले मैच से जो कॉन्फिडेंस और जो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पहली गेंद पर लगाया स्वीप शॉट, और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और उसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति होते हुए 9 रन लगे हैं बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। सिद्धराज नए बल्लेबाज, सॉरी बॉलर, गेंदबाज उतरे है बॉलिंग मार्क पर। सूरज होंगे स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म, और यहां पर थर्ड मैन का खिलाड़ी मौजूद था सर्कल में। बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद और सटीक लाइन विलन के साथ। तो पहली ओवर जो है 9 रन जरूर है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट जो है खोए थे कल्पेश और सुदीन को वापस पहुंचा था पहली ओवर में साइश ने। इस बार लगभग यॉर्कर गेंद थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, और चौका चाहता हुआ वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन यहां पर मिलते हुए। तो सूरज और गौरीश की जो पार्टनरशिप पिछले मैच पे रही थी, बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप, मैच जीतने के में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। और सूरज एक मौका मिला इस बार, हालांकि गेंद बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन उतनी अच्छी शॉट, उतना अच्छा संपर्क, और गेंद देकर गई 4 रन। इस 4 रन को छोड़कर कुल स्कोर हुआ है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद।
बार अच्छी वापसी उसी दिशा में जाती हुई, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब सारी निगाहें गौरीश पर। जिस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी, 40 रन 2 रनों का यहाँ पर नॉक खेला था, तो क्या उसी फॉर्म को यहाँ पर बरकरार रखेंगे? अगली गेंद सिद्धराज की, आगे आकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, लेकिन लगता है कि गति में यहाँ पर मिश्रण किया, थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी, उसी की बदौलत इस गेंद को पढ़ नहीं पाई। लेकिन पहली गेंद में जो स्विच हिट लगाया था बहुत ही लाजवाब। इस बार सफल हुआ और यहाँ पर गिरे, लेकिन गेंद कहां तक जाएगी? मौका यहाँ पर जरूर बना था, लेकिन फील्डरों का साथ यहाँ पर नहीं मिलता। वह आसान कैच था, सीधी गोदी में आई थी कैच, लेकिन सही समय पर अपने हाथ यहाँ पर बंद नहीं कर पाए। उसी की बदौलत एक मौका यहाँ पर मिला है गौरीश को, और इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं, कितना नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ेगा, आने वाले समय में चलेगा पता। इस बार कुछ अलग ही प्रकार की गेंद नीचे रही, बिल्कुल भी उछली नहीं, डॉट गेंद आती हुई। तो पिछली गेंद पर एक मौका था, यहाँ पर कैच सीधी गई थी, हालांकि मिस टाइम हुआ था, गिरे थे एक शॉट खेलते खेलते, लेकिन एक मौका यहाँ पर जरूर मिला है। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होते हुए 15 लगा है बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा बॉलर है भुवनेश, बॉलिंग की कमान संभाले। इस बार संपर्क अच्छा, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और ये बाउंस और फील्डर के ऊपर से जाती हुई, फील्डर की यहाँ पर कोई गलती नहीं, हालांकि पावरफुल शॉट थी, टप्पा गिरा और सीधे सिर के ऊपर से गई फील्डर के। वेलकम बाउंड्री आती हुई, गौरीश को जो मौका मिला था पिछले ओवर में, तो यहाँ पर एक चौका इस मौके पर देखा गौरीश का, और देखेंगे आने वाले गेंदों में किस तरह का अप्रोच रहता है गौरीश का। फिर एक बार उसी दिशा में उसी फील्डर के पास, लेकिन इस बार सीधी जाती हुई हाथ में, केवल एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और सूझबूझ पड़ी, पिछले गेंद पर मिला चौका, इस बार सिंगल रन। और जो लंबे कद के बल्लेबाज सूरज होंगे स्ट्राइक पर इस बार। बहुत ही बढ़िया संपर्क और गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, और एक यहां पर मोमेंटम जो बना, पहली गेंद से चौका मिला, उसके बाद सिंगल और एक छक्का आता हुआ सूरज के बल्ले से, तो स्कोर बोर्ड जो है बढ़ता हुआ आगे, और इस छक्के की बदौलत 26 पर पहुंचा है। तीसरे ओवर है प्रगति पर। इस बार दिशा से भटके बाही खोले अंपायर ने, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन, यहाँ पर प्रेशर जो है साफ दिखाई दे रहा है। एक चौका एक छक्का ऑलरेडी लग चुका है इस ओवर में, वाइड आता हुआ एक रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ टोटल में। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, संपर्क उतना अच्छा नहीं, हालांकि एक रन और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक दी अपनी पार्टनर गौरीश, जो भी बहुत बढ़िया टच में है। और यहां पर आगे आकर एक शॉट बड़ा खेलने की कोशिश, लेकिन लगता है कि थोड़ी सी नीचे रही गेंद, इसी की बदौलत संपर्क हुआ नहीं। फिर एक बार टपकी पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट कीपर द्वारा, बढ़िया गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति, और उसी के साथ 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। 28 लगी है बोर्ड पर।
दो विकेट के नुकसान के बाद। और आगे का हाल आपके सामने सुनाने के लिए आ रहे हैं सागर गोसावी सर अंग्रेजी कमेंट्री में। So now, thank you, Sanket. Enjoy your lunch break. Meanwhile, Sachin Desai to continue. Change in pace, but equally well played by Suraj Parab, nailing onto his knees, waiting for the ball to come to him, and dispatches the low full toss ball over the square leg for the big monstrous six to take the team total furthermore to 34. Another swing, but this time ball was paced onto the deck. Quickness of the delivery made it impossible for Suraj Parab to strike. Dot ball is the result. A little comeback, we must say, from Sachin Desai. Gradually onto his run-up mark, bringing all his experience under his belt. Another good chance of a catch ball going away from the wicketkeeper. That makes Suraj Parab to survive. Good throws, shy at the striker's end. A single to bring his partner Gaurish Naik onto the striker's end. Gaurish against Sachin Desai. This is going to be a good contest, as Gaurish is ruthless in the day, and Sachin Desai thinking what to deliver. A halt can tell us so many stories. Oh my dear, what a strike! That halt is not going to put any halt on Gaurish as the tsunami continues out in the middle. Beautiful striking continues right from the middle of the blade over the cow corner region. Big six takes the team total to 41. Wonderful fireworks happening out in the bright sunlight as the missiles lands out of the boundary rope. What a player this tournament has produced and made him to play on this very ground. All credit goes to Kakoda Premier League and the persons who have worked day and night to make this league possible. Meanwhile, a single to rotate the strike. This is a wonderful batting strategy, I must say, from Gaurish. Takes a single, invites his captain at the striker's end to take the proceedings from here on. Third over in progress. In fact, fourth over in progress. Sachin to Suraj. Another good delivery, strong strike, but along the carpet. Big man from cow corner. Saish, slight fumble. Suraj is not interested in the second run. So that was the final delivery of the fourth over. Single to take the strike in the fifth over. With that, team total moves to 43. DJ. Sign for the final over. It's Shantanu to deliver. Let's see whether Shantanu can soak all the pressure and apply the brakes on the run rate of the batting team, that is Wadlamall Strikers. They are going, as per the repetition of the name, Wadlamall, striking it very hard, and they have so far posted the total of 42 runs. 43 on the board. Meanwhile, this single will take the total furthermore to 4-4. And let me tell you, 4-4 is the jersey number of one of the destructive batsmen who has turned test match to be look like a T20. I'll tell you the name later. Another single.
Looks to be a single as Suraj is not interested. Meanwhile, a single takes the team total to 45. So let me tell you, 44 is the jersey number of none other than the destructive opener, Virender Sehwag. So now Suraj Parab on the striking end. Wonderful strike. Fielder could not stop the ball from crossing himself on the fence. 4 runs is written on that strike. With that, team total moves to 49. Last three, no? चल तुगे टीम आती पळय खंय आहा ती पळय Meanwhile, a strong strike and what a hit! Miles in the air as the ball goes safely into the market to bring some of the stuff that is required to generate power for Suraj Parab. And this is the big 6 straight down the ground. With that, 50 up for Vodlamar Strikers as the team score races to 55. What a player, what a hit, and what a strike, straight down the ground. When Suraj Parab strikes the ball, it looks like the longest part of the boundary is also not enough. Looks to be a very small boundaries when this guy is batting. Full pitch delivery right into the zone as Timber Shackles. Suraj Parab goes back to the pavilion. Shantanu strikes in the final over. Team total is 55 for the loss of 3 wickets. DJ. So Numan Inisham as he comes on the striking end. Wonderful strike from a player of Vodlamol Strikers. Shivam strikes, finishes off the inning in his own style. The way it looks elegant for the dugout of Vodlamol Strikers. And that big 6 takes the team total to 61. So the target is of 62 runs in front of Lokman Warriors. We'll see what happens after a short break as the second inning will continue after this. And for the match, I would like to invite the captain of Action Boys and Shania Builders to kindly come for toss as at the moment doing the role of match referee Sunay Naik will be taking the toss. $500 in cash in case they don't take Amex. She wanted to see me, so now I'm headed to the annex. Sorority house, she snuck me in. She tried to keep quiet, couldn't hold it in. I mean, the bed was too springy, the room was too dingy. You really can't blame me, I found her on Hinky. Life is a movie, but the only acting I do is acting on impulse. No stress pimples, young boy vibing. I would like to thank Tim Cook for taking out the headphone jack on the iPhones. Now we only plug it in my phone. I'm talking baby mass cyclone, tall, dark, and handsome. I move steady, stack dubs. I am the one your new girl still loves. Negotiating a deal that'll pay me too much. My name uttered in rooms that my feet haven't touched. No, I got it.
Trying to make a play, trying to make it happen. I can see my bars all up in the captions. I'm not Keith Urban, I won't put you in a song. Worldwide down, yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans on my lawn, I can never do no wrong. Yeah, world in my palms. Knew I was the greatest all along. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. 20,000 fans on my lawn, I can never do no wrong. Run it up from Bombay to Milan. See me when you turn your TV on. Yeah, I feel like Shah Rukh Khan. Running like a rabbit. So requesting the captain of Action Boys and Shania Builders, please come for toss. Captain of Shania Builders is already here, and even the captain of Action Boys. So requesting the match referee Sunay Naik to kindly take the toss of the further match. जे कॅमेरा चढ आणखी मारतात. So the toss between Shania Builders and Action Boys. Toss won by captain of Action Boys, and he has decided to field first. So the team Shania Builders will be batting first. Meanwhile, we are into the run chase. Target is of 62 runs. Let's see how this run chase is about to happen. First delivery, plays watchfully, guides the ball towards the fine leg region for a single. Sachin Desai, who has opened the account with a Saish. So meanwhile, even Saish open his account with a single. So couple of runs. Meanwhile, a cut shot was in act. Meanwhile, good reflexes shown by Suraj Parab behind the stumps. Gathers the ball quite comfortably, throws it at the non-strikers end where there was a possibility of a run out. But Saish is quick on his feet, makes his crease quite comfortably, and that ball has resulted as a dot ball. Gaurish bowling the power play over. Full toss delivery. That's a wonderful strike. No chance for the birthday boy, sitting rather than watching the ball sailing him past. Sixer to start the power play, power bang from Sachin Desai. With that, a team total moves to 8. 14, I beg your pardon. 14 on the board. 2 sixes from Sachin Desai. Another strike, oh my dear. Result is going to be the same. What a hit. Suraj Parab watches the similar kind of shot that he's hit, but this time from his opponent teammate. What a strike. 20 runs of the power play. What a cameo. What a power hitting by Sachin Desai. Sixer, and the third sixer from his bat takes the team total to 20. So now this has made Captain Suraj Parab to deliver the second over of the inning. Saish is on the striking end. That's the end of the power play. 5 fielders are plotted outside the 30-yard circle to take every possible chance.
that have been hit in the air to take the wicket. So here we go. Let's see what is the strategy of Suraj Parab to Saish. Full pitch delivery, wonderful strike, the chance of a catch, fielder. Oh my dear, what a catch taken at the covers by Sid Dural. He is a prolific professional volleyball player who tries to hit the ball every time that comes to him. But here in the game of cricket, you have to catch the ball. If you catch the ball in volleyball, then it is a foul and a warning. But in cricket, you are applauded as a wicket is taken. Saish back to the pavilion. Meanwhile, it's time for DJ to play some wonderful track. So as the wicket falls, Srujan is at the striker's end. He is also capable of hitting the ball quite comfortably. Let's see what he can do. No full toss, could have been hit, but plays with elegance, played with presence of mind, strikes the ball towards the covers, takes a couple of runs, opens account for himself. Meanwhile, a wonderful strike towards the wicket area at the mid-wicket region. Good fielded by the fielder from the deep. Throws the ball straight to the keeper. Just a single. So far, good bowling by Suraj Parab. And now the dangerous looking batsman Sachin Desai on the striking end. Let's see whether he can make it big on his own. Wanted to cut the ball. Ball takes outer part of the bat. Travels towards the short tournament region for a single. And that single takes the team total furthermore to 23 runs. 24 runs. So this is a wonderful batting strategy applied by Lokmanya Warriors. They have already selected to which bowler they should be really going after. For Suraj Parab, they are watchful, not in a hurry to give away the wicket, not taking any risk. So wonderful strategy that has been planned by the batting team. Another good delivery, played with respect, drives the ball towards the covers region to take a single. So after completion of 2 overs, score is 26 for the loss of 1 wicket. So both the captains, in fact all the captains, please note 20 minutes are allotted for you all to complete the inning of 5 overs. And let's stick to that time. What a strike! Even though the fielder plotted, won't be able to stop the ball as the ball goes quite comfortably across the fence. And the little master on a roll, striking the ball very hard as per the expectations that have been from his team, and that's why he has been sent to open the innings. Boundary takes the team total to 30. Meanwhile, a full toss, chance of a catch. Oh my dear, misjudged by the fielder from the circle. These are not the easy catches the way they look, and a survival for Sachin.
couple of runs to take the total to 32. So meanwhile, a single to take the team total to dangerous mark. 33 on the board. Srijan on the striking end. In the past match, 33 has taken 2 wickets and 1 player was injured. So let's see what is going to happen on this 33 score. Srijan on the striking end. Swings the bat very hard, chance of a catch. And ball had just travelled quietly slightly away from the fingertips of the fielder. That is the maximum. It is not going to have any effect on Srijan. Sixer takes the team total to 39. So requesting the volunteers to please be quick onto their feet and bring the ball that have been hit for the sixes. सो हांगा जे भुरगे आसात तेंचे कडेन मागता मातशें अलर्ट रावचे. बॉल जे हांगा बाउंड्रीच्या भायर वतात ते ऑर्गनायझरांक हेल्प करचे बॉल भितर उडोवपाक. So now the match ball has been retained. Young lads are doing a wonderful job of bringing the ball that have been hit out of the park. Srijan on the striking end with a 6. Team total moves to 39. Another swing, but lovely pitch delivery slightly outside the off stump. No contact. Leaves the ball straight to the keeper. In this run chase, even now Lokman, the Warriors are batting like warriors. They are literally fighting the battle and trying to be on top. So let's see what is going to be the perspective of this match as the inning progress. Another delivery, wonderful strike, straight hit over the bowler's head. Even can hear the jubilation and the loud cry from the dugout of Lokman Warriors. Sixer takes the team total to 45. And that concludes over number 3. So after completion of 3, 45 for the loss of 1 wicket. DJ. Well, the chance of a catch. Gaurish takes the catch and a dangerous looking batsman Sachin back to the pavilion. As the wicket falls, we can see the reaction of Sachin Desai. Was the ball to be hit towards the off stump, no connection, and the loss of wicket. Meanwhile, the next man walks in is none other than the captain of the side, Sunil Sawant. He is a good batsman, but so far maybe he has felt the pressure of captaincy that have kept his villa to be quiet, but this is the testing time for himself and to prove his talent. Let's see what he can do as he will be at the striker's end. Shivam the bowler takes wicket on the very first delivery. Eleven deliveries, 17 runs to get. Sunil Sawant wanted to cut the ball and not getting the proper connection. Ball travels quickly to Gaurish Naik, who is keeping the stumps.
So consecutive dot balls considered by Shivam. Just a confident strike to boost the confidence for the captain. Meanwhile, Shivam is providing a decent line in length. 17 runs required from here on. Can Shivam get something miraculous? Meanwhile, a low full toss is a wonderful strike. Suraj Parab under the ball and won't be able to get. That's a big six from the captain. Captain strikes, takes the team total to 51. 11 runs required. Has got an opportunity to finish the match in this over itself. Can a captain do it for his team? With the willow holding it very strong. Good striker of the tennis ball. Meanwhile, ball has been pitched into the zone, which is difficult for the batsman to take it even onto the bat. A Yorker resulting in a dot ball. Still, Sunil Sawant has got a chance to finish this match in this over itself. 2 deliveries remaining, 12 runs to get, and 1 more over to be bowled after this over. Shuffles towards the off stump, strikes the ball straight down the ground. Single is the call. With that single, Srujan is on the striking end, and with that, team total moves to 52. Exactly 10 runs required from 7 deliveries. Can Srujan finish on a high note in this over? The time will tell us. Shivam to deliver the final delivery in the 4th over. This is a wonderful strike, chance of a catch, straight to the fielder and a wicket to finish over number 4. So after completion of 4, it's a 52 for the loss of 3 wickets. DJ. So now the second owner who is playing for the team has been handed over the ball to deliver in this final over. 10 runs required. First delivery goes as a dot ball. What a way to start the final over. These 10 runs will look like a mountain if one more dot ball considered by Daigo. Daigo, the owner, playing as a player, taking all the responsibility on his shoulders. Let's see whether he can be the lucky charm for his side. Another dot ball, oh my dear. This is going to be the turning point in this match. I can't believe my eyes. I am seeing Daigo for the very first time in this big platform. And what a time to make an impact. Doing the much needed thing for his team. Taking all the pressure on his shoulders, soaking it up. 2 deliveries goes at dot deliveries. Shuffled slightly down the track, hits the ball from the bottom part of the bat, and this is the lucky escape as tallest fielder Kalpesh could not stop the ball. Ball goes towards the boundary rope, and that will bring the equation furthermore to just 6 runs from remaining 3 deliveries. Tallest guy could not stop the ball from above his head. So now this is slight confidence booster for Sunil Sawant.
But Daigo looking much confident. That was not convincing strike as ball has taken the lower part of the bat. Shot between the strike, chance of a catch. Suraj Parab, oh my dear. Misses the catch and misses the match. Congratulations, Lokman Warriors, for winning this match quite comfortably. Captain raising at the occasion, taking his team to the safety. So let's see who is going to be man of the match. So requesting one of the team owner, Shri Saish Fulare, to kindly come and do the honors. Let's see who is going to be man of the match, as many good performances are being witnessed in this previous match. If we look at the scorecard, there are plenty of names flashing out, asking the jury for man of the match, but only one player is going to bag it, and let's see who it is going to be. So meanwhile, requesting the guest at the presentation area, Shri Saish Fulare, to kindly come and do the honors. So it was a very tough call for the jury, and finally we have come to the conclusion that it's none other than the little pocket dynamite who has exploded in the power play. The most experienced player, Sachin Desai, for his cameo of 28 runs from 11 deliveries and giving a good start in the power play, is man of the match. Sachin Desai, kindly come and receive your man of the match trophy from the hands of one of the owner of Sai 11, Saish Fulare, waiting for you with the shining trophy in his hand. So requesting Sachin Desai, kindly double up and come and receive your man of the match trophy from the hands of the guest at the occasion, Shri Saish Fulare. Now next match is going to be played between Action Boys and Shania Builders. Shania Builders, I beg your pardon, there's a slight correction in the name. Action Boys, after winning the toss, have decided to field first and invited Shania Builders to bat. With the further updates, requesting Sanket Gaukar to kindly take on the mic. फुटस गेंद डीप में फील्डर मौजूद दीप केकर और चंदेश बॉलिंग मार्क पर है. मैच एक्शन बॉयज वर्सेस, इस बार अपील, बढ़िया अपील और उगली उठती हुई पहला झटका यहां पर देते हुए चंद्रेश. तन्मय को वापस भेजा चंद्रेश ने. तो यहाँ पर बढ़िया शुरुआत चंद्रेश की. ये मैच एक्शन बॉयज वर्सेस शनिया बिल्डर्स के बीच, और शुरुआत यहाँ पर चंद्रेश ने की पहली ओवर, और पहले ओवर में झटका यहाँ पर देते हुए तन्मय को भेजा वापस. बबलू अगला बैट्समैन बैटिंग की कमान संभालने के लिए यहाँ पर तैयार. पहली गेंद घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन
आई नहीं बल्ले पर डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत यहाँ पर चंद्रेश की। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट होती तो यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकते थे कप्तान इस टीम के बबलू। हालांकि अंत में यहाँ पर सब भला, लेकिन रिस्की रन था। अगर डायरेक्ट होती तो जरूर यहाँ पर वापस जाना पड़ता, लेकिन क्रिकेट है तो रिस्क यहाँ पर लेना ही होगा। चंद्रेश की अगली गेंद आगे आए और मौजूद वहां पर सर्कल में फील्डर, एक रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ओवर रही है चंद्रेश की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन लगे बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। दीप नया बॉलर, पिछली मैच हुई थी उस मैच में 2 विकेट लिए थे दीप ने, और जो लो स्कोरिंग हालांकि मैच था, लेकिन बॉलिंग के दम पर ये मैच जीत ली थी और अंक अर्जित किए थे। उसी प्रकार का यहाँ पर कुछ प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा। चंद्रेश की बढ़िया यहाँ पर शुरुआत, पहली ओवर में केवल 4 रन देकर तन्मय को वापस भेजकर 1 विकेट भी अपने नाम की है, और दूसरा ओवर यहाँ पर लेकर रितेश। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद जड़ में, लेकिन उतनी ही अच्छी रक्षात्मक तरीके से खेली। दूसरा रन, जी हाँ जरूर यहाँ पर रिस्क होता, अगर दूसरा रन लेता तो स्विच भी बड़ी यहाँ पर क्रिकेट बबलू ने 1 रन यहाँ पर लेकर स्ट्राइक दी है विराज को, जो कि ओपनर बल्लेबाज ओपन किया था इस इनिंग में। फिर एक बार बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पहला ओवर रहा था चंद्रेश का, उसके बाद दीप्तेश काफी बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग, कोई रूम नहीं, कोई मौका नहीं, कोई खराब गेंद अब तक नहीं। इस बार फिर एक बार जड़ में जाती है गेंद, जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का यहाँ पर बॉलिंग दोनों ही बॉलर ने की है, तो बांध के रखा है हालांकि बबलू और उसके साथ है विराज। आगे आए और हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, और दूसरा रन यहाँ पर मना किया विराज ने। बबलू लेना चाहती थी रन, तो एक एक करके यहाँ पर 1 रन जोड़कर धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और मालूम है कि इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी है, उन 3 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सकते हैं। हालांकि 9 रन लगे बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। फिर एक बार वही लाइन के साथ सभी के सभी गेंद जो है बढ़िया लाइन के साथ की है दीप ने, और 1 रन और जोड़ता हुआ टोटल में। उसी के साथ 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होते हुए 10 रन लगे हैं बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। डीजे दौड़ के बाद 10 रन लगे बोर्ड पर, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा पसंद आई है तीसरे बॉलर। यहाँ पर
अपील और लीडिंग एज लगती हुई और सीधे जाती हुई कीपर के हाथ में दूसरा झटका। यहाँ पर कप्तान आउट होकर वापस कुछ खास नहीं कर सके इस इनिंग में, केवल 10 ही रन लगे हैं बोर्ड पर और दूसरा झटका लगता हुआ प्रसन्न यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए पहली गेंद पर दिलाई है विकेट। पिछले मैच में ऐसे ही रही थी, बॉलिंग बढ़िया रही थी और इस मैच में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए सभी बॉलर्स। थैंक यू डीजे। और संकेत उतर मैदान पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पर होंगे और प्रसन्न की पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर मिलती है। और जब जब पहली गेंद पर विकेट मिलती है तो बॉलर का मनोबल जो है बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे कि आने वाली गेंद जो है किस प्रकार की करते हैं प्रसन्न। इस बार जर्मी गेंद खेलकर एक रन किया है कंप्लीट और स्ट्राइक दी है अपने पार्टनर विराज को, जो ओपनर बल्लेबाज थे। अब तक खामोश रखा है चंद्रेश, इसके बाद दीप्तेश और प्रसन्न बढ़िया काम, बढ़िया लाइन के साथ करती हुई बॉलिंग। इस बार फुल टॉस गेंद, देखते हैं कहां तक जाती है गेंद। छक्का आता हुआ, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण छक्का एक टीम को मोमेंटम दिलाने के लिए या जो स्कोर बोर्ड है उस स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने के लिए इस छक्के की जरूरत। और ये छक्का जो आया है, देखते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड करता है। तो बढ़िया शॉट, पहला छक्का आता हुआ विराज के बल्ले से। इस बार आगे आकर खेला, हवा में गेंद और एक विकेट का यहां पर पतन होते हुए पिछली गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन इस बार बॉलर के जवाब से तीसरा झटका लगा है 17 के स्कोर पर। कंधार नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। 3 विकेटों का पतन अब तक हुआ है और अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी यहां पर प्रसन्न की चलती रही। पिच गेंद, कोई मौका नहीं, कंधार अभी उतरे हैं मैदान पर और पिछली गेंद पर विराज ने एक बहुत ही बढ़िया छक्का लगा, लेकिन उसकी अगली गेंद पर वापस भेजा प्रसन्न ने उसे। तो एक बार बढ़िया गेंद यहाँ पर और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त। 17 लगे बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान के बाद।
चौथी को ओवर लेकर संजील तैयार, गेंद अपने हाथों में, बढ़िया गेंद जड़ में, सटीक लाइन और लेंथ। जिस तरह से मैंने कहा था कि पिछले मैच बॉलिंग के दम पर जीती थी, हालांकि 37 रन बनाए थे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर बॉलिंग का प्रदर्शन आज रहा है बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार जड़ में गेंद, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी दिवेश की, कि यहाँ पर रन जरूर मिल सकते था अतिरिक्त, लेकिन बढ़िया यहाँ पर सर्कल में फील्डिंग, कंधार होंगे इस पर स्ट्राइक पर। इस बार हवा में फिर एक बार गेंद, फील्डर बॉल के नीचे, और वहां पर बॉलर और दो फील्डर तीनों के बीच में यहाँ पर हड़बड़ाहट की कौन यहाँ पर कैच चलेगा, लेकिन अंत में ये कैच जो है गिरती हुई, और एक मौका यहाँ पर गंदार को मिला है। हवा में हालांकि गेंद थी, लेकिन मौका बना था, उस मौके को नहीं भूल सके, एक जीवन दान यहाँ मिलता हुआ गंदार को। उसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ 19 लगे है बोर्ड पर। इस बार बढ़िया गेंद, अपील जरूर की है, लेकिन एम्पायर इंटरेस्टेड नहीं, उत्साह काफी इस अपील में, बढ़िया वापसी, बढ़िया यहाँ पर सटीक लाइन लेंथ। सभी बॉलर जो बॉलर अब तक इस्तेमाल किए हैं, तो चंद्रेश ने यहाँ पर शुरुआत की, और जो पहला ओवर रहा था केवल 4 ही रन अपने ओवर में दिए थे, एक विकेट भी अर्जित की थी चंद्रेश ने। इस बार फिर एक बार जड़ में गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, लेग की दिशा में एक रन यहाँ पर मिलेगा, 20 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। हैज लगती हुई, लेकिन सीधे कीपर के पास जाती हुई, और एक डॉट गेंद, उसी के साथ 3 और 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त। 20 रन लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान के बाद। पहली गेंद खराब गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ, और बाउंड्री भी यहां पर मिलती हुई। हालांकि दिवेश ने पिछली जो मैच थी उस मैच में एक बढ़िया प्रदर्शन करके मैन ऑफ द मैच हासिल की थी, और इस बार पहली गेंद दिशा से भटके वाइड, सॉरी नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। देखते हैं फ्री हिट का कितना यहां पर फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। संकेत है स्ट्राइक पर। फ्री हिट और पीछे फील्डर मौजूद, क्या वो फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। एक रन यहाँ पर जुड़ा हुआ टोटल में 26 इस एक रन को जोड़कर हुए है। दिवेश एक बहुत ही बढ़िया बॉलर जिन्होंने पिछले मैच जो लास्ट ओवर थी उस लास्ट ओवर में बढ़िया बॉलिंग करके जिताई थी अपनी टीम को। इस बार घुमाने की कोशिश लेकिन आई नहीं बल्ले पर, और यहाँ पर आसान रन आउट, सिर्फ विकेट पर निशाना साधना था और सटीक निशाना, उसी के साथ संकेत वापस जाते हुए इस आखिरी ओवर में।
और एक वेटरन प्लेयर यहाँ पर मौजूद तुषार पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिक्रमण यहाँ पर जुड़ता हुआ। तो देखेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर तुषार करते हैं। इस बार बढ़िया आ गया है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन फील्ड को क्लियर नहीं कर सके और पहली गेंद यहाँ पर आउट होकर वापस बिना अपना खाता खोले तुषार। तुषार गाठवाल तुषार हो गाठवाल तुषार घटवाल नए बल्लेबाज पर पहली गेंद पर बड़ा प्रहार और अच्छे रन अर्जित किए हैं पहली गेंद पर। हाल I request Sai 11 and Volleyball strikers with the captains kindly come to the toss the committee box. इस बार हवा में गेंद और कीपर के सीधी गोदी में जाती हुआ और एक झटका लगता है। हालांकि बढ़िया शॉट रहा था पिछला तुषार घटवाल का लेकिन इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं और इसी के साथ 33 जो नंबर है उस 33 पर बहुत कुछ घट रहा है। पिछले 33 पर 2 विकेट और एक इंजरी हुई थी और इस बार तुषार घटवाल 33 के स्कोर पर आउट होकर वापस। मूव हो रहा है नया बैट्समैन। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद संपर्क उतना अच्छा नहीं। पीछे फील्डर मिड विकेट का फील्डर जो है 2 रन यहां पर लेने की कोशिश और 2 रन की कोशिश में अपना विकेट यहां पर गंवाते हुए और इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति 34 लगे हैं बोर्ड पर। 35 रन चाहिए इस मैच को जीतकर 2 अंक अर्जित करने के लिए।
request about the batsman kindly come as fast as possible. Batsman hal waqta mashi zatile begin na क्रिजीचे देवचे ऍक्शन बॉयज आणि येता हे खेळटा साई आणि व्हडले म्हणून येता साई हॅलो दोन्ही मागचे टॉस घे आयले आयले दोन्ही कॅप्टन आयले साई आणि व्हडले म्हण हांगा त्या सायडीन वेलो हाडून दिवना एक्शन बॉयज को मैच जीतने के लिए 35 रन चाहिए और 2 अंक अपने नाम करने के लिए दिवेश और रजत उतरे हुए मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर है कंदार कंदार की पहली गेंद बढ़िया संपर्क और ये मिस फील्ड यहाँ पर हालांकि उतना बड़ा टोटल यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लगा पाए और ऐसी मिस फील्ड जो है यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर सकती है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट हालांकि फील्डर के पास गई थी लेकिन मिस फील्ड इसकी बदौलत पहला चौका आता हुआ यहाँ पर दिवेश के बल्ले से दूसरी गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला अपनी फॉलो में यहाँ पर डायरेक्ट हिट लेकिन बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त दिवेश और रजत दोनों ही अपने क्रीज में पहुंच गए सूझबूझ भरी क्रिकेट पहली गेंद पर लगा चौका उसके बाद हल्के हाथों से खेला और 1 रन और स्ट्राइक दिया अपने पार्टनर रजत को 35 रन यहाँ पर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और स्कोरबोर्ड पर अब तक लग चुके हैं 5 रन 30 गेंदों का एक खेल और 30 गेंदों में बनाने हैं 35 रन इस बार फिर एक बार रक्षात्मक तरीके से खेला और पॉइंट का खिलाड़ी वहां मौजूद केवल 1 रन तो यहां पर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है हल्के हाथों से 1-1 2-2 रन करके ऐसा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और जब खराब गेंद मिलेगी तो बड़ा प्रहार कर सकते हैं हालांकि यहाँ पर एक पार्टनरशिप यहाँ पर बनानी होगी इस बार खराब गेंद लेकिन थोड़ी सी ऊंची रही वहां पर फील्डर मौजूद था और पावर प्ले का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ चौका और एक चौका दूसरा चौका लगता हुआ इस ओवर का दिनेश के बल्ले से आते हुए दूसरा चौका और ऐसे चौके की बदौलत 10 रन पर पहुंच का है टोटल स्कोर 35 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और शुरुआत काफी अच्छा अब तक लग चुके हैं 2 चौके इस ओवर में पहली ओवर प्रगति पर फिर एक फुल टॉस गेंद वहां पर फील्डर ने लगाई है दौड़ जरूर थोड़ी सी हाथ से छिटकी लेकिन इस बार दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा और 1 रन से संतुष्ट जानते हैं कि ये रन चेस करने के लिए रिस्क लेने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि 35 रन ही यहाँ पर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और लग चुके हैं बोर्ड पर 11 रन इस 1 रन को जोड़कर फिर एक फुलटॉस गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन मिस हिट पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल में मौजूद 1 ही रन से यहाँ पर होना पड़ेगा संतुष्ट और इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 12 रन लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के
नया बॉलर विराज दूसरी ओवर की कमान संभालने के लिए। यहाँ पर रिवर्स से पर खेलने की कोशिश आई नहीं बल्ले पर। एक रन यहाँ पर मिलता हुआ रजत रिवर्स शॉट स्वीप के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया खेलते हैं ये शॉट। विराज की पहली गेंद पर आया एक रन और एक रन को जोड़कर कोर्स को हुआ है 13 रन। गति में परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया से पिक किया वहां पर फील्डर तुषार लंबे कद के, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते हुए तुषार खटवा के सिर के ऊपर जाता हुआ ये छक्का और दिवेश के बल्ले से आया। पिछले ओवर में देखा था कि 2 चौके लगे थे और इस ओवर में भी बढ़िया यहाँ पर संपर्क करते हुए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर वही दिशा, लेकिन इस बार तुषार के हाथों में और ये ड्रॉप कैच। यहाँ पर खराब फील्डिंग कही जाएगी क्योंकि सीधी कैच आई थी। यहाँ पर हिलने की जरूरत नहीं थी, हाथ में आई थी, लेकिन इस आसान से मौके को यहाँ पर छोड़ा और एक जीवन दान यहाँ पर मिलता हुआ दिवेश की। और इस एक रन को छोड़कर कुल स्कोर है 20 रन और केवल 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर और 20 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। इस बार बढ़िया सूझबूझ भरी क्रिकेट, गैप में ढकेला गेंद को जब तक के मिडन और मिडिल फील्डर यहां पर गेंद के पास आकर फील्ड करता। एक रन यहां पर किया दौड़कर कंप्लीट और स्ट्राइक दी है इनफॉर्म बैट्समैन दिवेश को। इस बार आगे आए बढ़िया यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके खेला है शॉट। केवल एक रन, रिस्क लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब खराब गेंदें मिलेगी तब यह अपना खात खोलेगी। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर चलती हुई। इस बार दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल में 23 पर पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। और ये यहां पर इस बार बच्चा संपर्क, यहां पर किसी भी फील्डर को हिलने की जरूरत नहीं, सीधी जाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और दूसरे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 29 रन लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। केवल 6 रन चाहिए इस मैच को जीतकर 2 अंक अर्जित करने के लिए। मयूर तीसरी ओवर, केवल 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। उनतीस रन लग चुके बोर्ड पर, 35 रनों की यहाँ पर दरकार थी इस मैच को जीतने के लिए। और तीसरी ओवर की शुरुआत करते हुए मयूर ये खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से दूर जाती हुई गेंद और इस एक रन को जोड़कर 30 रन लग चुके बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। केवल 5 रन यहाँ पर जाएंगे। क्या छक्के के साथ इस इनिंग की समाप्ति होगी? देखते हैं इस आने वाली गेंद पर। इस बार बढ़िया यहाँ पर गेंद सटीक लाइन और लेन के साथ अच्छी गति के साथ सीधी जाती हुई कीपर के दस्ताने में। तो केवल इस मैच को जीतने के लिए 5 रन की यहाँ पर दूरी, 5 रन यहाँ पर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार दिशा से भटकते हुए वाइड का इशारा आता हुआ
31 से एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। अब केवल 4 ही रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑप्शन से दूर रखा था, कट करने की कोशिश वहां पर की थी दिवेश ने, लेकिन अच्छी गेंद 4 रन से दूर, 4 रन से पीछे इस मैच को जीतने के लिए। बॉल लगता थे 38 बॉल लगता 19 में फिर वह एक बार घुमाने की कोशिश, अपील जरूर की है लेकिन एम्पायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिस तरह के यहाँ पर बॉडी मूवमेंट या जिस तरह के यहाँ पर मैच जो चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि एक बड़ा हिट लगाकर इस मैच को समाप्त करना चाहते हैं। केवल 4 ही रन दूर, तीसरा ओवर है प्रगति पर, उसके बाद 2 ओवर बाकी इस इनिंग की। थर्ड मैन की दिशा में गई, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा और नजदीक जाते हुए इस 1 रन को जोड़कर 32 पर पहुंचा है कुल स्कोर और केवल 3 रन दूर इस जीत से। फिर एक बार रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब। पिछला हिट जो लगाया था बहुत ही बढ़िया संपर्क, 6 रन अर्जित किए थे उस स्वीप शॉट पर, लेकिन मयूर की बहुत ही बढ़िया ओवर, केवल 3 ही रन दिए इस ओवर में अब तक मयूर ने। इस बार बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फिनिश इट इन स्टाइल और चौके के साथ इस इनिंग की समाप्ति होती हुई बहुत ही बढ़िया। एक्शन बॉयज ने ये मैच जीतकर 2 अंक किए हैं अपने नाम और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं सर सागर गोसावी। Thank you, DJ. So now, let's see who is man of the match. So man of the match between Action Boys and Volleyball Strikers is none other than another good all-round performance in the match. Again, I would like to call the magical boy for taking 2 wickets in the final over, although there was 2 sixes, but 2 wickets and a beautiful batting in which he has scored 18 runs from 10 deliveries and not out. He has remained. Divesh, kindly come and collect your man of the match. मागता बाब पुजेश नायक मातसो हांगा येवचो आनी मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी आसा ती दिवेशाक दिवची. सो हांगा सोयरे म्हूण येतात पुजेश नायक ही मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दिवपाक दिवेशाक. So meanwhile, before the start of this match between Sai 11 and Volleyball Strikers, let's look at the points table. Pine Dog Strikers are with 4 points. Action Boys are with 4 points. Volleyball Strikers with 2 points. Lokmanya Warriors with 2 points, and Sai 11 and Chennai Builders are yet to open the account. So this is the points table. Meanwhile, Volleyball Strikers striking at the right occasion starts with a boundary.
So here's at the presentation, Pujesh Naik will be doing the honors, giving away man of the match trophy to the most prolific player of the match. The magical boy in action, playing for Action Boys. Divesh receiving in fact the trophy. Second ball, a chance of a catch. Sunil strikes, takes the wicket of dangerous batsman Suraj Parab back to the pavilion. So on the occasion, would like to request the captain of Pine Talk Strikers and captain of Action Boys to kindly comfort us as you are playing the following match. So power play over is on. Sunil Sawant strikes. Captain takes the wicket of captain. So new man is Sagar Patil. 4 for the loss of 1 wicket. Good strike. Fielder under the ball. 3 fielders running to get. Let's see who is going to take it. Oh my dear. In the bargain, ball falls safely on the ground, teasing all 3 players that you are not able to catch me. And Sagar survives. Couple of runs takes the total to 6. 6 for the loss of 1 wicket. Sai 11 in a hunt of their first win to put some points on the table. Another swing and a miss. Change in pace doing the trick for Sunil Sawant. Ball went much later to the keeper. So mixing up his deliveries, trying to gain some momentum as he has taken a wicket. So far a decent power play over after a very long time to be seen of Sunil Sawant. Down the leg stump, this is a water not required. In a hunt of the leg stump, delivers a wide delivery plus 4 runs to be added to the bonus. So total 5 runs into the account. This fifer takes the total furthermore to 11 runs, double digit on the mark. This fifer has spoiled the equation of a beautiful over, and not to be blamed. The only person to be blamed is Sunil himself. Another good pitch delivery. What was looking to be a full toss, ball dipping at the very last moment, and a dot ball considered. So if that wide delivery was not delivered by Sunil, then definitely it would have been a decent over. In a hunt of a wicket, doing little harakiri and giving away more runs. Another swing and not getting the proper connection. Still manages to take a single as ball goes slightly away from the fielder at the wideish square leg inside the circle. A single to end the over number 1. So after completion of 1, score is 12 for the loss of 1 wicket. Thank you, DJ. DJ playing tracks as per the climate and the situation. It is very hot outside the ground. Even a tough battle is happening out in the middle. Vandermall strikers trying to gain 4 points, and Sai 11 trying to take 2 points to open the account at the points table. So Dhruv Naik has been given the ball to deliver the second over of the inning. Sagar Patel strikes the ball very hard, could not get the elevation. Ball travels along the carpet towards the cow corner region for a single, and that brings
Shivam on the striking end looks to be a very tough guy as per his physique, having a strong arm, good shoulders. Can he strike the ball out of the park? That is the big question in front of the spectators. Meanwhile, he is against Dhruv. Full toss ball dispatches it towards the mid wicket fielder. Misfields could not stop the ball. Rather, ball races towards the boundary. And these 4 rounds takes the team total furthermore to 17. Decent start from the batting team, although they have lost a prized wicket of the captain. But the incoming batsmen are not going to stop, not going to pause for a while. They are going to get as much runs as possible as per their strength. This is a wonderful battle happening out in the middle. Another strike chance of a catch. Dhruv gives a call to his partner, and the catch has been taken by Tejas Sail, another youngster who can be seen in action doing his practices at the Pontimal, that is the Figueroa ground. Plays normally for Lucky Boys, and he is being lucky for Dhruv as he catches the ball, takes the catch, second wicket back to the pavilion. Thank you, DJ. So now the most prolific and the dangerous batsman of the Vadlamal Strikers is out in the middle. Gaurish Naik. Dhruv to Gaurish, and let me tell you, Dhruv and Gaurish, they practice on the same ground near the crusher. So this is a test for Dhruv as the strongest batsman is on the strike. Shuffle slightly towards the off stump. There's appeal denied by the umpire as there wasn't any connection between bat and ball as per the main umpire. So Dhruv has to march back to his run-up mark to deliver the next delivery. And Dhruv now accepting the challenge. Let's see whether he can trouble Gaurish. Switch it attempted. There's again appeal. Is it? No, my dear, no connection whatsoever between bat and ball. Umpire unshaken, unmoved. Shrewd umpire Sunil Naik doing the role of main umpire along with his partner Sanjay Naik as a square leg umpire, and Suraj Naik, 3 Naiks doing the job, is taking rest as it's his time to take little rest. Meanwhile, a strong strike, a chance of a catch, fielder under the ball, and the catch has been taken by none other than Mantesh. So Vadlamal Strikers are not able to fire their big guns, and big guns back to the pavilion without exploding much. Gaurish back to the pavilion. Thank you, DJ. So DJ is playing as per the situation. I have seen the black gloves in the hands of Kalpesh. Immediately get a song in the similar meaning that it's Kala Chashma, but not Chashma. This time it is gloves. So welcome Kalpesh out in the middle, yet to play a better knock for his team, and 17 for the loss of 3 wickets. Another swing by Sagar Patil, no connection. Meanwhile, ball has been delivered way outside the off stump. Wide is the signal from the main umpire. Mantesh, the bowler, delivering the 3rd over. 18 is the scorecard. Another lower full toss. Sagar could not connect. Ball races quickly to the keeper. Results in a dot delivery.
Another good delivery. Yorker equally well played with respect. Drives the ball towards the covers. Kalpesh in a hunt of a second. But quick pick up and a release towards the bowler. Denies the chances of the second run. With a single, score moves to 19. And now the elegant left-handed batsman on the striking end. Maybe he has come after a gap of 3 to 4 months from all the way from Mumbai. Is not able to connect the ball properly, but if he gets going, then again 60 runs will be on the scorecard at the end of the innings. Such is the caliber of this Nicholas Pullen. Wanted to pull the ball, not getting the better placement, strikes the ball straight to the bowler. Still yet to open his account. Kalpesh struggling a bit at the moment, but if he connects, then definitely the score will be somewhere near 60. Short pitch delivery, no connection whatsoever. That would have been a big six, not getting from the proper part of the bat. Takes a single, brings his partner at the striker's end. With this, score gradually moves to 20. Another swing and a miss. Good delivery bowled by Mantesh. Looks like Sagar just aiming towards the mid-wicket region, just swinging his bat. Another swing and a miss. Stretch of arms by the umpire. Wide is the signal. With that, the worm on the graph moves a little inch. Score moves to 21. Another swing. There's definite the correction. Loud sound could be heard right from the commentary box. Finally, Sai 11 is on the track, taking the wickets at the regular interval. So after the fall of fourth wicket, team total is 21. DJ. Service the bowler, and this is a wonderful strike from Nicholas Puran, gaining his confidence, and what a wonderful strike straight down the ground. Look at the stretcher, look at the power. Big six from Kalpesh, and that takes the team total to 27. Sarvesh has been introduced to bowl the fourth over of the inning, and he has been welcomed with a big six from Kalpesh. Another pull shot attempted, ball straight towards the tallest fielder at the square leg region. A single takes the total furthermore to 28. So now the toss will be going to take in place between Lokman Pine Talk Strikers and Action Boys. Pine Talk Strikers versus Action Boys. Another single takes the team total to 20. With this couple of runs, score moves to 31. चार बॉल झाले हवे 6 1 1 2
So meanwhile, the news is Pinetock Strikers have won the toss, and immediately Sanjay Naik has decided to bowl first, inviting Action Boys to bat. So there, that concludes over number 4. So after completion of 4, score is score is 34 for the loss of 4 wickets. Sai Sawant, left arm over. Meanwhile, the first ball goes out of the park. What a strike! Weighted onto his back foot till the ball comes at his shoulder level, and that's a convincing strike from Kalpesh. Sixer takes the total to 40. Finally, Kalpesh gaining some form, getting the momentum, and giving a hit for Saish. First delivery of the final over goes for a big 6 over the square leg. Team total moves to 40. Short ball again, gets the same treatment slightly away. But wait for umpire signal. Is it going to be a 6? 2 in 2. Score moves to 46. Kalpesh doing the job in the later half of the inning with black gloves in his house, bringing some luck as his friend is watching. Two in 2. Another short pitch, zero chance of a catch. Is it going to be caught? I don't think anyone is close to the ball. Meanwhile, Kalpesh is running for the second. Good throw, but we have to wait for umpire signal. And that's the fall of the wicket. A suicidal run taken by Kalpesh, but that is a need of the. He has played a small cameo. 260 from his bat. Team total moves to 47 for the loss of 5 wickets. Kalpesh played a small cameo of 25 runs to put a decent total that is going to be at the end of the inning. So new man in is none other than Bodheboy Sudin. Let's see whether he can finally gain some confidence and give some treat by batting decently. Ball takes the leading edge, chance of a catch. Keeper under the ball, takes it safely. Second wicket for Saish, 2 sixes and 2 wickets in this over so far. DJ. So meanwhile, it's afternoon time, it's a lunch time for DJ, so we'll be back in a while. Thank you, DJ. New man is Kamlesh Naik, popularly known as Sanam Salgaonkar of Pansai. So let's see whether he can live up to that
name that has been given to him. Saish Sawant to deliver. Full pitch delivery, big swing. There's appeal. There's appeal from the keeper, just in the anticipation to disguise the umpire. But let me tell you, the man who is doing the duty as a main umpire is very shrewd. Not out is the signal from main umpire Sanjay Naik. Final delivery of the inning. Short pitch delivery, and this is going to be called a no ball as it has landed outside the pitching area. Meanwhile, a single and a no ball. Total 2 runs to the scorecard. Score moves to 49 and a free hit for the batsman who is at the striking end. Vedant. Can Vedant make it big? A swing and a miss. Oh my dear. Wide is the signal from the umpire, so free hit will continue. 50 up for Wadlamore strikers. So from nowhere, they have reached at the run rate of 10 runs per over. Full pitch delivery, wonderful strike. Oh my dear. What a way to finish the inning. Free hit has been taken to the maximum advantage. Sixer takes the team total to 56. Sai 11 in a hunt to open the account at the points table. 57 runs required for Sai 11 to win this match. Meanwhile, the toss was taken between Pine Talk Strikers and Action Boys, in which Pine Talk Strikers have won the toss and have invited Action Boys to bat first. Let's see what is going to happen. Meanwhile, requesting the fielding team to kindly double up because more matches to be played in a day. And if there is a deficit of matches, then tomorrow their deficit will be taken care. And a lot more matches will be played tomorrow. So we are not going to waste any time. Requesting the fielding team, kindly shorten your meeting and come and take your charge, as more matches to be played for the day. This is the 7th match in action, and more 5 matches to be completed in a day. So requesting the fielding team to kindly set your field as quick as possible. Even the openers to kindly double up. Let's keep the decency of this gentleman's game. Let's keep the spirit high. Let's show the sportsmanship spirit and come battle it out and win the match as per your courage. So now the run chase is going to be on. Sai 11 requires exactly 57 runs to win. Let's see what happens in the run chase. Over to Sanket Gavkar with the further updates in Hindi. चोट पयस वचनाका नेक्स्ट मॅच मागेली थंय मातशी गेट टुगेदर जाय तें कॉम्पीट ऑन करपाक घालता सांग तू उलय आपणे घालता काडटा मरे काडटा रजकान चूक घेतलो पळय बेस्ट डिसिजन बॅट्समॅन कोण हा बॅट्समॅन साईश नायक मरे आणि दुसरा असतो उद्धव करमली हय साईश नायक उद्धव करमली बॉलर सूरज हय तेणे उद्धव नाव दिलें दिसता उद्धव दिला रेकमेंड केल्लें 57 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और तो बल्लेबाज तैयार साइश नाइक और उद्धव पहली गेंद पर बढ़िया संपर्क बढ़िया प्रहार और चौके के लिए जाती हुई गेंद पावर प्ले यहां पर चल रहा है और इसी का फायदा उठाकर पहली गेंद पर स्ट्राइक किया और चौका जीत गया। बहुत ही बड़ा लक्ष्य है 57 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। शुरुआत काफी बढ़िया मिली है, पहली गेंद पर लगा है चौका।
सूरज परब बॉलिंग मार्ग पर है, पहली गेंद पर लगा चौका। इस बार वहां पर फील्डर जरूर है और आसानी से ये कैच क्लियर नहीं कर सके और दूसरा चौका अर्जित करने की कोशिश में गवा बेटा अपना विकेट और साइश नाइक एक चौका लगाया था, हालांकि लेकिन दूसरी गेंद पर आउट होकर वापस और पहला झटका लगता हुआ 4 के स्कोर पर। सही 11 को ये मैच जीतने के लिए 57 रन चाहिए, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी नहीं। दूसरी गेंद पर लगा झटका, साइश नाइक आउट होकर वापस। आई रिक्वेस्ट बैट्समैन నాకు రిక్వెస్ట్ कि जाते थे बिगिन किसी जो टाइम जो सुद्धा वेस्ट करायची नाही। साइश सावंत नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। एक बड़ा लक्ष्य 57 रनों का लक्ष्य और पीछा करने उतरी टीम ने पहला यहां पर झटका लगा। साई 11 को ये मैच जीतने के लिए 2 अंक अर्जित करने के लिए कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। एक रन से यहां पर स्ट्राइक जो है दी है अपने पार्टनर को और इस एक रन को जोड़कर टोटल स्कोर हुआ है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार आगे आए और गेंद जाकर लगी सीधी नॉन स्ट्राइकर को, लेकिन उसी बीच एक रन दौड़कर किया है यहां पर कंप्लीट। बड़ा यहां पर हिट लगाने की कोशिश, नीचे रही गेंद, उसी की बदौलत एक डॉट गेंद और जब जब डॉट गेंद यहां पर होगी तो प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि 5 ही ओवर का एक खेल और इस बार यहां पर लगी है एज और दूसरा झटका यहां पर जरूर लगेगा और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ सूरज पर अब स्ट्राइक करते हुए अपने इस ओवर में, और इसी के साथ ये पहला ओवर यहां पर समाप्त होते हुए केवल 6 ही रन बना पाए अपने इस पहले ओवर में और 2 महत्वपूर्ण विकेट को साई 11 ने और पहले ही ओवर के समाप्ति के बाद अच्छे लगे बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। बॉलर शिवम सांगेकर दूसरी ओवर, पहली ओवर काफी बढ़िया रही सूरज परब की, केवल 6 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट पहले ओवर में लेने में कामयाबी और नया बल्लेबाज जो उतरा है बैटिंग की कमान संभालने के लिए सनील सावंत कप्तान। ये बढ़िया संपर्क, ऐसे ही शॉटों की यहां पर दरकार और सही मौके पर ये शॉट लगता हुआ उद्धव के बॉल से और ये शॉट जो है काफी कॉन्फिडेंस यहां पर दिलाएगा। ऐसे की तरह के शॉट्स और चाहे इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच के नजदीक जाने के लिए, तो ये शुरुआत इस ओवर की बढ़िया रही है। दूसरी ओवर शिवम की पहली गेंद पर लगा है छक्का। इस बार बढ़िया फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में, अगर थोड़ी सी मिस फील्ड होती रन जरूर मिलता, लेकिन डॉट गेंद पिछली गेंद पर लगा छक्का जरूर, लेकिन इस बार ये बढ़िया वापसी और उतनी अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं
हालांकि हवा में बहुत देर थी, रनआउट का यहाँ पर संभावना, लेकिन पहुंचे अन वक्त पर एक रिस्की रन था। हालांकि हवा में भी रही थी, कीपर से थोड़ी दूर रही, उसके बाद रनआउट का चांस था, लेकिन वो भी यहाँ पर मिस होते हुए, तो ये रिस्की रन था। इस एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 13 रन। तो एक बड़ा लक्ष्य 57 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चौको छक्के की जरूरत यहाँ पर, लेकिन जो विकेट यहाँ पर गिरे उसी की बदौलत खामोश अब तक है बैट्समैन। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन यहां से तो बढ़िया लग रही थी, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑप्शन से दूर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ टोटल में 14 रन इस एक रन को जोड़कर हुए कुल, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर खोए हैं साई 11 ने। इस बार बढ़िया यहां पर सटीक लाइन और लेंथ के साथ अपील बढ़िया, लेकिन एम्पायर ने यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो अपील में उत्साह ज्यादा। जो प्रेशर बना है उस प्रेशर को यहां पर बढ़ाना चाहते हैं कप्तान, पर पूरी जिम्मेदारी इस मैच को जिताने की सुनील सावंत कप्तान है। इस बार संपर्क चले, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी यहां पर मिसफील्ड, और ये मिसफील्ड कितनी महंगी पड़ेगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहां पर एफर्ट अच्छा लगाया था, बॉल तक पहुंचे थे फील्डर, लेकिन ऐन वक्त पर ये कैच छूटी और एक मौका यहां पर मिला है सुनील को। संपर्क जो था उतना अच्छा नहीं कि 6 रन जाए, वहां पर फील्डर जो मौजूद था, हाथ में गई थी गेंद जरूर, लेकिन ये कैच ड्रॉप। इस बार यहां पर आक्रामक शॉट लगाया है, लंगन का खिलाड़ी मौजूद, केवल एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, और इस एक रन को छोड़कर कुल हुआ स्कोर 16 रन। उसी के साथ दूसरे ओवर की यहां पर समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 16, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरी ओवर की ये शुरुआत, और पहली गेंद दिशा से भटके वाइड का इशारा आता हुआ। बॉलर नेम प्लीज। वेदांत है तीसरी ओवर की पहली शुरुआत, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, और वही गेंद उसी गलती को यहां पर दोहराते हुए पिछली गेंद ऑप्शन से दूर रखने की कोशिश जरूर, लेकिन इतनी दूर रही कि वाइड का इशारा मिला, और फिर एक बार उसी गलती को यहां पर दोहराते हुए और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ वाइड के रूप में। अभी भी 18 लीगल डिलीवरीज बाकी इस मैच में। इस बार संपर्क बहुत ही बढ़िया, और विकेट यहां पर मिलती हुई वापस यहां पर जाना होगा उद्धव को, और तीसरा झटका लगता हुआ इस गेंद पर। पहली गेंद थी, हालांकि 2 गेंद वाइड थी, लेकिन इस बार अच्छी गेंद और उतनी अच्छी कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर। तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ साई 11 को। अठारह रन लग चुके हैं बोर्ड पर, और 57 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने थे, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी नहीं। 3 विकेट अब तक वापस जा चुके हैं, और मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है लक्ष्य। हालांकि नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन जो विकेट यहां पर गिरे, जो स्कोर यहां पर अब तक बनना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाई है साई 11। उसी की बदौलत थोड़े बैकफुट पर है, लेकिन कप्तान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी मौजूद सुनील नया बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर।
हालांकि शॉट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। स्कल की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, डीप में मौजूद था। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नए बल्लेबाज उतरे हैं सुनील। यहाँ पर 2-3 चौके छक्के अगर लगते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद जो है जग सकती है जीतने की। वेदांत बढ़िया यहाँ पर कार्य करते हुए अपने टीम के लिए, और ये एज लगी है। कीपर का बहुत ही प्रयास, लेकिन कैच को यहाँ पर पकड़ नहीं पाया। ऐसे कैच जो चिपकते हैं, हालांकि प्रयास गौरीश ने बहुत ही बढ़िया किया था, हाथ गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन गेंद जो है आई नहीं। और एक मौका यहाँ पर मिला है सुनील को। देखते हैं इस दूसरा मौका, एक कैच पहले छूटी थी और दूसरा मौका मिला है सुनील को। ये बढ़िया संपर्क, और ये गेंद जरूर लगता है कि जाएगी सीमा रेखा के ऊपर से। तो दो जो मौके मिले हैं उस मौके का फायदा कितना उठाते हैं। एक छक्का ऑलरेडी लगा चुके हैं सुनील। 25 लग चुके हैं बोर्ड पर। 57 रन चाहिए थे इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर पटकी हुई गेंद, पिछली गेंद पर जरूर छक्का लगा, लेकिन इस बार वापसी यहाँ पर विधान के 25 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। 3 महत्वपूर्ण विकेट अब तक खोए हैं, और बड़ा लक्ष्य उसका पीछा जब वो करने उतरी थी। प्रेशर था, बड़े हिट लगाने की कोशिश की थी जो ओपनर बल्लेबाज थे, लेकिन आउट होकर वापस जाना पड़ा उन्हें। ये यहाँ पर खतरनाक गेंद, और यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं सुनील। उसी की बदौलत ये रन यहाँ पर जरूर था, लेकिन रन नहीं लिया। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये नो बॉल और फ्री हिट, इस फ्री हिट का देखेंगे कि कितना फायदा यहाँ पर उठाते हैं सुनील। पटकी हुई गेंद, हालांकि शॉट बहुत ही बढ़िया रहा है। फील्डर वहां पर मौजूद, एक मौका था हाथ खोलने का, एक बड़ा हिट लगाने का, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। एक ही रन बना पाए, और इसी के साथ 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त। 27 लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। अब 12 गेंदें बाकी इस 12 गेंदों में 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि थोड़ा सा कठिन लक्ष्य है, लेकिन दामन की नहीं। अगर 3-4 छक्के लगते हैं तो आसानी से ये मैच तक पहुंच सकते हैं। तो 27 रन लग चुके बोर्ड पर, और 30 रन यहाँ पर बनाने होंगे। और सुनील ने पिछली ओवर में बढ़िया हाथ दिखाया, एक छक्का लगाया। और पहली गेंद पर डाइगो का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत करते हुए सलील, बहुत ही बढ़िया संपर्क, छक्का अर्जित किया। उसी तरीके के यहाँ पर शॉट की आवश्यकता दरकार, और पहली गेंद पर जो छक्का आया ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिलाएगा सलील को। 33 पर पहुंचा स्कोर, और 24 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो केवल 4 ही छक्के दूर अपनी जीत से। तो क्या इस 4 छक्कों को यहाँ पर लगाकर अपनी टीम को जीत यहाँ पर दिला पाएंगे या नहीं। डाइगो की पहली गेंद, और संपर्क इतना अच्छा कि पूरी रन देकर गई 6। दूसरी गेंद आती हुई डाइगो की। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोवर ऑन थी, जड़ में डाली हुई गेंद, एक ही रन मिलेगा और ऑफ स्ट्राइक होंगे। अब सुनील शुरुआत अच्छी की है इस ओवर की। 34 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर, और 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन छोटे कद के सुनील मौजूद, क्या देखेंगे कितना बड़ा धमाका इस गेंद पर करते हैं। ये यहां पर शॉट काफी बढ़िया, और
इंतजार रहेगा अंपायर का डिसीजन और एक छक्का आता हुआ बहुत ही जरूरी था इस गेंद पर एक बाउंड्री आए क्योंकि लक्ष्य जो है बड़ा लक्ष्य और पहली गेंद पर सलीम ने छक्का लगाया एक रन यहां पर दिया और नो बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का मुश्किल है यहां पर ओके 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 नो बॉल नहीं है तो साइड यहां पर चेंज की है बॉलर ने इस बार चढ़ में डाली हुई गेंद फील्डर सर्कल में मौजूद लेकिन जब तक कि फील्ड यहां पर फील्डर यहां फील्ड करता एक रन किया है दौड़कर कंप्लीट जी नहीं आउट यहां पर कैच और एक झटका लगता हुआ पिछली गेंद पर बढ़िया संपर्क बढ़िया शॉट लगाई थी छक्का लगाया था लेकिन इस बार कैच होकर आउट कैच आउट और जो मुश्किल है यहां पर साइलेंस के लिए और बढ़ती हुई कुल स्कोर है 40 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए साई इलेवेंस को चौथा ओवर है प्रगति पर इस बार बढ़िया गेंद कीपर जब तक जाकर फील्ड करता एक रन किया है दौड़कर कंप्लीट और 16 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए 7 गेंदें इस इनिंग की बाकी आखिरी गेंद चौथी ओवर की ये बढ़िया संपर्क और एक छक्का आता हुआ सलील के बल्ले से और आखिरी गेंद पर आता हुआ बहुत ही बढ़िया 16 रन चाहिए थे और इस अच्छे रन को जोड़कर अब आखिरी ओवर में केवल 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए तो ये ओवर काफी बढ़िया रही 3 छक्के इस ओवर में आए 30 रन चाहिए थे लेकिन जो जिस तरह की बैटिंग इस ओवर में की 3 छक्के आए 20 रन कुल आए उसी की बदौलत अब आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 10 रन बॉलिंग सुधीर के ऊपर जिम्मा है इस आखिरी ओवर का 10 रन चाहिए और सुनील सावंत ने अब तक बढ़िया प्रदर्शन इस मैच में रहा है गेंद मैच को अपनी ओर खींच कर लाए हैं सुनील सफल होकर यहां पर शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बढ़िया लाइन और लेन के साथ जब जब डॉट गेंद भी होंगी इस आखिरी ओवर में तो प्रेशर यहां पर जरूर बढ़ेगा क्योंकि 10 रन बनाने होंगे 10 रन के लिए यहां पर बाउंड्री की दरकार तो बाउंड्री जब आएगी तब ये प्रेशर जो है कम हो जाएगा बल्लेबाजों पर लेकिन बढ़िया यहां पर बॉलिंग की शुरुआत पहली गेंद पैरों पर गेंद थी कोई मौका नहीं यहां पर हिट लगाने के लिए बैट्समैन के पास और इस बार क्लीन बोल्ड वापस जाना होगा बल्लेबाज को तो आखिरी ओवर तक मैच को जरूर ले आए लेकिन इस आखिरी ओवर में बहुत कुछ घटता हुआ पहली डिलीवरी डॉट उसके बाद क्लीन बोल्ड नया बैट्समैन नया बल्लेबाज अब उतरेगा तो सुनील सभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है तो बल्लेबाज को केवल एक रन यहां पर निकाल कर स्ट्राइक देनी चाहिए थी लेकिन यहां पर जो बल्लेबाज नया बल्लेबाज आया था क्लीन बॉल होकर वापस अभी भी 4 गेंदें बाकी और 4 गेंदों में चाहिए रन 10
मुन्ना न्यू नए बल्लेबाज उतरे क्रीज पर 4 गेंदे 10 रन। और यहाँ पर तीसरी गेंद पर दूसरा झटका देते हुए तो सुदीन की कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है और 3 गेंदों में से 2 गेंदें क्लीन बोल्ड यहाँ पर की है दोनों ही बल्लेबाजों को। तो पिछला मैच जो रहा था वो भी बहुत ही टफ रहा था साई 11 के लिए, तो नजदीक पहुंचे थे उस वक्त भी, लेकिन अंत में जीत हासिल नहीं कर पाए। ये मैच भी यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही आसान था कि आखिरी गेंद और थी और इस आखिरी ओवर में केवल 10 ही रन बनाने थे, लेकिन सुदीन की 4 तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। पहली गेंद यहाँ पर डॉट रही, उसके बाद 2 गेंदों में लगातार 2 बल्लेबाजों को वापस भेजा क्लीन बोल्ड करके। अभी भी यहाँ पर 3 गेंदें बाकी और इन 3 गेंदों में रन बनाने होंगे 10। सनील जो इनफॉर्म बैट्समैन जिन्होंने इस मैच को अपनी ओर खींचा, 30 रन चाहिए थे 12 गेंदों में, लेकिन पिछले ओवर में जो 3 छक्के आए उसी की बदौलत 20 रन बन चुके थे और लास्ट ओवर में केवल 10 रन बनाने थे। लेकिन ऐसे 10 रन को बनाने की यहाँ पर कोशिश में अपने 2 बैट्समैन यहाँ पर वापस अब जाने पड़े और तेजस नए बल्लेबाज पिछले मैच में एक बढ़िया छक्का लगाया था, तो क्या इस गेंद पर एक छक्का लगाकर इस मैच को अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिलेगी? तो निगाहें रहेगी सनील नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। ये सारा जो घट रहा है उस वक्त सिर्फ देख सकते हैं अगली गेंद। और यहां पर संपर्क जरूर हुआ है, लेकिन कहां तक जाएगी गेंद और एक विकेट का पतन यहां पर होते हुए और हैट्रिक यहां पर मिली है सुदीन को। 3 गेंदों में 3 विकेट, हैट्रिक। बहुत ही बधाई इस हैट्रिक के लिए। और ये सुदीन का बर्थडे है और बर्थडे के दिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन, बिल्कुल ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया गिफ्ट अपने टीम के लिए और पहली हैट्रिक आज के दिन की सुदीन के नाम। पिछले मैच में जरूर महंगे रहे थे, लेकिन इस बार इस निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर थी। कप्तान ने भरोसा दिखाया और बॉलिंग मार्ग पर बुलाया सुदीन को। 10 रन क्रिकेट में तो आसानी से बन सकते थे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी रही, पहली गेंद डॉट, उसके बाद 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर हैट्रिक अपने नाम की और साई 11 को बैकफुट पर ढकेला। अब 10 रन चाहिए 2 गेंदों में और मंतेश नए बल्लेबाज, दोनों ही यहाँ पर बड़े हिट, बाउंड्री की दरकार। सारा लेखा जोखा, सारा दारोमदार इस गेंद पर है निर्भर। क्या 2 गेंदों में ये 10 रन बना पाएंगे? कप्तान यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर इस ड्रामे को सिर्फ देखते हुए आखिरी ओवर में शॉट जरूर लगाई है और ये लगभग मैच अपने कब्जे में करते हुए, लेकिन क्रिकेट है, अगर यहाँ पर नो बॉल या वाइड बॉल नहीं होता है तो छक्का भी लगता है तो ये मैच आसानी से अपने नाम कर देंगे वॉरियर्स। लेकिन आखिरी गेंद पर 9 रन की यहाँ पर दरकार सुदीन की। ये बहुत ही अंडर प्रेशर ओवर, बढ़िया, तारीफ जितनी की जाए कम। 10 रन को डिफेंड करना और ये यहाँ पर बढ़िया गेंद और इसी के साथ ये मैच जीतकर 2 अंक के अपने नाम। बहुत ही बधाई, पहले ट्रिक रही है सुदीन के नाम। और आगे का हाल अंग्रेजी में सुनाने के लिए आपके सामने होंगे हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर सर सागर गोसावी। So again, it is a very tough call for the jury to decide the man of the match, and with a lot of many thought
two names were flashing it out to register their name on the trophy. One was a cameo by Kalpesh. He scored 25 runs from 11 delivery that he has faced and helped his team to boost the total to 50 runs mark. And in the end, it's a birthday boy who has defended 10 runs for his team. So after giving a must start, the jury have decided to give a birthday gift to the birthday boy, Sudin, man of the match, for defending those 10 runs in the final over. Requesting Shri Anil Prabhudesai to kindly come and do the honors. Kindly give man of the match trophy to the birthday boy. Sudin, kindly come of Wadlemore Strikers. Come and collect your man of the match trophy on your birthday for your wonderful performance to defend 10 runs in the final over. Action Boys आणि Pintock. So next match is going to be played between Pintock Strikers versus Action Boys. Both the teams are at 4 points at the points table and they are playing in the third round of the league match. So both are the table tables at the moment. So let's see who tops the table furthermore. It's Pintock Strikers have decided to bowl first after winning the toss. Even the two openers out in the flesh, Divesh and Rajat. Captain Rajat with his trusted partner Divesh, the magical boy for the day. 2 man of the match trophies for him for being the most valuable player for his team. So let's see whether he can continue with the same form. Here we go with the first delivery in this power play over. Third round match is on. Sanjay. Short pitch delivery gets a treatment. Flicks the ball in the vacant area. That's a boundary. Requesting the guest at the days, so we have got our desk. So please do the honors at the presentation area. A beautiful man of the match trophy. But boy, it's your time to grab your hands on the beautiful trophy. Man of the match. First ball disappears towards the square leg for a boundary. Power play is on and Action Boys are in action. Strong team so far if you look at the performance rather than names. Divesh, the striker. Full pitch delivery, ball bounces slightly above the head of the wicket keeper, giving a chance for the batsman to exchange the ends. Buys is the signal from the umpire. A single takes the total to 5. So wonderful matches are witnessed. Every match is a hot sizzling masala for the spectators. Every match they say, oh my dear, what was looking to be a catch ball just dropping in front of Bhavan Devidas. He is also a very good fielder. Is not going to miss those half chances, but could not judge it properly. And again a single for Rajat. This single takes the team total to 6. Meanwhile, as drives the ball goes towards the point region. No harm done. Meanwhile, asking for a single but equally well backed up by Bhavan Devidas. So it's finally a dot ball delivered by Sanjay Naik. Divesh on the striking end. Short pitch delivered again, wanted to cut the ball, but look at the pace that have been generated by Sanjay Naik. Ball quickly into the hands of the keeper. So this is the strength and the stamina of Sanjay Naik. Another short pitch delivery gets a treatment. Divesh brings the sweetest part of the bat right in front of the ball. A ball goes a bounce across the fence, and that's up. I think umpire Sanjay Naik is confirming whether is it a boundary. Yes, it is a boundary. So 4 runs takes the total for the to 10. So good start for Action Boys. 10 runs per over. 4 more overs to be bowled. Giving respect for the good deliveries. Hitting the wrong ball out of the ground. Wonderful batting strategy. Wonderful application of mind.
playing at the run rate of 10 runs per over. And meanwhile, the DJ has arrived with the Swedish tracks that will be played during the match. So requesting the fielding side to kindly double up, as let's not waste the time. And quickly the second over will be bowled by Bhavan Devidas. So setting his field as 5 fielders have been permitted to be set outside the 30-yard circle. Meanwhile, Rajat is the 360 dimension player on this ground. That is the headache for the fielding captain, as where to set those 5 fielders. Meanwhile, they have settled with the fielding setup, and here we go with the second over. First delivery to Rajat Sawant. Switch hit is that time. The ball taking the leading edge travel towards the third man region. A single that brings Devesh onto the striking end. So far, Devesh has been the main architect for the wins in these 2 matches, in these 2 stages. Let's see whether this third match is going to be good for him. The time will tell us. Meanwhile, Devesh on the striking end, looking for the vacant areas to strike. Again a good delivery, pacey delivery. Bhavan Devidas showing his talent, showing for what he has been taken by his team. A Yorker, wildish Yorker, which is most difficult for the batsman to strike, delivers a dot delivery. And now the change in pace. This is what Bhavan is known for, mixing up his deliveries, creating a lot of doubt in the minds of the batsmen. As the captain also watches from non-strikers, and both the batsmen are having a thought as what is going to come. Full pitch delivery, wonderful strike. Fielder under the ball. Is it going to be caught? Sanjay Naik doesn't miss, although Sun was troubling him for a short time, but kept his eye, kept his cool, and received a catch. Devesh back to the pavilion. First wicket goes down. DJ. Newman in his Pradul plays watchfully. Prasanna, I beg your pardon. Pradul is his brother. Prasanna, the big guy, younger brother, takes a single, gives strike to his captain Rajat Sawant. First inning is on. Bhavan Devidas bowling in the right areas as per the guidance of his captain. So after setting the players at the proper position, here we go with the next delivery. Successful over so far. Another change in pace, wonderful strike over the extra cover. Elegance inside out strike. We have to wait for umpire signal. After confirmation, both the hands goes above the head of Suraj Naik, signaling this is a big 6. A sixer to end over number 2. 18 for the loss of 1 wicket. DJ. Meanwhile, Prasanna, playing watchful, knows that his captain is striking the ball very beautifully. Takes a single, gives strike to Rajat Sawant. As Rajat is a 360 dimension player in this Kakoda Premier League,
can hit the ball at every part of the ground. Let's see what he's going to do now. Swings the bat as hard as possible. No connection. Makes the ball to travel safely to the keeper. Aditya Naik, advocate by profession, knows how to win the cases. And now in this case, delivering at the right position, at the right spot. Switch it. What a connection. Even there was a fielder intact, but look at the hit. Meanwhile, Rajat have hurt himself. Hope the injury is not so serious. Otherwise, definitely there will be a concern for the batting team. Meanwhile, boundary takes the team total to 23. DJ. Thank you, DJ. DJ is playing the track Bug Shira, maybe for that bull who is on the ground at the moment. Hope the bull has heard the song and he has increased his pace to walk out of the boundary rope. Meanwhile, looks to be Rajat Sawant is on to his feet. He is a strong character. He is not going to give the things so easily. And he is the fighter who will fight till the end to see his team at the proper position. So with that self-confidence, Rajat quickly onto his feet, taking his willow in his hand and will be at the striker's end. So let's continue this beautiful game of cricket. Strong characters make the team strong is the saying, and here we are watching that strong character right in front of our eyes at the striker's end. Captain leading from the front, Rajat Sawant on the striking end. Again plays watchfully, takes a single, have respected the better deliveries. Are they running for the second? Denied by Prasan. Good strong throw. Equally backed up from the fielder at the covers. Just a single takes the team total to 24. Third over in progress, 24 on the board. And now maybe that injury must have shifted the gear, made Prasan to shift the gears. Good swing, no connection. Ball travels slowly to the keeper. No chance of a run. Aditya bowling tight line and length. Not a bad delivery that was hit for a boundary, but a switch hit has made it rather possible. Low full toss. Look at the strength of Prasan. Big guy, short arm jack right from the middle of the bat, and the ball disappears into the bushes outside the cow corner region. Big six. That sixer takes the team total to exactly 30. So at the moment, action boys are going at the healthy run rate of 10 runs per over. So now let's see who is going to bowl the fourth over. It's none other than Ganesh Patil, the owner of Anushka brand.
Switch hit is the attempt, not getting the proper connection. Even the fielder has been plotted towards the deep point region to stop that switch hit. And a single to start the over. Score moves to 31. Prasann on the striking end. So far, Prasann have hit a big six. Let's see what he can do now. Another low full toss gets the same treatment. A good try from the fielder, but could not stop the ball from crossing above his head. And that six takes the team total to 37. Low full tosses are the trouble that have been asked by the bowler. Getting troubled, getting trailed by the big hit. Good strike from Prasann. The two delivered that he have faced, 2 sixes. Had started his inning cautiously, but now hitting the ball quite comfortably. Ganesh. Quicker delivery, ball takes the edge, goes above the wicket-keeper's head. Good throw at the non-striker's end, but Prasann is quick enough. Takes a single. That single takes the team total to 38. And a good thing for Action Boys is the captain is on striking end. Let's see whether it is going to be a decent over from here on. Raja strikes. What a strike! Ball has been hit miles in the air. Two fielders under the ball. Sanjay Naik takes the catch. So we have to wait. This is a wonderful catch taken by a promising all-rounder. Keeping his balance, keeping his eyes on the ball, and have taken a beautiful catch, couple of inches inside the boundary rope. Fall off the second wicket. Captain back to the pavilion. Oh my dear, look at that strike. The person was taken by Action Boys, where most of the teams have put their flag down, and Action Boys have kept their flag high for this guy, Chandresh Desai, at the moment, striking the ball. No need to even judge the length or watch a first ball that he has faced. Boom! And that's a big six. Team total moves to 44. 44 on the card. Ganesh Patil getting the heat in the hot sun. Another connection. Couple of bounces to the fielder. Sagar Sawant collects the ball. Meanwhile, a single to conclude over number 4. After completion of 4, score is 45 for the loss of 2 wickets. TJ. So after completion of 4, 44, no? 45 on the board. 5th over in progress. First ball, Chandresh aiming for the second but won't be able to get it. Meanwhile, a single that takes the team total to 46. And that jersey number 45 is the favorite one of Chandresh Desai. So let's see whether he can get some confidence as he has taken the strike at the score of 45. Now the team score moves to 46. Oh my dear, there's a chance or a catch. Sarthak, bowler himself, take the catch. Oh my dear, he drops again. Catches have been dropped.
So calling out the attention, anyone requesting the captains of Shanai Builders, Lokmanya Warriors to kindly come for toss. Shanai Builders and Lokmanya Warriors. Oh my dear, what a strike! What a strike! The lazy giant, the sleeping giant has been awake. And that is a wonderful piece of strike. Ball goes straight down the ground, teasing every player. Watch me sail past. And a sixer to be written on the scorecard. With that big strike, 54 is on the cards. Action boys are back in action. Another strike. Result is going to be same. Consecutive sixes. Even this is the further right at the podium. Big six telling Amay to watch that ball closely and write 6 on it. So sixer takes the total to 60. Action boys going the to be the highest scorer now. 60 so far on the board. Another 6 will take them as the highest total for the day. Swing and a miss. We have to wait for umpire. Signal down the leg stump. Stretch of arms. Confirms that this is a wide. Score moves to 61. Another good strike along the carpet, straight down the ground. Are they going for the second? Chandresh wanted 2, but a strong throw, slight fumble, and that makes second run possible. Meanwhile, a wicket taken by Sarthak on the final delivery of the inning. Score is 62. Score is 63. There's a correction by the scorer. Amay Naik doing the job. 64 runs required for Pintock Warriors. Meanwhile, the toss is to be taken between Lokmanya Warriors and Shanai Builders. So let's see what happens in the second innings. Meanwhile, requesting the match referee Sunay Naik to kindly take the toss, as both the captains are here waiting for the coin to spin. Thank you, DJ. Requesting both the captains to kindly select the match ball. Lokman and Shanai Builders, please select the match ball. Lokman has won the toss and they have decided to bowl first. Looks to be Sunil Sawant winning every toss, and every time he wins the toss, definitely it's the bowling option that they decide. So let's see what is going to happen in the run chase. Over to Sanket Gavkar with his sweet voice in national language.
एक्शन बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन जोड़े और 64 रन का यहाँ पर टारगेट रखा है बैंकॉक स्ट्राइकर्स के लिए। तो देखेंगे इस रन चेज को किस तरह से आगे बढ़ते हैं और बड़ा लक्ष्य 64 रन 30 गेंदों में ये बनाने होंगे लगभग। इस मैच को जीतने के लिए एक बढ़िया पारी, एक आक्रामक पारी यहाँ पर खेलनी पड़ेगी। संजय और प्रदुल दोनों ही बल्लेबाज तैयार है। संजय फॉर्म में है, देखेंगे कि ये रनचेज जो है किस तरह से आगे बढ़ती है। पहली गेंद सटीक लाइन वाले के साथ, तो एक बड़ा बैटल चंद्रेश और संजय के बीच। दोनों ही तगड़े ऑलराउंडर क्रिकेटर, क्रिकेट में बहुत ही नाम कमाया और यहाँ पर दोनों के बीच बैटल है, लेकिन पहला बैटल पहली गेंद जो है सटीक लाइन वाले के साथ, कोई मौका नहीं संजय के पास। इस बार फिर एक बार यहाँ पर बढ़िया गेंद है, टारगेट बहुत ही बढ़िया सेट किया है और जो कॉन्फिडेंस बॉलर को मिलता है जब एक बड़ा टारगेट होता है, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर चंद्रेश अपनी बॉलिंग अपनी डिलीवरी से यहाँ पर डिलीवर करते हुए, हालांकि संजय एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा ऑलराउंडर, बढ़िया बल्लेबाज, लेकिन दो गेंदे सटीक लाने के साथ। इस बार कोई मौका नहीं, पावर प्ले यहाँ पर और तीनों गेंदे डॉट गेंदे। संजू भैया 6 मार नीचे तो इस बार गेंद दीप मौजूद लगन पर, जब तक कि फील्ड करता हुआ एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट और पहला रन यहाँ पर लगता हुआ बोर्ड पर। संजू भैया 6 मार आम्यामध्ये तुषार बॉल 64 रनों की यहाँ पर दरकार इस मैच को जीतने के लिए और पहली ओवर बहुत ही बढ़िया चंद्रेश, 4 गेंदें अब तक हो चुकी है और केवल एक ही रन इन्हें 4 ओवर में 4 गेंदों में दिए है और स्ट्राइक पर होंगे प्रदुल पहली बार इस मैच में। थोड़ी सी नीचे रही गेंद, कोई मौका नहीं, सारा यहाँ पर एक्सप्रेस झोंकते हुए चंद्रेश जानते हैं इस मैच का महत्व, 2 अंकों का महत्व और लड़ाई यहाँ पर करते हुए इन 2 अंकों के लिए और सही शुरुआत, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल सेट करते हुए पहले ओवर में केवल अब तक एक ही रन। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गति उतनी अच्छी कि ये यहाँ पर पहली ओवर की समाप्ति होती हुई केवल एक ही रन और ये बढ़िया ओवर 64 रनों का ये टारगेट था, लेकिन सटीक का शुरुआत, एक रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के डीजे। एक्स्ट्रा एक्शन बॉयज के पास बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डिपार्टमेंट, जो अब आज के पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया अब तक सभी बॉलरों का परफॉर्मेंस रहा और दीप अगला बॉलर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गति, लेकिन थोड़ी सी अफसर से दूर रही गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ दीप की पहली गेंद पिछली ओवर रही थी चंद्रेश की, केवल एक ही रन इस ओवर में 64 रनों का ये टारगेट और इसका पीछा करने उतरे हैं 2 बल्लेबाज संजय और प्रदुल। इस बार बढ़िया गेंद, कोई यहाँ पर रूम नहीं, कोई मौका नहीं, हाथ खुलने का बांध के रखा है दीप, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए।
इस बार कहाँ जाती है गेंद, सिर्फ दर्शक बन सकते हैं फील्डर, और ये बहुत ही लंबा छक्का सीधी कमेंट्री बॉक्स की तरफ, और इस छक्के की दरकार इंतजार था, पहली गेंद से प्रयास चल रहा था लेकिन इस बार मिली है कामयाबी। तो क्रिकेट मैच है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि पहली ओवर केवल 1 रन की आई थी लेकिन इस ओवर में ये छक्का जो है कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप करेगा संजय का। फिर एक बार हवा में गेंद डीप बॉल के पीछे, और डीप यहाँ पर छोड़ने वाले में से नहीं, और संजय जो की विकेट थी उस विकेट को वापस भेजते हुए पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ संजय के रूप में, और स्कोर 8 के स्कोर पर लगता हुआ पहला झटका डीजे। गणेश नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। पहली गेंद पर बड़ा स्विच, बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन डीप। यहाँ पर जानते हैं हर एक बल्लेबाज को कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस, और उसी हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग करते हुए डॉट गेंद, जो बड़ा लक्ष्य प्रेशर था पहली गेंद से, वही प्रेशर बरकरार रखते हुए बॉलर्स आ गया। एक कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर रन आउट होने की संभावना, रन लेना चाहते थे तदुल लेकिन मना किया। बहुत देर से है नॉन स्ट्राइक के एंड पर धूप की यहाँ पर जरूर तारीफ करनी होगी। जो इनफॉर्म बैट्समैन संजय, उसको वापस यहाँ पर भेजने में कामयाबी। हालांकि एक छक्का जरूर लगा लेकिन इसके बाद वापस भेजा संजय को। पटकी हुई गेंद और कीपर के लिए आसान काम, और दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ दीप पूरे फॉर्म, पूरे जोश में दूसरा विकेट इस ओवर का दीप का। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अपनी टीम के लिए आज रहा है दीप और बाकी बॉलरों का। इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 8 रन लगे बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही बढ़िया गेंद, दोनों भाइयों के बीच ये टक्कर, और अच्छा शॉट फजल का एक रन यहाँ पर दौड़कर किया है कंप्लीट। ओपनिंग की थी, ओपन किया था लेकिन जो प्रेशर था पहली गेंद से कि 64 रन बनाने थे, तो उसी का यहाँ पर उसी प्रेशर की वजह से 2 विकेट महत्वपूर्ण खोई है और बैकफुट हो रहा है अभी भी टीम। इस बार नहीं लेकिन लेवन का खिलाड़ी मौजूद है, जब तक कि फील्ड करता है, एक रन किया है दौड़कर कंप्लीट, और इस एक रन को जोड़कर स्कोर हुआ है 10। और फिर एक बार यहाँ पर बैटल दोनों भाइयों के बीच, देखते हैं इस बार कौन बाजी मारता है। बढ़िया यहाँ पर योकलन गेंद, और मिड विकेट का जो खिलाड़ी था जब तक कि दौड़कर इस गेंद को फील्ड करता, 2 रन किए हैं कंप्लीट। पेंटॉक स्ट्राइकर के लिए यह मैच कठिन बनता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद, पटकी हुई गेंद और सीधी जाती हुई कीपर के पास। तीसरा बॉलर इस्तेमाल किया है कप्तान ने, और तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया बॉलर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यूनिट है एक्शन बॉयज के पास।
ये गेंद भी काफी कमाल की सीधी जाती हुई, कीपर आज बहुत ही बिजी, बहुत सी गेंदें यहाँ पर कीपर के पास। पीछे कीपर ने किया कलेक्ट। 12 पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये बढ़िया संपर्क, देखते हैं कहां तक जाती है गेंद। फील्डर जो है बॉल के पीछे, और तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ऑलराउंड क्रिकेट देखने को मिल रही है। बैटिंग में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, उसके बाद बॉलिंग और फील्डिंग के डिपार्टमेंट में भी बहुत ही बढ़िया काम करते हुए, और इसी के साथ तीसरा यहाँ पर ओवर समाप्त होते हुए 12 लगे बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। और चंद्रेश, यहाँ पर चंद्रेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इंजरी के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, इंजरी हुई है उंगली को लेके ना। आज जिस तरह का प्रदर्शन बैटिंग में कमाल दिखाया, उसके बाद बॉलिंग सटीक लाइन और रन के साथ की, और आज अभी भी देखा कि पिछली गेंद पर फील्डिंग कमाल की कैच वहां पर पकड़ी है बाउंड्री लाइन पर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम चंद्रेश देसाई की। अब गेंद एक बार फील्डर जो है दूर है, केवल एक ही रन यहाँ पर मिलेगा, तो 1-1 2-2 से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। बड़ा लक्ष्य रखा था 64 रनों का, और पीछा कभी उतरी टीम, लेकिन प्रेशर था इतने बड़े लक्ष्य का, उसी की बदौलत लगातार अंतराल पर विकेट खोते रहे, उसी के बाद बावजूद बैकफुट पर रहे। घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन फिर एक बार जाती हुई गेंद कीपर के पास, कीपर के दस्ताने में। इसी के साथ ताली हो जाए प्रबल वस्ता के लिए, जो कि दूसरी बार दिखाई दी हुई है ग्राउंड में। हालांकि वो दिखाई नहीं देते सुबह इस बार बहुत बड़ा संपर्क, और ये गेंद देकर जाएगी पूरे रन 6। और बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर संपर्क, बड़ा प्रहार और चक्का यहाँ पर मिलता हुआ इस गेंद पर। 19 पर पहुंचा इस छक्के के बाद स्कोर। सार्थक की बल्ले से आया ये छक्का। आज उड़ता थियो फाले और फिर एक बार बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, ये भी गेंद देकर जाएगी सीधे से रन, और दूसरा छक्का आता हुआ सार्थक के बल्ले से। तो इस अंतिम चौथे ओवर में कुछ कमाल यहां पर दिखाती हुई, 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। इसी छक्के की बदौलत फुल स्कोर हुआ 25 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। और अगली गेंद संजय की। तीसरा छक्का यहां पर लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार डॉट गेंद। अगली मैच लोकमान और चेन्नई के बीच। लोकमान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय यहां पर लिया, और दोनों ही टीमों को यहां पर विनती है कि जल्द से जल्द इस मैच के बाद ग्राउंड पर उतरे। यहां पर अच्छी वापसी, 2 छक्के जरूर लगे, लेकिन उसके बाद 2 डिलीवरी बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ चौथा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 लगा है बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। आखिरी ओवर इस इनिंग की बाकी, और 39 रन चाहिए इस ओवर में। आखिरी गेंद, सॉरी आखिरी ओवर की पहली गेंद, और दिवेश
जो आज के दिन कमाल की यहाँ पर अब तक बल्लेबाज गेंदबाजी रही है दिवेश की। 39 रन इस आखिरी ओवर में। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। औपचारिकता बाकी वाले सब मैच में आखिरी ओवर और बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा था एक्शन बॉयज ने, उसका पीछा करने उतरे तो लगातार अंतराल के बाद विकेट जो गिरे। शॉर्ट गेंद मारना चाहते थे लेकिन एक तोहफा था, एक गिफ्ट था, लेकिन चूके और दिशा से भटकते हुए यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ टोटल में। संपर्क अच्छा, लेकिन फील्डर की गोदी में जाती है और एक झटका यहां पर लगता हुआ, चौथा झटका लगा है। आदित्य आउट होकर वापस 26 के स्कोर पर लगा है चौथा झटका। बल्लेबाज स्वप्नेश उतरे हैं मैदान पर, जो बाकी कुछ बची हुई गेंदें हैं। पहली गेंद संपर्क अच्छा, वहां पर लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन यहाँ पर मिलेगा, अपने पहली गेंद पर खोला है खाता और 1 रन जुड़ता हुआ इस रन को जोड़कर 27 हुए है स्कोर। कुल स्कोर 4 विकेटों के नुकसान के बाद। और हवा में गेंद, आखिरी गेंद फील्डर बॉल के नीचे और उसी के साथ और एक विकेट का पतन। उसी के साथ ये मैच यहाँ पर समाप्त। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा एक्शन बॉयज का और 2 अंक यहाँ पर अपने खाते में जुड़ने में कामयाबी मिली है और इस टूर्नामेंट के टेबल टॉपर रहे अब तक। पूरे मैच जो हुए उसमें जीत हासिल करके टेबल जो है वो टॉप कर रहे हैं एक्शन बॉयज। कांग्रेचुलेशन। और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी कमेंटेटर सागर गोसावी सर आपके सामने। So next match is going to be played between Lokman Warriors versus Shanai Builders. Requesting Lokman to kindly set your field as quick as possible as one more match to be played. So let's start the game as quick as possible and let's see who is going to be man of the match for Action Boys. There are actually 3 contenders in this race. So we are going to have a look at the scorecard. If we consider the batting, it's Prasanna leading the score with 31 of 11. Rajat has contributed 14 runs. Divesh 8 runs from 8 ball. Chandresh 8 runs not out from 3 deliveries that he has faced. And if we look at the bowling department, Divesh has given 2 runs and have taken 2 wickets. Prasanna 4 runs and a wicket. Diptesh has taken 2 wickets and 7 runs. Chandresh has bowled over and has given 1 run. So finally, with a lot thought, the jury has decided that it is a tough situation to bowl the power play over. And in that power play over, giving just a single is out of the box. So 8 runs, a single run in the power play over and a beautiful catch, although being injured, because we all know the injury of that player. And to take that catch with the confidence is the person, man of the match, Chandresh Desai. Request him, Omkar Vas, to kindly do the honors for the courage of this warrior. Requesting Omkar Vas to kindly do the honors.
Man of the match, Chandresh Desai, for his all-round performance, showing the courage, taking the challenge, and proving what a Chandresh Desai is. Still rocking hard. So, man of the match, Chandresh Desai. Now let's concentrate on the upcoming match. The match is going to be played between Lokman Warriors versus Shanai Builders. Lokman Warriors to field. Two openers out in the middle, the most experienced campaigners of Shanai Builders, Viraj Kakodkar, I beg your pardon, and Tanmay Chari. So Tanmay on the striking end, requesting the officials to kindly carry on with the match because more matches to be played. Actually, we are deficit of 2 matches on day 1. So if we play it quickly, then it is possible to, because sun sets by 6:30. So here we go with the first delivery. Saish to deliver. Lovely pace of work. Plays into the cover. Tanmay Chari takes a single. And now it's time for Viraj, who was quiet in the second round of the league. Now it's lot of hopes on him. Shuffle down the track, what a hit into the vacant zone. Ball races away from the field. Oh my dear, can't believe my eyes. The ball has taken a U-turn. What was the possible boundary has been stopped inside the boundary rope. Nonetheless, couple of runs, lot many hot things happening out in the middle. 2 runs takes the total to 3. So meanwhile, wide is the signal from the umpire. With that wide, team total moves to 4. 4 runs on the card. Strong strike. Flicks the ball away from the fielder. Ball races towards the cow corner. Although a fielder patrolling the fence. Good throw, but 2 is the call. And this is the good running between wicket by the fittest player at the age above 40. Both the players running very hard, showing the youngsters how the runs are to be taken. Hitting the ball in the gap to take a couple of runs. If the boundaries are not coming, then this is the way to score the runs. Team total moves to 6. Again shuffling down the track, wonderful 81, though there's a fielder pin placed. Is it going to be the second run? Tanmay Chari runs very hard. Chance of a run out, but not a convincing throw at the non-striker's end. Couple of runs takes the team total to 8. Still power play is on, and the power play is favoring both the teams. 8 runs on the board. A decent over, we can say. All the wickets are in hand. Again came down the track, flicks the ball to the fielder. Chance of a run out. Denied by Tanmay. Oh my dear, fumble by the keeper. Lot many things, lot many humor, lot many light moments for the commentary team. As a easy run out has been turned down and resulted in a dot delivery. Again trying is very hard. Ball takes the inside edge, travels safely to the keeper. Well kept by Sunil, the captain of the fielding team. A dot ball to conclude the power play over. After completion of first over, good decent over by Saish. Score is 8 without any loss of wicket. DJ. So requesting the fielding team to kindly double up as let's try to finish the quota for the day 1.
More 2 matches to be played as per the schedule for the day 1. This is the 9th match going on. We are deficit of 2 matches. If we make it fast, then everything is possible. So second over, bowled by none other than a speedster, youngster, Bhavnesh. Tanmay on the striking end. Full pitch delivery, wanted to hit the ball through the covers, no connection. Meanwhile, stretch of arms by Menapai Suraj Naik all the way from Baroda, giving his services in this tournament. A fighter, another fighter, doing the role of umpire, who has come from impossible thing. Meanwhile, a cut shot into the vacant area, ball racing away from the fielder, and a well fielded at the cover point region. So before the next delivery comes, I would like to say a few things about the man who is at the striker's end. He have never lost any hope. Everybody has given hope, but he's a fighter. He has fighted through the disease and are now onto his feet. Meanwhile, Viraj strikes the ball towards the mid-wicket region for a single. Wanted a second. Good throw at the non-strikers and sacrifices his wicket. Single takes the team total to 11 for the loss of 1 wicket. So हांगा जितले प्रेक्षक आसात, जर एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी मातशे एक जोरान ताळयो मारया. आमचो जो अंपायर आसा सुरजाक, तेजे कंडिशन सामकेच सगळ्यांक खबर आसा, पण तेतूंतल्यान तो भायर सरला आनी आयज हांगा ग्राउंडार उबो आसा आमच्या मदीं. सूरज नायक फ्रॉम परोडा. राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर दिस फायटर. Thank you, crowd. This is a wonderful gesture. We should applaud the good moments of life. And meanwhile, here we go with the next incoming delivery. Ball takes inside edge. Lovely piece of keeping shown by the wicket keeper, Sunil Sawant as cool as cucumber. Meanwhile, what a blinder taken by Sunil Sawant. I have just mentioned that he is as cool as cucumber, and look at the catch, the effort, one-handed stop and taken on the second attempt. Tanmay Chari back to the pavilion. So meanwhile, this wonderful Kakoda Premier League is fully well organized, and the lead sponsor for this tournament is none other than the Honorable Secretary of Goa Cricket Association, trying to help out the young talent who are not getting the chance to play in this tournament named as Kakoda Premier League, making a big platform for the youngsters to showcase their talent. Also a round of applause for Rohan Gaus Desai for making this tournament possible on this ground, for showcasing the young talents to show their performance. Big thank you to Rohan Gaus Desai. Meanwhile, another youngster, young Turk Tushar Gatwar takes a single to give the strike to his captain. Now many things depend on Bablu. That is Sandeep Kurdikar. We call him Bablu with love. So far he is quiet. Captain is not able to deliver for his team. Nonetheless, this is the ultimate time for Sandeep Kurdikar to show for what he has been taken as the captain of the side. He has to make a statement, and this is the right occasion. Trying very hard, plays along the carpet. First delivery that is faced from Bhavnesh. No, this is the second over. More 3 overs to be bowled after this over, taking his time. Takes a single to retain the strike in the third over. So after completion of 2 overs, score is 13 for the loss of 2 wickets. DJ. छोकरा बना दे क्लिक से रॉक स्टार बहुत ना छोड़े खौफे ना छोड़
There is a wonderful platform provided by Rohan Gaus Desai for the youngsters from the local native place, as most of the youngsters doesn't get a chance to show their talent, and these are the platforms as a Kakoda Premier League where the players who don't get to play the professional cricket will get a chance to show their talent. Meanwhile, good delivery, equally well played. Ball has been hit towards the square leg region for a single. That single brings Tushar on to the striking end, and that single takes the team total to 14. Still a surprising thing that there's a one player in the dugout of the batting team who plays regularly on this ground in the morning session, who is yet to play. He is a quiet hitter. Don't underestimate that player. I'm not going to name the player, but I'm really surprised to see him batting very, very down the order. Meanwhile, a single. The single takes the team total to 15. Siddharaj, the bowler, left arm over the stumps. Short pitch delivery, chance for Sandeep, but nothing is in favor of Sandeep at the moment. Misses the opportunity. Otherwise, this ball would have disappeared out of the boundary rope. Siddharaj delivers a dot ball and boosting the confidence of the fielding team. Low full toss. What a strike. Finally, we can see some hitting from Sandeep Kodikar. And that sixer takes the total to 21. Third over in progress. W strikes for the very first time. And a big, big six over the mid wicket. 21 on the board. So let's see whether Sandeep Kodikar can get some score, a decent total, if he continues to bat till the end of the inning. Siddharaj checking his fielders. And here we go with the next delivery. Another strike into the similar region. Ball bouncing above the fielder's head. No chance whatsoever. And that boundary takes the team total further move to 25. Finally, Sandeep Kodikar getting a little form that is expected by his teammate and the owner. So let's see whether he can continue. He has played a number of innings on this very wicket, and now finally in the evening his bat started talking. Another low full toss. Treat to watch, and what a hit on to the presentation board, saying that the ball has come towards Amey to write 6 runs on it. A little expensive third over. Now team total moves to 31. What a cameo from Sandeep Kodikar, the captain, leading from the front. 3 overs, 31 for the loss of 2 wickets. DJ. So, 4th over of the inning will be bowled by Sachin Desai. We can see him marking his run-up, which is a rare occasion in the tennis ball cricket. Still following the traditional way, supporting himself, backing his instinct, and on his run-up mark with the ball in his hand. So far, he has performed quite well. 40-plus youngster in this tournament. Good Yorker to begin with the 4th over, slight fumble, and they are running for the single. Good throw at the non-strikers and equally well backed up, but could not stop the single. And the good news for the batting team, Sandeep Kodikar is on the striking end. The reaction of the bowler says it all. He is not happy that he has given away that single, wanted Sandeep Kodikar to remain at the non-strikers end, but that is not the scenario. That single takes the team total to 32. And now Sandeep Kodikar on the striking end.
Full pitch delivery, strikes the ball. There's a fielder at the cow corner. Gathers the ball meanwhile. 2 was the call, but good throw stops Sandeep Kurdikar from taking one more run. Wonderful tactics by the fielding team, trying to keep Sandeep Kurdikar away from the strike as far as possible. And now the dangerous figure on the cards. 33. Tushar on the striking end. 33 on the board. Lovely pull shot in act. Ball races towards the mid wicket and 33 makes the ball to travel above the head of the player. Boundary in the favor of batting team. Score moves to 37. Tushar Gatwal strikes, boosting the confidence of his team and himself as well. 4th over in progress, 37 on the board. So let's see what is going to be on the incoming delivery. Tushar Gatwal at the striker's end. Another full pitch delivery onto the head, but nonetheless a single in form of. So no signal from the umpire says that it is off the bat, outside edge onto the body. So single off the bat, team total moves to 38. Sandeep Kurdikar on the striking end. Can he strike off this delivery, or Sachin is going to get rid of the said batsman? The time will tell us. Oh my dear, what a strike, fielder under the ball. Is it going to be caught? No, the ball finally wins the race. Decent off a drive to put the ball out of the boundary rope towards the long off region. What a strike from the said batsman. Sandeep Kurdikar strikes, sixer, takes the total furthermore to 44. Another hit will bring half century on the scorecard. Sandeep is having some plan to get that 50 in this over. The incoming delivery will tell us, but Sachin Desai is not the one who is going to give things easy for Sandeep. Lovely delivery, but way outside the off-stump stretch of arms by the umpire. Sachin is not happy, but the judge has done the conclusion and has given the statement. Wide takes the team total to 45. Gradually, Sachin Desai thinking what and how to deliver, as he has seen Sandeep smacking the ball quite comfortably. Lot many things to consider before bowling the incoming delivery. Low full toss, straight, chance of a catch. Is it going to be caught? Joylan under the ball, and he takes Sandeep, departs. Sachin strikes. Confidence booster at the end of the 4th over. Set captain back to the pavilion. 45 for the loss of 3 wickets. DJ. So final over of the first inning, requesting both the teams not to waste much time. New man in is Mayur, will be at the non-striker's end. Tushar Gatwal on the striking end and is on this. Individual score of 9 runs. Another good strike. Is it going to be a big one? Fielder under the ball takes the catch completely, comfortably. Shantanu takes a wicket on the very first delivery in the final over. And with that, the incoming batsman will be on the striking end.
So new man in is left-handed batsman Sanket. So there are two Sanket on this Foxstone ground. One giving the commentary and one at the moment at the strikers end. Both are of the same stretcher, same personality, and even the walking style also resembles. So one is left-handed batsman and another is a right-handed batsman. That is the only difference. Meanwhile, a lovely strike. It's a ball along the carpet towards the widest long off region. 2 is the call. There was a chance of a run out. Shantanu, little quick, little slow to react. Meanwhile, couple of runs. That takes the team total to 47. Again, shuffling slightly towards the off stump. Wide is the signal from the main umpire Sunay Naik. With that wide, team total further moves to 48. Meanwhile, a strike towards the cover, the chance of getting Joel and the same fielder under the ball. And now he misses this time. Maybe have hurt himself. Meanwhile, another couple of runs. With these 2 runs, team total moves to 50 up for the batting team. So let's see what Sanket can do now. He survives. Catch has been dropped. 2 runs. That brings 50 for the Chennai Builders. A Yorker, equally well played for a single. Meanwhile, Shantanu wanted to hit at the non-striker's end. Lately decides not to throw as more runs will be scored. Every run is important. And a single to take the total to 51. Now Mayur on to the striking end. Can Mayur make it big? But Shantanu is a decent bowler. Knows to deliver in the decent line and length. Swings the bat very hard. Change in pace. Ball went much slower than the expectation of Mayur, resulting in a dot ball. Final delivery of the first inning. Low full toss. Strikes it equally. Fielder under the ball. Drops the catch. And a 2 is the call. Meanwhile, a run out at the non-striker's end. Just a single to end the inning. So after completion of all the 5 overs, score is 52. 52 for the loss of 4 wickets. Target is of 53 runs in front of Lokmanya Warriors. So let's see what is about to happen in the run chase. Meanwhile, it's time for Sanket Gaonkar to give you expert comments in the second innings. And now the time is for DJ to play your wonderful track. Thank you, DJ.
request both the captain of Action Boys and captain of Level Strikers kindly come to the toss. The next match will be played between Action Boys versus Level Strikers. I request both the captain kindly come for the toss. ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि पहली इनिंग में चेन्नई बिल्डर्स ने बैटिंग करते हुए 52 रन और 53 रनों का टारगेट रखा है लोकमान्य वॉरियर्स के लिए और इस रन चेज का आगे शुरुआत होने जा रही है. बल्लेबाज उतरे हैं लोकमान्य वॉरियर की तरफ से सचिन और साइश इस रन चेज को यहाँ पर करने के लिए 53 रनों का ये लक्ष्य है, पार करना है. 52 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई बिल्डर्स ने और 53 रनों का लक्ष्य रखा है लोकमान्य वॉरियर्स को. दो बल्लेबाज सचिन और साइश. सचिन पहली गेंद फेस करेंगे. विराज है बॉलिंग मार्क पर अपने पहले ओवर के साथ. आगे आए और बहुत ही बढ़िया पावर प्ले चल रहा है और उसी का फायदा मिड विकेट और मिडन के बीच से गई ये गेंद और पहली गेंद पर किया है प्रहार, चौका अर्जित किया. तो लक्ष्य है 53 रनों का और लगभग 10 से थोड़ी सी ऊपर की रन रेट इस मैच को जीतने के लिए चाहिए. और बढ़िया ये शुरुआत, पहली गेंद सचिन एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर. इस बार गति में मिश्रण जरूर किया था लेकिन बहुत ही बढ़िया पीक और सचिन हुक्का वहां पर मौजूद और कैच वहां पर पकड़ी. बहुत ही बढ़िया कैच, हालांकि वहां पर बैठे हुए थे और सीधी गोदी में सचिन की बहुत बढ़िया स्ट्राइक. और दूसरी गेंद पर यहाँ पर बड़ा प्रहार, पहली गेंद पर चौका अर्जित किया, दूसरी गेंद पर छक्का और कुल स्कोर इन छक्के और चौके मिलाकर 10 रन पर पहुंचा है. बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शुरुआत इस दूसरी इनिंग की. इस बार पटकी गेंद वहां पर सर्कल में फील्डर कंधार बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त रन यहाँ पर लेने की यहाँ पर कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस रन की आशंका को यहाँ पर समाप्त किया. और तीसरी गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद, डॉट गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया वापसी. और बबलू वहां पर फील्डर मौजूद, लंघन पर केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन को यहाँ पर जोड़कर कुल स्कोर हुआ है 11 रन. सूझबूझ यहाँ पर क्रिकेट, बहुत बढ़िया यौका लाइन गेंद थी, डिफेंस किया और एक रन देकर स्ट्राइक दी अपने पार्टनर को. इस बार लोअर फील्डर और इतनी अच्छी तरीके से वहां के लिए फील्डर के लिए बहुत ही बढ़िया चेज और दौड़ लगाई थी फील्डर ने. एक रन दूसरे रन की यहाँ पर जी दूसरा रन यहाँ पर किया है कंप्लीट. और तारीफ करनी होगी, बहुत ही दूर थी बबलू से गेंद लेके जो दौड़ लगाई और पूरी यहाँ पर 100% देते हुए अपने टीम के लिए जीत की, यहाँ पर जीत के लिए इस पॉइंट को अर्जित करने के लिए. आगे आए, शॉट खेली, यहां पर फील्डर जरूर मौजूद तुषार गटवाल, लेकिन उससे दूर और एक चौका आता हुआ सचिन के बल्ले से. काफी यहां पर आक्रामक रूप अपनाया हुआ है, बड़ा लक्ष्य था और उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम. और पहला ओवर यहां पर समाप्त होते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 लगे बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के. डीजे
तुषार घटवा दूसरी ओवर इस इनिंग के विराज की पहली ओवर थोड़ी सी महंगी रही, 16 रन आए पहली ओवर में और लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम लोकमान्य वॉरियर्स। बढ़िया यहाँ कमर गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर रखी और बहुत ही बढ़िया गति के साथ सीढ़ी कीपर के पास जाती हुई अच्छी शुरुआत। हालांकि पहली ओवर थोड़ी सी खराब रही, महंगी रही, लेकिन 20 ओवर के तुषार घटवा की पहली गेंद सटीक लाइनर के लेने के साथ बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हालांकि इस रन को रोकना चाहिए था, लंबे कद के हैं, झुकने में थोड़ी सी देर हो गई और इसी के बदले एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। तुषार घटवा एक ऑलराउंडर, बैटिंग में भी अपना कमाल दिखाया था और ये बढ़िया गेंद थी, लगभग यॉर्कर लाइन की गेंद और उस गेंद को खेलकर एक रन यहाँ पर लेकर स्ट्राइक दिया अपने पार्टनर सचिन को। ये बढ़िया शॉट गैप में, दोनों ही फील्डर बॉल के बीच और एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बबलू बहुत ही चुस्ती और तंदुरुस्ती से बॉल के पीछे और कलेक्ट किया, फील्ड किया और दूसरे रन की आशंका को समाप्त किया। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट और इस बार फिर एक बार होंगे स्ट्राइक पर साइश। शॉर्ट गेंद हवा में गेर, फील्डर बॉल के नीचे गंदार और यहां पर अगर ये 6 रन का यहाँ पर इशारा आता है अंपायर से। हालांकि प्रयास के 100 बॉक्स यहाँ पर नहीं होंगे, गंदार को बहुत बढ़िया प्रयास किया था, हालांकि धकेलना चाहते थे अंदर इस गेम को 6 के लिए जाते हुए, लेकिन अंत में यहाँ पर गेम की जीत हुई होती और 6 रन यहाँ पर मिलते हुए। तो साइश के बल्ले से आया हुआ ये पहला छक्का, पहले ओवर में सारा जो डिस्ट्रैक्शन किया था सचिन ने, लेकिन इस बार इस पार्टी में जुड़ते हुए साइश। बढ़िया गेंद और क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं, वापस भेजा, पिछली गेंद पर जरूर छक्का लगा, लेकिन इस बार बढ़िया वापसी तुषार घटवाड़, एक होनहार टैलेंटेड लंबे कद के और लंबाई का अपना फायदा उठाते हुए सीधा यॉर्कर गेंद और क्लीन बॉल करके वापस भेजा। 24 पर रुका हुआ स्कोर, 24 के स्कोर पर लगा है पहला झटका। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप सचिन और साइश के बीच, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी मिली है यहाँ पर तुषार घटवा को। पहला झटका देते हुए तुषार। सनील नई बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पर बड़ा हिट खेलने का। कोर्स का खिलाड़ी अंदर और सीधे उसके हाथ में जाती हुई एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ और इसी के साथ एक सफल ओवर की यहाँ पर समाप्ति तुषार घटवा की। 25 लगे बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। तुषार घटवा की पिछली ओवर, दूसरी ओवर सफल हो रही, 9 रन हालांकि लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर लेने में कामयाबी। 25 पर रुका हुआ स्कोर 2 ओवर के बाद 53 रनों की यहां पर दरकार है। इस रन को चेस करने की यहां पर कोशिश बहुत ही बढ़िया सचिन और सनील के बीच। आगे आए और हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बाहें खुले, अंपायर ने वाइड का इशारा आता हुआ एक और रन जुड़ता हुआ। इस एक रन को जोड़कर 26 हुए है कुल स्कोर और गंदार को यहां पर अपनी लाइन और रन के
रन पर ध्यान देकर अच्छी गेंद करनी होगी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और यहां पर अपील जरूर हुई है और आउट का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप से दूर रखी थी गेंद, वहां पर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगी और दूसरा झटका लगा। सनील कुछ खास नहीं कर पाए, गंधार को यहाँ पर लाया गया और कप्तान ने तीसरी ओवर के लिए, और पहली गेंद हालांकि वाइड रही लेकिन दूसरी ही गेंद पर विकेट लेकर यहाँ पर कप्तान के जो जिम्मा सौंपा था उस जिम्मेदारी पर खड़े उतरते हुए दूसरा झटका यहाँ पर लिया है गंधार ने। भावनेश नए बल्लेबाज उतरे हैं, तीसरा ओवर है प्रगति पर, 26 रन लग चुके हैं अब तक बोर्ड पर। ये बढ़िया गेंद उतनी अच्छी तरीके से खेली, रोहन का खिलाड़ी मौजूद जब तक कि फील्ड करता है, एक रन किया है दौड़कर कंप्लीट। और इस एक गेंद बहुत ही बढ़िया गति, लाइन और लेंथ के साथ सीधी जाती हुई कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया जी, निर्णायक मैच 2 अंकों के लिए हो रही लड़त और अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए सगळे कॅप्टना का विनंती असा, सही कॅप्टनच्या आसात आयची दिसाची मॅच सोंपल्यानंतर रिपोर्ट करपाचे कॉमेंट बॉक्सान। परतफाट सगळे कॅप्टनांनी नोंद घ्यायची, आयची मॅच सोंपल्यानंतर सगळे कॅप्टन जे आसात तेंच्यांनी कॉमेंट्री बॉक्साक रिपोर्ट करपाचो, जे सगळे कॅप्टन आसा त्यांनी। पिछली गेंद रही थी वाइड और 27 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। सॉरी 28 यहां पर करेक्शन करते हुए थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन सचिन अभी भी मौजूद, प्रयास काफी बढ़िया। पहली ओवर में 16 रन हालांकि जरूर बनाए, लेकिन इसके बाद जो 2 विकेट यहां पर गिरे उसकी बदौलत सचिन जो है अब तक खामोश है। गंदार की यहां पर तारीफ, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ, बहुत ही बढ़िया गति के साथ डिलीवरी जो है डिलीवर करे और उसी की बदौलत रोक के रखा है बल्लेबाजों को। लोकमान वॉरियर्स को ये मैच जीतना बहुत ही आवश्यक। और यहां पर और एक विकेट का पता ना, क्लीन बोल्ड किया, स्विच हिट करना चाहते थे, रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे और उसी कोशिश में गवा बैठे अपना विकेट और भावनेश कुछ खास नहीं कर सके, आए थे बल्लेबाजी करने के लिए लेकिन वापस भेजा गंदार ने। और गंदार की यहां पर बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही बढ़िया यहां पर बॉलिंग, 2 विकेट इस ओवर में लेने में कामयाब मिली है गंदार को। और इसी के साथ 29 लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। हालांकि शुरुआत तो काफी अच्छी मिली थी, सचिन ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी लेकिन उस शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाए। विकेट्स लगातार गिरने की वजह से अब थोड़े से बग फुरफुर है लोकमान वॉरियर्स। सुजन नए बल्लेबाज उतरे हैं, कमान संभाली है बैटिंग की। और यहां पर स्वीप खेलना चाहते थे, आई नहीं बल्ले पर जितने से चाहते थे, लेकिन फिर भी एक रन यहां पर जरूर मिलेगा। और उसी के साथ 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होते हुए 30 लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान के बाद।
नया बॉलर है मयूर और 12 गेंदों का खेल अभी भी होना बाकी और इन 12 गेंदों में रन चाहिए 23 रन। तो ये मैच जो है बैलेंसिंग मोड पर है, किसी भी ओर ये झुक सकती है अगर अच्छी बॉलिंग रही तो बॉलिंग टीम की ओर और एक दो बाउंड्री यहाँ पर लगती है तो बैटिंग टीम की ओर झुक सकती है। तो अभी भी इस मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर इसका उदाहरण मिलता हुआ 12 गेंदे बाकी और इन 12 गेंदों में रन चाहिए 23। तो देखेंगे इन 12 गेंदों में कौन बाजी यहाँ पर मारता है। पहली गेंद मयूर की बहुत ही बढ़िया लाइन और रन के साथ की गई गेंद कीपर के दस्तानों में जाती हुई सीधी और डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर जो है जरूर बिल्डअप करेगी लोकमान्य वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर। फुलटस गेंद और उतना अच्छा प्रहार और ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर एक छक्का आता हुआ सुजन के बल्ले से और पहला छक्का टीम को दरकार थी। यहाँ पर जरूरत थी कि एक बाउंड्री यहाँ पर किसी भी हालत में आए और ये छक्का आता हुआ इस बॉल पर और इस छक्के की बदौलत 36 पर पहुंचा स्कोर। 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 10 गेंदों में चाहिए रन 17। इस बार यहाँ पर कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड बहुत ऊपर गई थी, हालांकि गेंद ने प्रयास शुरू किया था और वाइड का इशारा आता हुआ। तो ये रन जो है अतिरिक्त रन जो है और प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप करेंगे बॉलर के ऊपर क्योंकि ऑलरेडी एक छक्का पिछली गेंद पर लगा, उसके बाद ये वाइड और एक एक्स्ट्रा रन। तो ये 2 रन जोड़कर अब केवल 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो थोड़ी सी आसान यहाँ पर बनाते हुए बॉलर इस मैच को, हालांकि 23 रन चाहिए थे 12 गेंदों में, लेकिन बॉलर की यहाँ पर थोड़ी सी खराब कही जाएंगे बॉलिंग। और एक फुल टच गेंद और वहां पर गैप में जाती हुई कोई मौका नहीं, कवर्स की दिशा में खेली गई शॉट और गेम को यहाँ पर नजदीक ले जा रही है बैट्समैन सुजन क्या बल्ले से आया ये चौका, सचिन के बल्ले से आया ये चौका और सचिन एक छोर पर डटे हुए हैं। यहाँ पर अपनी टीम का अपना महत्व यहाँ पर जानते हैं कि एक छोर पर जो सीनियर खिलाड़ी है अंत तक इस मैच को लेकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं और मौका मिला और इस मौके का फायदा उठाकर जड़ दिया चौका। 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए अभी भी। और ये अच्छी गेंद वापसी यहाँ पर मयूर की, पिछली गेंद हालांकि जरूर फुल टॉस रही थी लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद। अभी भी 11 रन चाहिए, एक अच्छी गेंदे 2-3 विकेट्स अगर यहाँ पर मिलती है तो ये मैच किसी भी ओर छूट सकती है। 8 गेंदे बाकी, रन चाहिए 11। यहाँ पर हवा में गेंद, एक मौका यहाँ पर लेकिन फील्डर से काफी दूर, दूसरा रन यहाँ पर मना किया, एक ही रन। हालांकि एक मौका जरूर बना था, मुश्किल है हवा में जरूर काफी देर रही गेंद, लेकिन जो मिलन का खिलाड़ी उससे बहुत दूर गिरी, उसी बीच एक रन दौड़ कर किया है कंप्लीट। अब रन चाहिए 10 इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बढ़िया संपर्क, वहां पर फील्डर मौजूद बबलू और जब यहाँ पर टप्पा पड़ता है तो बहुत मुश्किल बन जाती है यहाँ पर फील्डरों के लिए बॉल पकड़ना, क्योंकि ये शॉट बहुत ही बढ़िया रहा था और जब टप्पा पड़ा बहुत ही ज्यादा उछली गेंद और बबलू के सिर के ऊपर से चौका आता हुआ। इसी के साथ 4 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होते हुए 47 लग चुके बोर्ड पर और आखिरी ओवर में 6 गेंदों में चाहिए 6 रन।
आखिरी ओवर छह चाहिए तन्मय पर साहबजिमा कप्तान ने कि 6 रन को यहाँ पर डिफेंड करे, लेकिन जिस फॉर्म में सचिन चल रही है, देखते हैं पहली गेंद और यहाँ पर पहली गेंद पर खतरनाक शॉट और इसी के साथ इस मैच को बहुत ही स्टाइल में फिनिश किया और 2 अंक जीत के सचिन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ओपनिंग की थी इस मैच में और अंत तक डटे रहे और अपनी टीम को यहाँ पर जीत दिलाकर 2 अंक जुड़े आए हैं अपने खाते में। Thank you, DJ. It's time to honor the man of the match. Requesting Sri Denzel Fernandez to kindly do the honors. Man of the match is none other than the man who finished the match in style. Sachin Desai, kindly come and collect your man of the match trophy from the hands of Sri Denzel Desai. Denzel Fernandez, I beg your pardon. Requesting Denzel Fernandez to kindly do the honors at the presentation area. Kindly hand over the beautiful glittering trophy to the most valuable player who has managed to take the match in their favor. Sachin Desai, kindly come and collect your man of the match trophy. So meanwhile, a request was made by the organizers to all the captains. Please come near the commentary box as there are some guidelines for you all for the tomorrow. So let's look at the points table after the completion of third round of the league stage. So after completion of the third round of the league stage, the table toppers are Action Boys with 6 points. Meanwhile, requesting Sachin Desai to kindly double up as the guest has already arrived. Sachin Desai, kindly come and collect your man of the match trophy from the hands of Denzel Fernandez. Action Boys, leading the table, has won all 3 matches with 6 points. Wadlamal Strikers are at 4 points. Lokmanya Warriors are at 4 points. Pine Talk Strikers are also at 4 points. Sai 11 and Shanai Builders are yet to open their account. So this is the story so far. Still 2 matches are remaining for all the teams. So now here the honors are to be done. Denzel Fernandez is already waiting. Sachin Desai, kindly double up. You are still a youngster. Past 40 years you can jog. This is the evening time. It's time for fitness. Although you have played, yes, that is a wonderful gesture. So Sachin Desai jogging to take the man of the match trophy from the hands of Denzel Fernandez. So now the request for all the captains to kindly come near the commentary box as the officials will give you all the possible details for tomorrow's day.